आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत बनेगी। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। लोकतंत्र है इसकी गरिमा, इसका रक्षण ध्येय हमारा। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर नारा नारा सानी पम गा पानी सानी सा गा मा गा सानी पानी सा गा मा गा नी सा पा मा गा सा सानी सा सा सानी सा गा गा रे गा मा गा रे गा रे सा रे सा सानी सा रे सा रे सा गा गा रे मा मा गा रे गा पा मा गा मा गा रे मा गा मा सा गा नी सा पा नी मा पा गा सा गा मा पा गा मा पा नी सा गा मा गा। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जो भी कमी है हम भर देंगे, जो न हुआ है हम कर देंगे। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। ये निश्चय है ना के सपना, शान विश्व की भारत अपना। भारतीय छात्र संसद, 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 भारतीय छात्र संसद।
अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत बनेगी। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। लोकतंत्र है इसकी गरिमा, इसका रक्षण ध्येय हमारा। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर नारा नारा सनी पम ग पनि सा नि सा ग म ग सनी पनि सा ग म ग नि सा पा म ग सा सनी सा सा सनी सा ग ग ग म ग ग रे 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 सनी पनि सा रे सनी सा ग ग रे रे म ग रे ग म म ग म ग रे म ग म सा ग नि सा पनि म ग सा ग म प ग म पनि सा ग म ग। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जो भी कमी है हम भर देंगे, जो न हुआ है हम कर देंगे। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। A very good morning and warm welcome to all the student leaders on the third day of 13th Bharatiya Chhatra Sansad, and all the dignitaries have arrived at the venue, and I would like to request them to kindly join hands for ringing the bell of democracy, the fifth session on data, diversity and democracy, the caste census dilemma. And all the dignitaries are joining hands for ringing the bell of democracy, an important tradition. A big round of applause, my friends. A big round of applause as the session is set in motion by ringing the bell of democracy. I now request all the dignitaries to kindly grace the stage by their presence and light the traditional lamp. Shubham karoti kalyanam, arogyam dhana sampada, shatru buddhi vinashaya, deepa jyoti namostude. I request all the dignitaries to please join us in lighting the traditional lamp. जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जो भी
कमी है हम भर देंगे, जो न हुआ है हम कर देंगे। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय। All the dignitaries are joining hands for lighting the traditional lamp. And my friends, today there are two important occasions. Today is the 161st birth anniversary of Swami Vivekananda ji. We remember the iconic figure whose profound teachings continue to motivate and inspire the youth. Born on 12th of January 1863, Swami Vivekananda ji is more than a philosopher. I request all the dignitaries to offer the flowers to the statue of Swami Vivekananda as the noble son of India. Today is also the birth anniversary of Rajmata Jizau. We celebrate the indomitable spirit and resilience of the remarkable women who played a pivotal role in shaping the destiny of Maratha Empire. Born on 12th of January 1598, Rajmata Jizabai Bhosle is known as Rashtramata. And today, remembering these two, I would say, divine souls, let us start this important session, the fifth session on data, diversity and democracy, the caste census dilemma. And now, as per the tradition of this platform, we are going to begin with this session with national song Vande Mataram, which would be followed by the World Peace Prayer. I request all the dignitaries on the dais and all the student leaders of the dais to please rise in their seats. And I request my technical team to kindly relay national song Vande Mataram. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam, Sufalam, Malayaj Sheetalam, Shasya Shamalam Mataram, Vande Mataram. Shubhra-jyosna pulakitayaminim, Pullakusumita dhumadala shobhinim, Suhasinim, Sumadhura bhashinim, Sukhadam varadam mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Thank you. I now request everyone to please fold their hands, close their eyes. And I request all of you to meditate, calm down, and wholeheartedly participate into a prayer that does not talk about any caste, creed, religion, or any section of society, but prays for the betterment of entire humanity. I request all of you to close your eyes, and I request my team to kindly relay. Om Namo Jiyadya Veda Pratipadya Jaya Jaya Swasamvedya Atmarupa Deva Tuti Ganeshu Sakalartha Mati Prakashu Mane Nivrittidasu Avadhari Goji Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara
गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Thank you very much. My friends, the ongoing debate surrounding the implementation of caste census in India is nuanced and intricate issue that intersects with the fundamental pillars of data, diversity, and democracy. My friends, Indian democracy is characterized by its extensive population diversity and deeply rooted caste system, which plays a pivotal role in shaping the societal structures and influencing the trajectory of scientific and technological advances. Of course, our country stands divided right now where should we have the sense of caste so deeply embedded in society, or is it time that we rise above the caste structure? Well, let's debate, and this session is truly a good platform to discuss the data, diversity and democracy caste census dilemma. And now, to propose the welcome address, I would like to invite on stage the director of MIT School of Government, Dr. K. Girison. Please put your hands together and welcome with a round of applause, my friends, Dr. K. Girison ji. Namaste. Good morning. More than 2000 years ago, a famous Greek philosopher said that there are two noble professions, teaching and politics. That philosopher was none other than Aristotle. Significantly, yesterday in a brief interaction with the legislators in the SOG classroom, there was an interesting query raised by a seasoned legislator from Tamil Nadu. Is it right to look at politics as a profession? According to me, there are two perspectives. One, to see politics as a profession. Like any other vocation, it may have its advantages. Also, there are some issues and limitations. Secondly, look at as professionalization of politics. I firmly believe that the School of Government is trying to do is to infuse professionalism in the aspirants, especially in the budding political leaders for today and tomorrow. I wish to look at this session from this background. How do we expect the leadership to take vital decisions on various aspects? Can the decisions be taken through the lens of political expediency and political expediency alone? Do we consider economic rationality, scientific inputs, and spatial parameters in addition to the dynamics of political expediency in the decision-making process? Like all of you, I am eagerly looking forward to this session to understand, to define, to redefine, to refine, and also to revisit our views and thoughts and our understanding on the vital topic, data, diversity, and democracy, the caste census dilemma. Because I'm sure this session will help us to look at the democracy from a different lens, because it is very important to realize good governance and vibrant democracy. And coming to my responsibility, I wish to hearty welcome on behalf of the founder and Professor Vishwanath Karat and the founder of SOG, Sri Rahul Karat, to the chairperson of the session, and incidentally, sir is a chairperson of the Madhya Pradesh Legislative Assembly, Sri Girish Gautamji. I wish to extend a hearty welcome to sir. And we have very seasoned and very stalwarts in the field to speak on this topic. We have Professor Manoj Kumar Jha, Member of Parliament, and also a professor from the University of Delhi. And we have Dr. Sanjay Kumar
from former director and the co-director of Lokniti. And we have Dr. Ajay Kumar, AICC in charge, Orissa, Tamil Nadu and Pondicherry, and also former president of Jharkhand Pradesh Congress Committee. And we have, in addition to that, there is also you can say, we are also honoring a young Vidhayak in the session, and there are student speakers to share their views on this vital topic. On behalf of all of you and the organizing committee and the senior cadet and Rahul Karat and Vice Chancellor, I extend a hearty welcome to all of you to this vital and very important session. Thank you. Thank you very much, Dr. Girisanji. And thank you very much for giving those 3 important R's to us: rethink, refine, and redesign. Thank you very much. And I think these 3, I would say, this formula would be very important for this particular session. And now, before we go any further, as per the tradition of this platform, I would like to request Shri Rahul V. Karatji to kindly felicitate and welcome the dignitaries on the dais. First and foremost, I would like to request him to kindly felicitate the chairman of the session, Shri Girish Gautamji, the former Speaker of Madhya Pradesh Legislative Assembly and Honorable Member of Legislative Assembly, Madhya Pradesh. Please put your hands together and welcome with a round of applause, my friends, Shri Girish Gautamji. Next, I would like to request Sir to kindly felicitate Professor Manoj Kumar Jhaji, Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha, and the Professor of University of Delhi, National Spokesperson of RJD. Please put your hands together and welcome Professor Manoj Kumar Jhaji. Next, I would like to request Sir to kindly felicitate and welcome the AICC in charge, Dr. Ajoy Kumarji, the former President of JPCC and former Member of Parliament from Jamshedpur. A big round of applause, my friends, for Dr. Ajoy Kumarji. I also like to request Sir to kindly felicitate and welcome Dr. Sanjay Kumarji, the Director for Center for Study of Developing Societies, CSDS. A big round of applause, my friends, for all the dignitaries present here today for this important session. And now it's time when we have a deep understanding about this session through a small video. I request my technical team to kindly relay. Welcome to Data, Diversity and Democracy, Caste Census Dilemma. In 2022, Bihar conducted a study commonly known as the Caste Census and revealed the findings of the study in October 2023. People have been talking about doing this kind of study nationally for over 10 years. And get this, the last time everyone's caste was counted up, it was way back in 1931. Some people think doing this census is a great idea because it helps people make better choices. They say looking closely at caste information can really help the government make better choices about policies. It could help with big problems in society like education, jobs, and making sure everyone gets a fair chance, especially from the marginalized and oppressed communities. Supporters believe it can help the government find and keep an eye on the people who need the most in welfare programs. But not everyone is a fan. They're afraid that if we collect all of this info, it might end up labeling people based on their caste, and that's not cool. Some say collecting this data might make people keep thinking about their caste all the time, which could be a problem. There's concern that some might use this information for politics and elections in ways that aren't fair. Others might say, they argue that doing this kind of census might actually make caste issues in the society even more of a problem. They think it won't fix everything or make everyone get along better. And for those dreaming of a society without casteism, they don't believe this census will get us there. So here we are, diving into the world of data, diversity, and democracy. We're trying to figure out how to handle data, support diversity, and deal with the challenges caused by social tensions and governance issues. Ready to explore this with us? Let's go. Thank you very much for that video.
And my friends, it is always discussed and debated that India is such a country where the caste system is deeply rooted. All the individuals are born with a caste and they've been given the understanding about the caste at a very young age. It is difficult, and sometimes we think that India is such a country which is very, very difficult to rise above the caste system. But my friends, I would like to share with all of you that it is now time that we wait, we stop, we rethink, redesign, and then move ahead. Because सिर्फ 2 कदम चलने से मंजिल दूर नहीं हो जाएगी, सिर्फ 2 कदम रुकने से मंजिल दूर नहीं हो जाएगी. याद रहे, मुसाफिर ही नहीं, रास्ते भी चलते हैं. So it is possible that this structure, thank you very much, the structure will change and we will bring this change. And it is now time that I request and invite the chairman of this session, Shri Girish Gautamji, to kindly address the gathering on this burning issue. But before I do that, I would like to request my technical team to kindly relay a small film. Shri Girish Gautam, a 5-term member of the Madhya Pradesh Legislative Assembly, currently representing the Deotalab constituency, brings a wealth of experience to the political landscape. Holding an LLB degree, he has been actively engaged in student politics since 1972. Elected for the first time in 2003 during the 12th Madhya Pradesh Assembly elections, Shri Girish Gautam has been a steadfast presence in legislative affairs. During his tenure as a member of the Assembly, he assumed pivotal roles, serving as the chairman of the Estimates Committee, Privileges Committee, and various other committees. Notably, from February 22nd, 2021 to December 14th, 2023, he held the esteemed position of the Speaker of the Madhya Pradesh Legislative Assembly, contributing significantly to parliamentary proceedings. Beyond his political commitments, Shri Girish Gautam is actively engaged in social work, championing causes related to welfare, equality, and justice. Let us welcome Shri Girish Gautam. Please put your hands together, my friends, and welcome with a big round of applause, Shri Girish Gautamji. ज़्यादा नज़दीक आएगा ना, दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा रहे. सबसे पहले मैं अपने राहुल कराड़ जी को धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एक अवसर, आज का जो बर्निंग टॉपिक है पूरे देश में, एक तरह से इस विषय को लेकर के विभिन्न तरह की चर्चाएं हो रही हैं, इसीलिए मैं इसको बर्निंग टॉपिक कहता हूं. उनने इसका अवसर दिया मुझे बोलने का, मैं उनको धन्यवाद करता हूं. मंच पर विराजमान जो इस विषय पर आगे बात को बढ़ाएंगे, हमारे मनोज कुमार झा जी, सौरव सिंह जी, अजय कुमार जी और हमारी पूर्णिमा जी जो विधायक हैं, ये सब मिल करके इस विषय में चर्चा करेंगे. मैं इसमें 2-3 बातें कहना चाहता हूं, क्योंकि जो आप सब्जेक्ट देखा होगा आपने, जिस तरह का उसमें डाटा डाइवर्सिटी और डेमोक्रेसी है, कास्ट सेंसस के अपने आप डायलेमा लिखा हुआ है. तो उसका अर्थ ही है कि ये एक तरह से दुविधा का विषय है, असमंजस का विषय है, कशमकश का विषय है. क्योंकि हम सब जानते हैं कि देश की आज़ादी को हम 75 वर्ष पूरा कर रहे हैं, और इस 75 वर्ष के बाद आज स्थिति में हम खड़े हुए हैं कि हमें इस बात के लिए सोचना पड़ रहा है कि हम किस तरह का सेंसस करावें, जनगणना करावें. और मैं ऐसा समझता हूं कि यदि ये वाकई में हृदय मन से हो तब तो ठीक है, पर इसमें कहीं ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल एंगल से इसका विचार किया जा रहा हो तो शायद वो गड़बड़ है. वैसे भी हमारा समाज, हम भारतीय समाज में रहने वाले लोग हैं. आज भारतीय समाज आज का नहीं है,
ये कितने वर्षों का है? आज हम कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। हमें इस देश में रहते हैं जिस देश के भीतर हमारी संस्कृति है, हमारी प्रकृति है, और उसी के साथ साथ आज जो व्यवस्था मैं समझता हूं, हो सकता है कोई लोग सहमत हो या नहीं सहमत हो, प्रकृति और संस्कृति के कारण हमारा समाज आगे बढ़ा है। हमारी प्रकृति क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, और उसके साथ साथ आज जो मुझे देखने को मिल रहा है वो है विकृति, नेचर के खिलाफ, अपोजिट टू नेचर। और जब सामान्य शब्दों में, सामाजिक भाषा में मैं उसको बात करूं तो प्रकृति का मतलब होता है कि सामान्य तौर पर जो हो रहा होने दो, वही काफी है। परंतु यदि हम जब संस्कृति की बात करते हैं और विकृति की बात करते हैं तो विकृति का भाव क्या है? विकृति का भाव यह है कि कोई कुछ प्राप्त कर रहा है, वो प्राप्त न कर पावे, ये मानसिक विकृति है। और संस्कृति क्या है? जो संस्कृति बनती कैसे है? हमारे संस्कारों परंपराओं से हमारी संस्कृति बनती है। और संस्कृति का भाव यह है कि पहले दूसरा पाले, इसके बाद हम प्राप्त करें। शायद भारत की संस्कृति यही है और शायद हम उसको छोड़ते जा रहे हैं। आज हमारे सामने ये नौजवान बैठे हुए हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में हमारे तमाम, इसीलिए मैं कहता हूं कई बार कि हमारी सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो हमारे पूरे समाज को शिक्षित करने की है। पूरा समाज शिक्षित हो, वो चाहे जिस सेंसस के भीतर जिस जात का आता हो, क्योंकि जातियों की जनगणना करेंगे तो 1900 की आबादी में कुछ था, आज वो कुछ हो गया है, कल को आएगा तो कुछ और निकल करके आएगा। फिर जो जाति समूह बनेंगे, उन जातियों समूह का रिजर्वेशन के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा। तो कुछ प्रदेश में कुछ है, कुछ प्रदेश में कुछ है, कुछ जगह कुछ है, कुछ जगह कुछ है। वो एक तरह से विवादित ही रहेगा। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूं कि हम सबको मिलकर एक बात को ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा इकोनॉमिकल भी हमको देखना पड़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा सेंसस इकोनॉमिकल हो। हर वर्ग का गरीब है, हर जाति में गरीब है। हमारा सेंसस उस तरफ बढ़ना चाहिए, इकोनॉमिकल सेंसस भी हो। जातियों की जनगणना करो, जातियों की गणना करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके साथ साथ इकोनॉमिकल भी हमको करना पड़ेगा, क्योंकि उसके आधार पर ही हम कुछ जो एक तरह से जो डाटा हमारे पास कलेक्शन होगा, उससे सोसाइटी के इंप्रूवमेंट के लिए हम क्या योजना लेकर के आएंगे, क्या योजना चलाएंगे, हमको ये करने की आवश्यकता है। हमको ये करना पड़ेगा। हमारा युवा है, आज पूरे देश के भीतर बड़ी फोर्स युवाओं की है। हम सारे युवाओं को क्या शिक्षा के क्षेत्र में उनको उनके इच्छा के अनुसार शिक्षा दे पा रहे हैं? क्या नहीं दे पा रहे हैं। हमारी सोच, हमारी प्लानिंग ये होना चाहिए कि हमारे शिक्षा प्राप्त करने वाला जो हमारा युवा है वो पूरी तरह से शिक्षा, अपने इच्छा की शिक्षा प्राप्त करे। वो खुद स्वयं तलाशे वो कि हमको किस क्षेत्र में के भीतर जाना है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है जिसकी भी गणना होनी चाहिए, और वो है हमारा किसान, क्योंकि भारत की जो पूरी तरह से आबादी है वो एक तरह से ग्रामीण क्षेत्र में बसने वाली है। और ग्रामीण क्षेत्र का मतलब जमीन से कनेक्शन है, उसका किसान से कनेक्शन है, उसका भी हो, क्योंकि आजकल किसान भी काफी परेशानी में है, उसको भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और एक चौथा है हमारी नारी शक्ति, उनको भी उनकी भी एक गणना हो, उनको भी हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से उनको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, हमें ये करने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि इन चारों क्षेत्रों में यदि हम काम करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर है हम कभी भी इस तरह की बात को लेकर के आएंगे ही नहीं। क्योंकि हमारे उसमें आप देखिए, हमें इस देश में एक आस्था के बीच में काम करने वाले विचार के लोग हम हैं। यदि हम भगवान राम की पूजा करते हैं तो भगवान कृष्ण की भी पूजा करते हैं, हम भगवान वाल्मीकि की भी पूजा करते हैं, संत रैदास की भी पूजा करते हैं। और यह सिर्फ इसलिए होता है कि उन समाज के भीतर यदि इस तरह की कोई बात कहने वाला व्यक्ति पैदा हुआ है, यदि महापुरुष पैदा हुआ है, तो स्वाभाविक तौर पर हमारे लिए एक आदर्श है, हमारे लिए वो आस्था का केंद्र है।
उसके विचारों को लेकर के हम आगे बढ़ने का, समाज में आगे बढ़ने का काम करते हैं। ये हमारी संस्कृति रही है इस देश की। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम सारे लोगों से कहना चाहता हूं, ये जो विमर्श हमने खड़ा किया है और ये शायद ये दिशा को, देश की दिशा को ठीक दिशा में ले जाने वाला नहीं होगा, मैं ऐसा समझता हूं। इसलिए सारे लोगों को, सारी चीजों को, सारी दुविधा को, सारे कसमकस को, सारे अजमंसस को छोड़ करके हम सबको मिलकर के एक बात का प्रयास करना चाहिए कि इस देश को ऊंचाइयों पर हम कैसे पहुंचा सकें, इस देश को, हमारे नौजवानों को हम काम कैसे दे सकें, हमारे नौजवानों को हम अवसर कैसे मुहैया करा सकें, हमारी नारी शक्ति को जो हमेशा पूजते रही है, जिसको हम पूजा करते रहे हैं, बिना नारी के संसार की कल्पना हम नहीं कर सकते थे। हमारी नारी शक्ति को, उसको पहचानने की आवश्यकता है। हमारे किसान के उस श्रम को पहचानने की आवश्यकता है, किसान के उस पसीनों को पहचानने की आवश्यकता है, जिसके आधार पर यह देश का 130 करोड़ आदमी अन्न प्राप्त करता है, भोजन प्राप्त करता है, अनाज प्राप्त करता है, उसको पहचानने की आवश्यकता है। हमारे उस गरीब को पहचानने की आवश्यकता है जो किसी कारण से इकोनॉमिकल तौर पर पीछे हो गया है, परंतु वो अपने उस विचार को लेकर के आगे बढ़ने के लिए सक्षम नहीं हो पा रहा है। अपने परिवार को, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का उन्हें उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए इस दुविधा से निकलने की आवश्यकता है। और ये जो दुविधा है, इसको हम तभी निकाल सकते हैं जब हम पार्टी की उस विचारधारा को एक दूसरे से कन्फ्रंटेशन नहीं करते हुए एक पैरेलल तरीके से निकालने का हम प्रयास करेंगे, तो मैं ऐसा समझता हूं कि हम शायद इसमें सफल हो सकेंगे और जो ये उद्देश्य हमारा है उस उद्देश्य को भी पूर्ति कर सकेंगे। आप सबने मुझे अवसर दिया, बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं कोर्ट से पुनः हमारे तमाम सारे साथियों को धन्यवाद करते हुए आप सबको प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, Shri Girish Gautamji. Thank you very much for your, I would say, important words and showing us the path to tackle this important issue. Thank you very much. My friends, it's now time in this session that we confer the Adarsha Yuva Vidhayak Samman, and in this session, we are going to confer this award on Purnima Neeraj Singh Ji, Honorable Member of Legislative Assembly, Jharkhand. This award, I request all the dignitaries to kindly come forward for conferring this award. The Adarsha Yuva Vidhayak Samman, Ideal Youth MLA Honor for the best outstanding performance in development work and promotion of parliamentary democracy, being conferred at the hands of the chairman of the session, Shri Girish Gautamji, and all the other dignitaries present here today, on Madam Purnima Neeraj Singh Ji, the Honorable Member of Legislative Assembly of Jharkhand, Indian National Congress, Dhanbad. भगवान बिरसा मुंडा की धरती से शिवाजी महाराज की धरती को मेरा प्रणाम, नमस्कार और झारखंडी जोहार। ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान मेरे झारखंड का है, ये सम्मान मेरी धनबाद नगरी का है जो कोयले की राजधानी, आर्थिक राजधानी कही जाती है, और विशेष करके उन श्रमिकों का है जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर आज ना सिर्फ झारखंड को रोशन किया है बल्कि पूरे देश को रोशन किया है। मैं MIT SOG डॉक्टर राहुल खरट जी को विशेष धन्यवाद देती हूँ, और मैं आप सभी को, सिर्फ हमारे युवा साथियों को सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, हमारे लिए एक ही मैसेज है और जो हमेशा नेशन ऑलवेज फर्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you very much, Purnima ji. Thank you very much for those words. And my friends, as you're aware, that this platform of Bharatiya Chhatra Sansad is not only for the tall personalities to share their thoughts, but in last 2 days you have experienced some of the wonderful speeches of young student leaders. And now it's time when I'm going to invite the student leaders of this session कि वो आए और अपने विचार हम सब से साझा करें. So first and foremost, I would like to invite on stage the student leader from all the way from state of Bihar, Anurag Shukla.
ऐसा नहीं है कि खून में उबाल नहीं है, पर शायद सही दिशा में उछाल नहीं है। लड़ेंगे मरेंगे बस जात पात पर हम, चाहे देश बेहाल है और गरीब की थाली में दाल नहीं है। नमस्कार, मैं अनुराग शुक्ला आज आपके सामने जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, उस विषय के साथ हमारे राष्ट्र की एक बहुत बड़ी क्षमता जुड़ी हुई है। उस विषय का लेना देना भारत की एकता, अखंडता और मेरे सामने हजारों की तादाद में बैठे नवीन भारत के भविष्य से है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डेटा, विविधता, लोकतंत्र और जाति जनगणना के दुविधा की। डेटा जो हमारे समाज का मानक है, विविधता जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, और लोकतंत्र जो मेरे भारत माता के मुकुट का अभिमान है। परंतु जब ये जाति जनगणना से जुड़ता है तब हमारी समाज को भेदभाव और विभाजन की अग्नि में झोंक देता है। और भारत का युवा होने के नाते मैं जो स्वप्न देखता हूं कि एक दिन मेरे देश में भूमियार और कुमार एक थाली में भोजन करेगा, अरे किसी दलित की बेटी एक ब्राह्मण कुल में ब्याही जाएगी, मुझसे वो इस स्वप्न को छीन लेता है। मेरे प्रबुद्ध श्रोताओं, आज इस देश की सत्ता के शीर्ष पे बैठे हुक्मरान चाहे कुछ भी कह ले कि जाति जनगणना से सबको समान अधिकार मिलेगा, परंतु सच्चाई तो राजनीतिक कुर्सी की लालसा है। क्योंकि भारत का हर एक नागरिक यह बात जानता है कि जब इन राजनेताओं के खोखले वादे और झूठे सिद्धांत एक झोपड़ी में बेसहारा मां के सामने बैठे भूख से बिलखते उसके बच्चों के आंसुओं से टकराते हैं तो मिट्टी में ही नजर आते हैं। साहब एक समय था जब अंग्रेजों ने हमें रियासतों में बांटा था। आज ये नेता हमें सियासतों और प्रतिशतों में बांट रहे हैं ताकि मैं और आप चिल्लाते रहें, मैं 10% वाली जाति का, तुम 3% वाली जाति के, और इनकी राजनीतिक रोटी पकती रहे। राजा का बेटा राजा बनता रहे, जो योग्य है वो लड़ता और मरता रहे। साहब, मैं जाति जनगणना का विरोधी नहीं हूं। आपको मैं बता दूं, मैं विरोधी नहीं हूं क्योंकि इस देश में कुछ जातियां हैं जिनके कल्याण की आवश्यकता है। पहली जाति है मणिपुर में जीते जी मारे जाने वाली मेरी मां और मेरी बहन की जाति। दूसरी जाति है उस बेरोजगार युवा की जो अपने बाप के बुढ़ापे की लाठी नहीं, उसके कंधे का बोझ बन चुका है। तीसरी जाति है फांसी पर लटकते उस किसान की, क्योंकि अरे जिस दिल्ली को उस किसान के पास जाकर खुद उसका हाल पूछना था, वही दिल्ली इतनी निर्दयी हो गई है कि उसे अपनी सीमाओं में घुसने तक का मौका नहीं देती। चौथी जाति है उस मजदूर की, क्योंकि चिलचिलाती धूप में 2 कदम चलने वाले इन नेताओं के चिकने तलवे क्या जाने कि 1500 किलोमीटर चलने से हुए छाले का दर्द क्या होता है। इसीलिए अंत में बस इतना कहना चाहता हूं कि दलित की राजनीति, पिछड़ों की राजनीति करते करते इन नेताओं की स्कॉर्पियो का फॉर्च्यूनर बन जाती है और उस दलित का साइकिल ही रह जाता है, इसका पता नहीं चलता। इसीलिए मैं भारत के भविष्य जो मेरे सामने बैठा है, मैं उससे यह कहता हूं कि हे भारत के भविष्य, तुम हो ठोस कितना ये तुम्हारा आकार बोलेगा। तुम हो ठोस कितना ये तुम्हारा आकार बोलेगा और तुम्हारी जाति के बारे में तुम्हारा किरदार बोलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। क्या बात अनुराग शुक्ला जी। I request Rahul Karat sir to kindly felicitate Anurag. Thank you very much for putting in front of us Fortuner से लेके Scorpio तक का प्रवास। Thank you very much. Next, I would like to invite on stage the student leader from Maharashtra, Kshitij Naik. इथे उपस्थित सर्वांना माझा नमस्कार. I am Kshitij Naik and I'm here to speak on the topic caste census dilemma. Caste census is a double-edged sword that has both pros and cons. If you look at the positive outcomes, then it helps us to properly deliver the welfare schemes and reservation policies with the backward castes. It also helps us to discover many such things such as sex ratio, infant mortality rate, literacy rate, economic status of various castes, etc. But the problem here is that the end goal of caste census is very dangerous for the entire country. Slogans such as "Jitni abadi utna hak" were raised
raised by the opposition leaders. Let me ask them with the same logic, should we Hindus come forward and take back all our rights and reclaim everything that belongs to us? This caste census, more than a statistical tool, is used as a political tool for caste appeasement, a tool to create factions within the majority. For example, after the Bihar caste census, the Bihar government proposed to increase reservations up to 75%, where there is already 50% reservations in the state. And if this policy is applied in every other state of Bharat, it is going to result into severe brain drain, similar to the 1980s, where all the skilled and talented people will leave the country, as most of the jobs here will be given on the basis of reservation. Not just that, the process of caste census is filled with uncertainty and complexity. For example, after the 1931 caste survey, there were 4,147 castes in India, and the same number went up to 46 lakhs in 2011 caste census, which is impossible. A particular caste may be OBC in a particular state and SC and ST in other. Not just that, many of them have been even converted to different religions. Inter-caste marriages and interstate migrants are also a huge challenge in front of caste census. And even if the government comes up with a foolproof mechanism to conduct caste census, still they won't be able to solve the problem of sectional differences and political manipulation. Where today we should be collectively speaking of ourselves as Bharatiyas, we will be again divided into religion and caste, and again end up in the vicious cycle of caste-based reservations. Logically speaking, caste census is not a threat, but the outcomes are. Bharat might end up into caste wars. It is my question to each and every member sitting over here. Is your caste greater than the integrity of the nation? Greater than Bharat Mata? Greater than your culture and civilization? If yes, then you deserve to be ruled by the British for 200 years. And if your answer is no, then let's together move towards a Hindutva welfare state, where all the religion and caste have to accept Sanatan Dharma as the cultural base more than a religious entity. Where no matter what religion you follow, what caste you come from, the culture will be Sanatan. And it is Sanatan Dharma which will unite all of us despite of all these differences and make us Bharatiya in true sense. And to conclude, I would like to say कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, सनातन संस्कृति और भारतीय होने से बड़ी कोई जाति नहीं होती, कोई जाति नहीं होती। अरे दिया ही नहीं बचा, अरे दिया ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे? सनातन धर्म और भारत देश ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे? जाति का क्या करोगे? धन्यवाद। Fascinating views, Kshitij. Heartiest congratulations. I request Sri Rahul Karat sir to kindly felicitate him. And the next guest speaker, the next student leader we have here on stage, all the way from Himachal Pradesh, Saurabh Singh Jariyal ji. के ऊपर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले, जाति पूछने वाले। आदरणीय अतिथिगण, माननीय अध्यापकगण एवं इस पटन पर उपस्थित सभी सप्रेष्ठ छात्र छात्राओं को मेरा विनम्र अभिवादन। मित्रों, देवभूमि हिमाचल प्रदेश से पुणे की इस पावन धरती पर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं एक बहुत ही गहरे विषय पर वार्तालाप करने के लिए। डेटा विविधता और लोकतंत्र, जाति जनगणना की द्विद्वंदता। हमारे बहुत से समझदार राजनीतिक नेता जो इस विषय पर एक गहरी सोच रखते हैं, परंतु केवल तब तक जब तक वे स्वयं किसी धार्मिक, सामाजिक एवं जातिवादिक विवादों में उलझ रहे हो। ऐसे में क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम हमारे समाज में समरसता की एक नई दिशा खोजें? मित्रों, स्मरण कीजिए, बड़ा बुरा लगता है यह देख करके कि जहां एक ओर हमारे पड़ोसी देश डेटा एनालिटिक्स और डेटा विजुअलाइजेशन जैसी तकनीकों पर शोध कर रहे हैं, वहां हम इतने जातिवादी हो गए हैं कि हम डेटा वितरण में भी जातिवाद को खोज रहे हैं। आज से हजारों वर्ष पूर्व किसी ने हमें विभाजित किया था तो उसका परिणाम यह है कि आज 17 से अधिक देश, 700 से अधिक भाषाएं, 3000 जातियां, 25,000 से भी अधिक उपजातियों में हम विभाजित हो चुके हैं। और जिस प्रगति से आज के राजनीतिक नेता इस ज्वाला में आहुति दे रहे हैं, वह दिन दूर नहीं जब द्वंद्व दो संप्रदाय, दो समुदाय के लोगों में नहीं, आपके अपने मित्र, आपके बंधुओं में होगा और फिर कोई हमें गुलाम बनाकर जंजीरों में जकड़ लेगा। मित्रों, हम जो भी चर्चा करते हैं, चाहे धार्मिक, चाहे हम सामाजिक या जातिगत मुद्दों की, उसका केवल एक अंत है कि हम भारतीय हैं बस।
जब हमारा देश आजादी के लिए लड़ रहा था तब क्या किसी शिया सुन्नी का, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक का, हिंदू बुद्ध सिख या जैन का रक्त बहा था? नहीं, वो भारतीयों का था, एक भारतीय का रक्त बहा था। और जब मैं भारतीय शब्द की परिभाषा आपके सामने संबोधित करता हूं तो यह केवल एक शब्द मात्र नहीं है, यह प्रतीक है उस संस्कृति का जहां अयोध्या के राजा रामचंद्र ने शबरी के झूठे बेर खाए थे, जहां उनके परम मित्र निषाद, सुग्रीव और केवट जैसे वनवासी कहलाए थे, जिनकी कथा रचयिता महर्षि वाल्मीकि कहलाए थे। यह वो सभ्यता है जहां से स्वामी विवेकानंद जी ने सारे जग को वसुधैव कुटुंबकम के सही मायने सिखाए थे। यह प्रतीक है उन बप्पा रावल और महाराणा प्रताप के शौर्य का जो भीलों संग कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। यही वो नालंदा है जहां हम सब बिना भेदभाव के पड़े थे। यह भूमि है उस वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की जो सबको संग लेकर स्वराज और हिंदुत्व की बातें करते थे। तो मैं पूछता हूं आप सबसे, वे कौन है जो हमें जातियों में बांटा करते थे? मित्रों, हमारी देश की प्रगति में एक बहुत बड़ा मूल्य हमारी एकता में छुपा है और उसी में हमारी असलियता है, क्योंकि अंत में हम सब भारतीय हैं बस। मित्रों, हमें याद रखना चाहिए कि हमारे जातिगत, सामाजिक एवं धार्मिक भिन्नताएं हमें बांधने की जगह एकजुटता का साधन बन सकती है यदि हम हमारे भारतीयता के इस अस्तित्व को पहचाने, वह संदेश जो उन वीरों ने दिया था। तो आओ इस पटन से एक संकल्प लेते हैं कि यदि कोई पूछे क्या धर्म क्या जाति है तुम्हारी, तो सीना तान कर कहे मैं भारतीय हूं। यही है असली पहचान हमारी, और केवल उसी दिन हम राम राज्य की उस कल्पना को साकार कर पाएंगे जिसका स्वप्न स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी जी और वीर सावरकर ने देखा था। एक ऐसा राम राज्य जहां आपस में कोई बैर नहीं, गैरों में भले ही अपनों को ढूंढे पर अपनों में कोई गैर नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। Thank you very much, Saurav. Heartiest congratulations. And now I would like to request the Akash Sapkar from the state of Maharashtra to kindly address the gathering. नमस्कार सभी युवा और युवा शक्ति के इस महोत्सव में उपस्थित आप सभी को मेरा जोहर। जिन्होंने इस देश में शिक्षा की क्रांति लाई, उस महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले की इस पावन भूमि महाराष्ट्र में मैं आकाश सपकारे आप सभी का स्वागत करता हूं। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, ताकि जनता के सम्मान और अधिकारों की सुरक्षा हो सके और सभी का विकास हो सके। क्या लेकिन आज सबके साथ सबका विकास हो रहा है? राजस्थान में 9 साल का बच्चा जो सिर्फ अपने शिक्षक के पानी के घड़े को हाथ लगाता है तो जातिवादी मानसिकता बेरहमी से पीट कर उसकी जान ले लेती है। कारण है उसकी जाति। आजादी के 75 साल बाद भी जब कोई आदिवासी महिला, दलित, ओबीसी सुप्रीम कोर्ट की जज क्यों नहीं बन पाती, यह सवाल जब मुझे पड़ता है तब जातिगत जनगणना मुझे जरूरी लगती है। जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उस लोकतंत्र के बड़े बड़े न्यूज चैनल के संस्थापक, फाउंडर कोई उपेक्षित समुदाय से क्यों नहीं दिखता, यह सवाल जब मुझे पड़ता है तब जातिगत जनगणना मुझे जरूरी लगती है। पिछले 5 सालों में 13,000 से भी अधिक SC, ST, OBC छात्रों ने देश के प्रीमियर से पढ़ाई क्यों छोड़ दी, यह सवाल जब मुझे पड़ता है तब जातिगत जनगणना मुझे जरूरी लगती है। पिछले 5 सालों में 400 से भी अधिक सफाई कर्मचारियों की मौत सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करते वक्त हो गई, और यह सफाई कर्मचारी किन जातियों से आते हैं, यह सवाल जब मुझे पड़ता है तब जातिगत जनगणना मुझे जरूरी लगती है। नौकरशाही के शीर्ष स्थानों पर हमेशा से ही उच्च जातियों का वर्चस्व रहा है। अरे सच्चाई तो यह है कि यहाँ का उपेक्षित और वंचित समुदाय सत्ता की संरचना में शामिल ही नहीं है। आज केंद्र में जो 90 सचिव है, जो देश की नीति निर्धारण में और विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका बजाते हैं, उनमें से सिर्फ 3 ओबीसी हैं। इसलिए हम सबको पता चलना चाहिए कि आखिर सत्ता में कितने आदिवासी है, कितने दलित है और उनकी सत्ता संस्थानों में भूमिका क्या है। छोड़िए महाराष्ट्र की बात करते। महाराष्ट्र में कुछ जातियां ऐसी भी है जिनका प्रतिनिधित्व शिक्षा में न के बराबर है। उनमें ओल्गाना, माचीगार, भामटा और इन जातियों का भी डेटा कहीं नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, और ये जनता का शासन आना चाहिए। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि अगर जातिगत जनगणना हो जाती है तो धर्म के नाम पर राजनीति शुरू हो जाएगी, लोगों को जातियों में बांटा जाएगा। लेकिन अगर धर्म की गिनती हो सकती है, भाषा की गिनती हो सकती है, तो जाति की गिनती क्यों नहीं हो सकती। इन सब मिथकों को हम युवाओं को तोड़ फेंकना है, ताकि वंचित और उपेक्षित समुदाय का विकास महज कागज पे नहीं बल्कि असलियत में हो। बाधा है आती है आए, गिरे पले की घोर घटा है,
हास्य रुदन में, तूफानों में, अगर असंख्य बलिदानों में, अपमानों में, सम्मानों में, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो आइए इस देश को एक नया, एक सशक्त लोकतंत्र बनाए। जय हिंद, जय जोहार, जय भीम। थैंक यू सो मच। Thank you very much, Akash, for putting your views across from the stage of 13th Bharatiya Chhatra Sansad. I request Shri Rahul Karat sir and Girish Gautam ji to kindly felicitate and congratulate him. Next, I would like to request to come on stage all the way from Uttar Pradesh, Vidhan Malik. रेतीली जमी है, साया भी तपता है यहाँ। यही समय है, सही समय है जब एक आदिवासी राष्ट्रपति और एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनता है यहाँ। आदर, अभिनंदन, आभार। आज मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले पीलीभीत के एक मध्यम वर्गीय किसान श्री योगेंद्र सिंह का सुपुत्र विधान मलिक आज भारतीय छात्र संसद के मंच से इस देश के युवाओं को संबोधित करने आया हूं। आज मैं इस महाराष्ट्र की पावन धरा पर खड़े होकर इस देश की युवा शक्ति को समझाने आया हूं कि आखिर क्यों हमें जातीय जनगणना की आवश्यकता है। जब मैं देखता हूं कि देश का एक दलित बेटा के सिवान सामाजिक रूढ़िवादिता और बंदिशों को तोड़कर इसरो का अध्यक्ष बने और अपनी ऊर्जा से उसे आसमानी बुलंदियों पर पहुंचा दे, जब मैं देखता हूं कि एक आदिवासी समुदाय की बेटी मैरी कॉम देश के लिए विश्व स्तर से 5 स्वर्ण पदक लाए और देश के हर एक देशवासी के लिए गर्व करने का मौका दे, जब मैं देखता हूं एक पिछड़ी जाति से आए एक साधारण सा व्यक्ति विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे पुरानी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तब मुझे लगता है कि इस देश में वाकई सबको समता का अधिकार है। किंतु जब मैं सिक्के के दूसरे पहलू को देखता हूं, जब मैं देखता हूं कि कैसे एक हाथरस की दलित कन्या का बलात्कार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी जाए और उसके माता पिता उसका शव देखने को भी तरसे, जब मैं देखता हूं कि भारत सरकार में उच्च पदों पर आयुक्त अधिकारियों में केवल 4.9% ही दलित अफसर हों, और जब मैं देखता हूं सन 2021 में जाति कट्टरता की आड़ में एक ही गांव के 40 दलित परिवारों के घरों में आग लगा दी जाए, तब मुझे 2 पंक्तियां याद आती हैं कि गरीबी नहीं आती साहब जाति देखकर, गरीबी नहीं आती साहब जाति देखकर, घिन जरूर आती है मुझे ऐसी राजनीति देखकर। और तब मुझे लगता है कि इस देश की पिछड़ी जातियों के संरक्षण के लिए जातीय जनगणना आवश्यक नहीं बल्कि अति आवश्यक हो जाती है। सौभाग्य महसूस करता हूं जब देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में एक आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जब राष्ट्रपति पद की शपथ लेती हैं, किंतु कहीं ना कहीं एक सवाल मेरे मन में खटकता है कि क्या एक आदिवासी महिला के राष्ट्रपति बनने से बाकी सारे आदिवासी भी सुरक्षित हो गए। इस सदन में बैठे सभी गणमान्य जनों से कहना चाहूंगा कि यदि आप वाकई उन आदिवासियों की वास्तविक स्थिति देखना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ के उन आदिवासी बहुल इलाकों में जाओ, मणिपुर मिजोरम के उन आदिवासी बहुल इलाकों में जाओ जहां वे आज भी 2 वक्त की रोटी खाने के लिए तरस रहे हैं, जहां आज 21वीं सदी में विश्व इतना आगे बढ़ गया और आज भी वे शिक्षा के संसाधनों की तलाश करें। आज भी जब उनके पानी धूप की तृप्त होती हुई पसीने से तृप्त होती हो, तब मुझे लगता है कि वह आदिवासी का जीवन भी सरकार का हो चला है, सिर्फ धोखे पर धोखे दिए जा रहा है। और मान्यवर, एक युवा होने के नाते इस देश के सभी युवाओं को प्रेरित करना मेरा काम है। और अंत में जाते जाते 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि जाति बनाने वाले जाति गणना से कांप रहे, जाति बनाने वाले जाति गणना से कांप रहे, चली जाएगी लुटी हुई ये पहले से ही भाप रहे, सदियों की ये लूट प्रिय अब लंबी चल ना पाएगी, कोई एक ना राजा होगा बारी सबकी आएगी, बहुसंख्यक जाति का हिस्सा चंद जातियों ने खाया है, अरे बनते तो बड़े न्यायशील हो ये कैसा न्याय कराया है, नहीं हटूंगा किसी तरह मैं न्याय अवश्य ही पाऊंगा, अरे करते रहो तुम जाति जाति मैं जाति जनगणना कराऊंगा, मैं जाति जनगणना कराऊंगा। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Vidhan, for sharing your views, and heartiest congratulations. And congratulations to all the student leaders, Anurag, Kshitij, Saurabh Singh, Akash and Vidhan, for putting their views across from the stage of 13th Bharatiya Chhatra Sansad. Now it's time when I'm going to invite
the eminent speaker of this session, Dr. Ajoy Kumarji, to kindly address the gathering. But before I do that, I would like to request my technical team to kindly relay a small film made on life and work of Dr. Ajoy Kumar. Dr. Ajoy Kumar embarked on a distinguished journey, earning an MBBS degree in 1985 and subsequently serving as an IPS officer in Jamshedpur from 1986 to 1996. In the mid-90s, he became the youngest IPS officer to receive the President's Police Medal in gallantry. His impactful tenure in Jharkhand saw a significant reduction in crime rate. Transitioning to the corporate sector, he held senior roles at Tata Motors and became the president of Apollo Hospital. Entering politics in 2011, Dr. Ajoy Kumar secured a Lok Sabha seat from Jamshedpur in the 15th Lok Sabha elections. Beyond legislative duties, he facilitated the issuance of Aadhaar cards and established a call center for impoverished patients. Advocating for free treatment, 2 lakh patients benefited from his efforts. As an MP, he wrote 3 lakh letters to address various constituency issues. Recognizing his leadership, he became the president of the Congress Party in Jharkhand in 2017 and later assumed the role of AICC in charge for several states, including Tripura, Nagaland, Sikkim, Orissa, and Tamil Nadu by December 2023. Let's extend a warm welcome to the accomplished Dr. Ajoy Kumar. Please put your hands together and welcome with a big round of applause, my friends, Dr. Ajoy Kumarji. On? Yeah. धन्यवाद राहुल जी, गिरीश जी, मनोज जी, संजय जी, पूर्णिमा जी, मंच के सभी सम्मानित हमारे साथीगण और उपस्थित हमारे सभी परिवार के सदस्यगण। मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों में बोलूँगा। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जाति जनगणना पर जब चर्चा हो रही है तो डाटा पर कोई नहीं चर्चा कर रहा है। मेरा नाम अजय कुमार है और जानबूझ के हमारे पिताजी ने कुमार लिखा ताकि किसी को समझ में न आए कि कौन से समाज से आता हूं। वो भारतीय विदेश सेवा में थे और हमको कोई आइडिया नहीं था कास्ट के बारे में। हैदराबाद पब्लिक स्कूल में हमने पढ़ाई की, उसके बाद जिप्मर पौंडीचेरी, फिर भारतीय पुलिस सेवा में। पहली बार जब मैं बिहार गया तो जब फॉर्म भर रहा था तो वहां के डीजी साहब के आदमी ने हमसे पूछा कि भैया ये अजय कुमार क्या होता है, जात बताइए। जितने भी लोग जो बोलते हैं कि जात एग्जिस्ट नहीं करता है वो सभी शहर के लोग अधिकांश होते हैं। गांव में जाकर देखिए क्या कास्ट होता है। और मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, एक और ही गांव 1984 40 साल पहले के समय है, हर नीचे जात की महिला को लैंडलॉर्ड के साथ पहले रात बितानी पड़ती थी, बिहार में जहां पर मैंने ट्रेनिंग की। विक्रम थाना में पहला चुनाव जब हम एएसपी में कराए तो वहां के दलित टीचर को 50 साल से वोट देने की हक नहीं मिला। संविधान हक देता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दलित होके 50 साल में एक बार भी वोट नहीं डाल पाए। चारों तरफ देख लीजिए, अगर हमको लगता है कि देश सामान्य है तो टीवी चैनल के एंकर में और कोई समाज के लोग नहीं है। लोग को खराब लगेगा लेकिन सवाल तो पूछना है। कंपनी के सीईओस में कोई नहीं है। ये बात डेटा है सर, ये बात डेटा की बात मैं बोल रहा हूं। इस देश के 10% आबादी के पास इस देश के 75% से ऊपर संपत्ति पर कब्जा है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। और 50% नीचे वाले समाज के पास 2.7% जो है संपत्ति है। लेकिन कोई बात नहीं, क्यों जाति जनगणना की करने की आवश्यकता है? हर आदमी जाति जनगणना अपने जात के आधार पर उसको जो है प्रोपोगेट करता है, या पक्ष में या खिलाफ में। जिस प्रदेश से मैं आता हूं, बिरसा मुंडा जी और पूर्णिमा जी की जमीन से,
वहां पर देखिए 27% आदिवासी का क्या संपत्ति पर कंट्रोल है? एक माइनिंग कंपनी का मालिक आदिवासी नहीं है, नॉट अ सिंगल, नो कंपनी। डेटा, अब लड़ाई क्या है? सब बोलते हैं कि पहले तो मैं सोच रहा था कि अभी भी इस देश में संविधान चल रही है, कोई बोल रहा था सनातन धर्म पर चलना चाहिए, कोई बोलता है इस पर। भाई साहब, संविधान है, संविधान पर चलिए जब तक संविधान बचा रहेगा। और उस आधार पर जब आजादी के समय क्या SC ST रिजर्वेशन गलत था? सेकेंड क्वेश्चन फॉर एवरीबडी, आप सब लोग यहां पर उपस्थित है, सब अपने जात जानते हैं, लेकिन जातीय जनगणना करने में तकलीफ हो रही है। एवरीबडी नोस इन दिस कंट्री व्हाट इज देयर कास्ट। व्हेन द इकोनॉमिक बैकवर्ड लॉ वाज पास्ड, 50% नहीं है साहब, इट इज 50+10। Who goes for the economic backward reservation? No Adivasi, no SC, no ST, no OBC. उस पर कोई नहीं बोल रहा है कि गलत हुआ है। I want the crowd to understand the political issues, not a political. देखिए, कास्ट सेंसस अगर राजनीति की दृष्टिकोण से आप देखोगे तो सबसे बड़ी गलती होगी। और जहां तक फॉर्चूना है, भगवान राम के नाम पर लेकर भी फॉर्चूना में बैठ गए हैं, और जातीय जनगणना के नाम पर भी फॉर्चूना में बैठ गए, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। बट द फैक्ट इज कास्ट, एंड आई वांट यू टू आस्क यू दिस क्वेश्चन टू दिस ऑडियंस। Economic backward reservation was passed in the 2019 within 10 minutes. No objection. And by the way, जो पार्टी अब इसको विरोध कर रही है, 2018 में उस समय का बड़े नेता रक्षा मंत्री, उस समय का रक्षा मंत्री ने कहा था कि हम जातीय जनगणना करेंगे। 2018 Mr. Rajnath Singh had said that we will do a caste census in 2019 when 21 census come, but no problem. So political issues should not be confused with what is important. The issue is simple. Let me read out the data for you. I told you about Anchor, I told you about CEO of the company. मैं तो यहां पर CEO था Cummins Diesel Sales Service में, बगल में इरांडवाना में। Next door, look around you and ask you this question. When an Adivasi girl from Jharkhand is burnt with cigarettes in Gurgaon, it is because she's a tribal and she doesn't have access to justice. Let us not be blind. What about a boy who gets beaten up? Have you heard any other caste children being beaten and losing eyesight and dying? Have you heard any IPS officer who is from a Dalit community who needs police escort to sit on a horse? क्या बात कर रहे हैं साहब? एक दलित ने चश्मा पहन लिया गुजरात में पालनपुर में, तो आपने पीट पीट के मार दिया, और तब आपने पूछते कि गलत है। The instruments of progress. एंड लड़ाई किस बात की है मैं बताता हूं। एडमिशन पर, एडमिशन पर ही लड़ाई है, क्योंकि हमने क्या किया, लोग को बांटने के लिए आप एडमिशन बढ़ा दो, MBBS के सीट बढ़ा दो, तो किसी की लड़ाई नहीं है। प्रॉब्लम वही है, बच्चे लोग को लगता है कि अगर हम मेरिट से आए हैं तो हमारी सीट कोई छीन लेगा। अगर हम MBBS सीट को 2 लाख कर देंगे तो सबको एडमिशन मिल जाएगा जो मिनिमम क्राइटेरिया में है। सो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड इट। लेट मी रीड आउट द फिगर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द डेटा। और डेटा में क्या होता है, सब बोर हो जाते हैं, एवरीबडी गेट्स बोर्ड ऑन डेटा, बट द फैक्ट इज लुक एट द पिछड़ा रिजर्वेशन है यूनिवर्सिटीज में ना सर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन है ओबीसी के लिए। टोटल ओबीसी रिप्रेजेंटेशन 27% इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, टोटल प्रोफेसर्स एंड टीचर्स लेस देन 6%। रिजर्वेशन होने के बावजूद यह स्थिति है। एसटी 7% रिजर्वेशन फॉर टीचिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी, total number of ST teachers less than 1%. मेरा भारत महान है, सबको मौका मिल रहा है। We are all moving forward towards. How can you justify this? How can you say that the ST population of India is 15%, but you will not have professors more than 2%?
How can you say it? How can you not have a single TV anchor from an SC community? Kyun? The issue is because from birth they study in government schools. They have the biggest challenge on their career. हम जैसे लोग, हमारे पिताजी भारतीय विदेश सेवा में थे, ट्यूशन मिला, MBBS पास कर गए ऑल इंडिया एंट्रेंस में, IPS, क्योंकि हमारे पास सुविधा की कोई कमी नहीं थी। आप एक दलित बच्चा झारखंड में कोई गांव में UPSC की तैयारी करके आप बोल रहे हो कि अजय कुमार से कॉम्पीट करें? कैसी न्याय है? हमारा इतना ही कहना है। अरे सर, पहले बहस नहीं हो रही है, सुन लीजिए। अरे यही दिक्कत है। ए बॉस, हम बहस, संस्कार तो रखिए सर, संस्कारी रहिए, संस्कार बोलने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। यही प्रॉब्लम है। जब हम आपसे आपकी बातें बढ़िया से सुनते हैं तो आप हमारे बात क्यों नहीं सुनते हैं? आप आकर बोलिए, आप भी काबिल होकर मन से बोलिए, तब तक शांत रहिए। द इंपॉर्टेंट पार्ट इज, नाउ लुक एट इट, आप काबिल बनिए, मन से बोलिए, तब तक। मेरा इतना ही कहना है कि डेटा, अगर आपको मालूम है कि इस गांव में एक OBC का बच्चा का पिताजी डॉक्टर है, तो आपको उसको आरक्षण और सुविधा देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पिताजी IAS ऑफिसर, जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सचमुच में गरीब हैं तो आप सुविधा कैसे पहुंचाओगे? इस देश में 80 करोड़ लोग फ्री राशन 5 किलो पर चल रहे हैं। वो डेटा पर चल रहा है कि डेटा पर नहीं चल रहा है? वृद्धा पेंशन डेटा पर चल रहा है कि डेटा पर नहीं चल रहा है? महिला पेंशन डेटा पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो कोई भी सरकार जब तक डेटा के आधार पर उनको, आप बोलते डॉक्टर के पास टेस्ट नहीं कराया, बोले कि अजय कुमार तू तो ठीक है, मर गए दूसरे दिन डायबिटीज से। कास्ट सेंसस इज एन एक्सरे, कास्ट सेंसस इज एन एक्सरे। और राजनीतिक प्रतिद्वंदी को एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा, 2018 में कास्ट सेंसस ठीक था, 2023 में तकलीफ हो गई आपको। राजनाथ जी ने पार्लियामेंट में बोला था, तो 18 में ठीक, 23 में पेट में दर्द। ये कैसी परिभाषा है साहब? इस किस तरह की राजनीति है? क्योंकि उस वक्त आपको लगा कि OBC की वोट चाहिए। हमारा इतना ही कहना है, प्लीज रिमेंबर वन थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी इसके बाद मनोज झा जी भी आएंगे तो सुनेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आई कम फ्रॉम अ प्रिविलेज क्लास बट अ बैकवर्ड कम्युनिटी। हमें कोई हक नहीं है किसी तरह का सुविधा के लिए। आई एम प्रिविलेज बट फ्रॉम अ बैकवर्ड। हमें कोई हक नहीं है। सेंसस में हमको, मेरे बच्चे को दूर दूर तक नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन वो हाथरस की बच्ची हो या कोई आदिवासी लड़की हो, उसको फ्री एजुकेशन से लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का, कोचिंग का सुविधा कास्ट सेंसस ही दिला सकता है। You can only give coaching free to the poor children to become doctors, engineer, if you know which community they belong. Otherwise, ये सब हम मंच में खड़े हैं, वो 100 मीटर्स के रेस में हम 90 मीटर पर खड़े हैं, और वो बच्चा जो ST, SC, OBC का बच्चा वो 0 पर खड़ा है, और तब बोलते हो कि हम बहुत काबिल हैं। Then you say that you're very competent, that I am here because of my competence. You're not here because of your competence, you're here because of your birth. You're here because your father was educated. And you are here because you come from a privileged caste. And that's about it. Give opportunity to everybody and see how beautifully they fly. That is the India I hope to see. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Ajay Kumar ji. Thank you very much for putting your views from the stage of 13th Bharatiya Chhatra Sansad in this important session. Next we have on stage the eminent speaker in this session, the former director of Center for the Study for Developing Societies, CSDS, Dr. Sanjay Kumarji. But before I invite him to address the gathering, I would like to request my technical team to kindly relay a small film. Shri Sanjay Kumar, a trailblazer in Center for Study of Developing Societies and current co-director for Lok Niti.
Shri Kumar is renowned for his deep insights into Indian democracy. Specializing in electoral politics, political mobilization, and the dynamics of Indian youth, Shri Kumar's impactful research spans crucial topics such as the state of the democracy in South Asia and challenges faced by Indian farmers. His academic journey began with a bachelor's in political science from Ramjas College in 1988, followed by a master's and MPhil from the University of Delhi. A prolific author, Shri Kumar's contributions extend beyond academia, with regular columns in both English and Hindi newspapers and frequent appearances as a television commentator. His expertise has earned him the role of an esteemed international election observer. Among his notable works are Youth in India, Aspirations, Attitudes, Anxieties, Postmandal Politics in Bihar, Changing Electoral Patterns, and Electoral Politics in India, Resurgence of the Bharatiya Chhatra Party. His publication, Measuring Voting Behavior in India, showcases his scholarly excellence. Let us warmly welcome Shri Sanjay Kumar. Please put your hands together and welcome with a big round of applause, Dr. Sanjay Kumar ji. Honorable dignitaries on the dais, my co-panelists and people who present in the audience. If I look at the title of the topic of the discussion which we are having just now, there are two parts of that. One is data, democracy, diversity, and then there's the second part, dilemma of caste census in India. और dilemma of caste census पे बहुत चर्चा हो गई. कई लोगों ने अपनी अपनी बातें कही. People have already expressed, and as you can imagine, this is a topic on which you would have very strong contentious views. People would be standing for or against, and we find it very difficult to figure out, the gray areas. What I will try to do in the next 10-12 minutes, I will pick up some examples from our day-to-day life to figure out why data is important in a diverse country like India. हिंदुस्तान जैसे बड़े देश में जहाँ तमाम तरह की विभिन्नता है, वहाँ डेटा की क्यों ज़रूरत है, पॉलिसी मेकिंग में डेटा की ज़रूरत है, और पॉलिसी मेकिंग कंट्री के अलग अलग लोगों के लिए थोड़े अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है, इसी के लिए डेटा की ज़रूरत है. और अगर हम अब कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं तो कास्ट सेंसस से कास्ट के डेटा इकट्ठे करने की बात की जा रही है. जैसा मैंने कहा कि आई विल ट्राई एंड गिव यू सम लेमन्स एग्जांपल टू you to understand why data is important in a diverse country like India. अब मैं दिल्ली से आ रहा हूँ और कई लोग हैं जहाँ दिल्ली से आए. पुणे आने के पहले मैंने पूछा किसी को फ़ोन करके, पुणे में मौसम कैसा है? उन्होंने कहा मौसम बहुत अच्छा है. अब दिल्ली में ठंड बहुत ज़्यादा है. आप पुणे से अगर दिल्ली जा रहे होंगे अभी तो लोग कहेंगे, आप पता करेंगे तो लोग बोलेंगे कि ठंड बहुत ज़्यादा है. और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ठंड नहीं है, बहुत कम ठंड है. What you need to do, because you are not acquainted with Delhi and I was not acquainted with Pune, and if suppose you are traveling to Srinagar, तो श्रीनगर जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे कि ठंड है या नहीं है. These are vague expressions. Finally आप क्या करते हैं, आप टेम्परेचर देखते हैं और डेटा देखते हैं कि टेम्परेचर दिल्ली में इस वक्त 5 डिग्री है. Then what you need to do, you have to put on your warm clothes. तो इस डाइवर्सिटी को कैसे समझें, इस डाइवर्सिटी को समझने के लिए डेटा की आवश्यकता है. मैंने आपको वेदर के हिसाब से बताया कि हिंदुस्तान में तमाम डाइवर्सिटी हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, और वेदर के हिसाब के उदाहरण देके मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेटा की आवश्यकता क्यों है और डाइवर्सिटी को हमें रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है. हमें ये जानने की ज़रूरत है हिंदुस्तान में कि अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग समुदाय के लोगों की आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या है. और अगर ये समझना है तो हमें नैरेटिव्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है. वी शुड नॉट गो बाय द नैरेटिव्स. नैरेटिव ये है, अरे नहीं अब तो एसटीज की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है. लुक एट, वी हैव अ प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री हु बिलोंग्स टू दैट कम्युनिटी. नहीं, दलितों की स्थिति अब वैसी नहीं है. एससीज हैव
grown up, because I see a SC family next to my household. मेरे neighbor जो हैं, they are well off. These are small examples. We need to collect the data. क्योंकि अगर आपको सामाजिक आर्थिक विषमता या विषमता नहीं है, because we would get to know only from the data if the data is collected. So data is important in our day-to-day life. I will try and give you another example. You go to a doctor और आपको बुखार है और डॉक्टर के पास आप जाते हैं और डॉक्टर आपका चेहरा देख के कहता है कि यू फील वेरी अनवेल, मुझे तो लग रहा है आपको बहुत तेज बुखार है, व्हाई डोंट यू गेट एडमिटेड इन माय क्लिनिक, आई हैव अ वेरी गुड हॉस्पिटल. डॉक्टर ने आपको कुछ भी नहीं बताया, बिकॉज अगर वो कह रहा है कि आपको बुखार है, आपको बहुत तेज बुखार है. दिस इज अ नैरेटिव, दिस इज अ परसेप्शन. हाउ डू आई गेट टू नो कि बुखार है या नहीं है? एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, थर्मामीटर लगा के डेटा जानने की जरूरत है कि बुखार हमें कितना है, बुखार 102 है या बुखार नहीं है. सो जब ये कास्ट सेंसस की बात हो रही है, कास्ट सेंसस की जब बात हो रही है, तो वो एक तरह से थर्मामीटर है हमारा. वी वांट टू पुट दिस थर्मामीटर इन द सोसाइटी टू फिगर आउट फर्स्ट नंबर ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट, और उससे आगे जाने की जरूरत है क्योंकि इसके पॉलिसी फॉर्मुलेशन में इसकी आवश्यकता है. एंड देन वी नीड टू नो द background, socio-economic background, basically economic background of the people belonging to different caste. And this can be useful in policy formulation. किसी भी पॉलिसी को बनाने के लिए आपको आंकड़े की जरूरत है. डॉक्टर अजय कुमार ने कई उदाहरण दिए. तमाम सरकारी स्कीम्स की जब चर्चा होती है, इन सब स्कीम्स का निर्धारण कैसे होता है? हाउ दी स्कीम्स आर बीइंग रोल्ड आउट फॉर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल बेस्ड ऑन डेटा. सो डेटा, what is this caste census all about? This is a tool. Census is a tool to know the diversity of the people of this country, and that diversity refers to, the caste diversity, economic diversity, diversity of educational attainment, diversity of occupational attainment. So इसी के लिए मुझे लगता है कि कास्ट की सेंसस की जरूरत है. और मुझे लगता है टेक्निकलिटीज में ना जाएं तो बहुत इसमें कोई लंबी चौड़े कवायद की जरूरत नहीं. यू डोंट नीड टू डू अ लॉट ऑफ एफर्ट टू डू अ कास्ट सेंसस. Census has not been conducted in this country in 2021. The next census, when it takes place, you need to insert only a couple of more columns. SCs और STs के लिए एक कॉलम है, उसमें पूछा जाता है कि आपकी जाति क्या है. आप एक कॉलम और लगा दें and you get to know the data of the different caste of the people. अलग अलग कास्ट के लोगों की संख्या कितनी है, और सेंसस से जो दूसरे आंकड़े हैं वो तो हमारे पास अपने आप ही आ जाते हैं, which will help us to understand the socio-economic status of people belonging to different castes. I don't understand what is the dilemma in that, why there is a strong reservation about that. But my own sense is that yes, we need to understand very, very carefully what will this data be used for. Is it being used only for political purposes? And that's the criticism कि इसका सिर्फ राजनीतिकरण होगा. राजनीतिकरण तो कई चीजों का हो रहा है, मुझे लगता है उससे बचने की जरूरत है. लेकिन मैं स्वयं मानता हूं कि आंकड़े इकट्ठा होने चाहिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है. बिकॉज डेटा इटसेल्फ, दिक्कत यह है कि उस डेटा का इस्तेमाल कैसे होता है, चर्चाएं उस पर होनी चाहिए कि उस डेटा, जब एक बार डेटा इकट्ठा हो गया तो उसका इस्तेमाल कैसे होता है. लेकिन डेटा इकट्ठा करने में मुझे लगता है इसकी आवश्यकता है, अत्यंत आवश्यकता है. यू नीड टू कलेक्ट दिस डेटा, एज आई सेड, फॉर डिफरेंट सेक्टर्स. जैसे मैंने वेदर का एग्जाम्पल दिया, वैसे ही कास्ट के डेटा की जरूरत है. डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करने की जरूरत है हमारे देश में. एंड आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. आई ट्रेवल टू त्रिपुरा एंड आई वॉज इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी त्रिपुरा. त्रिपुरा के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रोटी नहीं मिलती है. 10 साल से वहां पे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको सिर्फ सुबह और शाम चावल मिलता है खाने को. एंड व्हेन आई वाज देयर फॉर 3 days, तो मेरे जो जानकार स्टूडेंट थे, पीएचडी के स्टूडेंट, मैं उनको इनवाइट करता था कि मेरे साथ आके डिनर कर लें, बिकॉज दे वांटेड टू ईट चपातीज. उनको रोटी चाहिए था. वी डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज द डाइवर्सिटी. ये डाइवर्सिटी है, फूड की डाइवर्सिटी है, कास्ट की डाइवर्सिटी है, एजुकेशनल अटेनमेंट की डाइवर्सिटी है. सो डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करने की जरूरत है. डाइवर्सिटी के जो विषमताएं हैं, अलग अलग तरह की जो विषमताएं हैं, उसको एड्रेस करने की जरूरत है. और अगर इन चीजों को एड्रेस अगर हम कैसे करेंगे, उसके लिए पहले ये जरूरी है कि हम आंकड़े इकट्ठा करें. चाहे किसी भी, अगर हम चुनाव से संबंधित अगर कहें और कहें एक पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया,
और वो पार्टी जीत गई। अगर इलेक्शन कमीशन इस तरह के रिजल्ट्स दे तो हम में से कोई भरोसा नहीं करेगा और हम सब सवाल पूछेंगे। हम कहेंगे बट ये तो बताइए पार्टी को वोट कितना मिला। आंकड़ों की जरूरत होती है, तब जाकर के इलेक्शन कमीशन वो आपको बताता है कि नहीं एक पार्टी को 40% वोट मिले, दूसरी पार्टी को 30% वोट मिले, या किसी एक कंस्टिट्यूएंसी में एक उम्मीदवार को 50% वोट मिला, दूसरे उम्मीदवार को 40% वोट मिला, एंड देन वी आर सेटिस्फाइड, द कैंडिडेट्स गेट सेटिस्फाइड आंकड़ों के जरिए कि विनर कौन है और रनर कौन है। तो आंकड़ों की तो हर क्षेत्र में जरूरत है। आप चुनाव लड़ते हैं, कई लोग ऐसे हैं यहाँ पे विधायक हैं, चुनाव लड़के आए हैं, मान लीजिए अगले चुनाव में सिर्फ आंकड़ों के जरिए जीत हार का फैसला ना हो और ये कह दिया जाए कि बस एक ऑब्जर्व कर लिया जाएगा, हम देख लेंगे कि अगर आपने चुनाव अच्छा लड़ा, अगर लग रहा है लोगों का आपके ऊपर समर्थन है तो आप विजयी घोषित किए जाएंगे, और अगर आपका समर्थन हमें कम दिखाई पड़ता है नेकेड आई से, बस यूं ही देख रहे हैं, तो आप विजयी घोषित नहीं किए जाएंगे। तब आप क्या कहते नहीं, हमें आंकड़े चाहिए, हमें ये बताइए कि हमें वोट कितना मिला। एक एक आंकड़े, एक एक वोट की बड़ी केयरफुली गिनती होती है। तो जब वोट की गिनती होती है, जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है उसको हम आंकड़ों के नज़रिए से देखते हैं, हम अपनी सैलरीज अपने आंकड़ों से नज़रिए से देखते हैं। कोई ये नहीं कहता, अगर कोई कहे कि आपको बहुत अच्छी तनख्वाह देंगे, वी डोंट गेट सेटिस्फाइड, वी नीड नंबर्स। तनख्वाह कितनी मिलेगी, उम्र कितनी है। तो समाज के विभिन्न विषमताओं को या विभिन्नताओं को नापने के लिए आंकड़ा ही एकमात्र सहारा है। अगर वो आंकड़े नहीं हैं, इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री, इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज कंट्री, वी हैव अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो अगर इसको अगर समझना है, समाज की विषमताओं को समझना है और उस विषमताओं को एड्रेस करने के लिए कोशिश करना है, आंकड़ों की आवश्यकता है। और आंकड़े कैसा इकट्ठे होंगे, जैसे होता आया है पिछले 50, 60, 70 साल से सेंसस के द्वारा। तो मुझे लगता है कास्ट सेंसस की आवश्यकता है, आंकड़ों की आवश्यकता है, और उन आंकड़ों पर सरकारी नीतियों को बनाने की जरूरत है। धन्यवाद। Thank you very much, sir. Thank you very much for underlining the importance of data, but showing the concern that how that data would be used in future is really important. My friends, I'm sure many of you would be having many questions in your mind. And as you remember, as you know, that this platform is for you to interact with all the dignitaries on the dais. So let me once again remind you that if you're willing to ask questions to all these dignitaries, those who are present here in this session with us, please reach out to the podiums, submit your questions right away so that you will get an opportunity to ask the questions in this session. Thank you. And now it's time when I'm going to invite the eminent speaker of this session, the Honorable Member of Parliament of Rajya Sabha, Professor Manoj Kumar Jha. But before I invite him to address the gathering, I request my technical team to kindly relay a small film. Professor Manoj Kumar Jha, an academic and esteemed politician hailing from Bihar, currently serves as a member of the parliament in the Rajya Sabha. Holding the position of national spokesperson for the Rashtriya Janata Dal, Professor Jha is also a distinguished professor at the University of Delhi. With a PhD and a master's degree from Delhi University's Department of Social Work, he has been a professor at the same department and served as its head from 2014 to 2017. His academic career includes being a lecturer at the Department of Social Work, Jamia Millia Islamia from 1994 to 2002, and a visiting faculty at the School of Planning and Architecture, Delhi. Professor Jha's research interests span political economy, governance, social action and movements, majority-minority relations, and peace and conflict studies. Apart from his academic pursuits, Professor Manoj Kumar Jha is a key strategist and a policy maker for the Rashtriya Janata Dal, contributing significantly to the party's direction. Additionally, he shares his insights on socio-political affairs through columns in renowned newspapers. Professor Jha's literary contributions include authored works like Riots as Rituals and In Opposition to Silence. Let's extend a warm welcome to Professor Manoj Kumar Jha.
It is indeed our honor and privilege to have you here today, sir. Please give a big round of applause, my friends, to Professor Manoj Kumar Jha ji. Thank you, Shukriya. Thank you, Rahul ji, all the deans, Vice Chancellor, Girish ji, Ajay ji, Sanjay bhai, all the students and member of legislative assemblies. Many of you I can identify, I can see comrades in arms. Thank you very much once again. जब मैं पार्लियामेंट में आया 2018, two people who taught me early, both of them were from BJP, Venkaiah Naidu ji and Arun Jaitley ji. उन्होंने कहा कि तुम वेल में मत आया करो, you do your parliamentary work. और उनकी बात को मैंने सर माथे पे लिया and I followed them, except in the last session जहां मैं वेल में पहुंच गया और सस्पेंड हो गया. Anyway, मेरे तमाम साथियों को मैंने सुना. I'll keep both the languages together, Hindi and English, because I'm told there is a significant part of the audience which follows English and there is a significant part of the audience which will follow Hindi. तो मैं थोड़ा जो मेल जोल का स्वभाव है हिंदुस्तान का, उसी हिसाब से अपनी बात रखूंगा. मैं एक छोटी कहानी से शुरुआत करना चाहता हूं. एक राजा था, देयर वाज अ किंग. अक्सर कहानियों में राजा ही हुआ करते थे, कुम्हार लोहार वगैरह की कहानियां नहीं होती थी. तो उस राजा के एक बेटा था. राजा को अक्सर बेटा ही होता था, बेटियों का जिक्र नहीं होता है. तो राजा का एक बेटा था और राजा की पत्नी का स्वर्गवास हो गया. द वाइफ डाइड. नाउ द किंग nurtured his child, telling 3 things every night. 3 बातें वो हमेशा कहते थे अपने राजकुमार से, अपने बेटे से, कि बेटा, सुंदर राजकुमारी नाम की कोई चीज नहीं होती. दूसरा, बेटा, टापू नाम की कोई चीज नहीं होती. तीसरा, बेटा, भगवान नाम का कोई अस्तित्व नहीं है. There is no God, there is no island, there is nowhere beautiful princess. बेटा बड़ा होता गया, 15-16 साल की उम्र में आया. एक दिन घर से बाहर निकला और एक जमीन के टुकड़े के पास पहुंचा जिसके चारों तरफ पानी था, water around and a patch of soil. He stood there, saw beautiful creatures, saw somebody coming from the other direction. उसने पूछा कि मैं कहाँ हूँ? तो बोला तुम टापू पे हो. तो वो कौन है? तो राजकुमारियां हैं, सुंदर सुंदर राजकुमारियां. तो तुम इसका मतलब भगवान हो गए? बोला यस, आई एम द गॉड. बेटा बहुत डिस्टर्ब हुआ, केम बैक होम, फॉट विद द फादर. बोला कि ऐसे ऐसे आपने मुझसे झूठ बोला इतने वर्षों तक. बोला वो असल में भगवान नहीं है, टुच्चा सा जादूगर है, स्ट्रीट मैजिशियन. बेटा फिर डिस्टर्ब हुआ. द किंग्स सन, आफ्टर मेनी मंथ्स ही रीच्ड एंड टोल्ड हिम, लुक, दिस इज नॉट एन आइलैंड. ये टापू नहीं है, वो राजकुमारियां नहीं है, और तुम भगवान तो कतई नहीं हो. बोला हाँ बिल्कुल, मैं जादूगर हूं, लेकिन तुमको जादू में रहने की आदत है. व्हाट आई विश टू कन्वे, हमारी सियासी सामाजिक जिंदगी में हम एक जादूगर ढूंढते हैं और उसके मत्थे अपनी परेशानियां रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं. हमको आपको जादूगर नहीं चाहिए, हमें वो जादू अपने अंदर चाहिए ताकि हम समाज की हकीकत को समझ पाए. मैं अजय भाई, संजय जी, मुझे एक चीज इंटरेस्टिंग लगी. 5 स्टूडेंट्स जिन्होंने इस विषय पे अपनी बात रखी, उसमें से 3 ने जातिगत जनगणना को खारिज किया और 2 ने जातिगत जनगणना के पक्ष में. मैं आपके समक्ष आंकड़े भी नहीं कहूंगा, मेरे बाकी साथी कह चुके हैं. आई जस्ट एक्सप्लेन सर्टेन थिंग्स. मैं अपने विद्यालय का सबसे होनहार छात्र नहीं था. I was not the most intelligent boy of my school. लेकिन मेरे माता पिता यूनिवर्सिटी के शिक्षक थे. जब जब मैं गिरता था वो संभाल लेते थे. मैंने अपने घर में बचपने में इतनी किताबें देखी जितने खिलौने नहीं देखे. किताबों से मेरा राब्ता बहुत कम उम्र में शुरू हो गया. मैंने 7वीं में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की सारी किताबें पढ़ ली थी.
लेकिन मेरे साथ मेरे दलित दोस्त थे, फर्स्ट जनरेशन लर्नर थे। उनमें से एक तो मुझे स्मरण है, वो मैथमेटिक्स में जादूगर था। वो आज चाय की टपड़ी खोल के बैठा हुआ है। और मैं यूनिवर्सिटी का शिक्षक हूं। मैं अपनी मेरिट से नहीं हूं, मैं संसाधनों की उपलब्धता की वजह से हूं। तो मेरिट और रिसोर्स के इस रिश्ते को समझना होगा। संसाधन की बहुलता आपको असफलता से निकाल लेती है, संसाधनों की अनुपलब्धता आपको असफल बना के रखती है। तो ये सफलता, असफलता, मेरिट, ये सारी ऐसी धारणाएं हैं जिनको हमें बहुत गौर से समझना होगा। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, जातिगत जनगणना की बात आज पहली बार नहीं शुरू हुई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिख रहे थे, लिख क्या रहे थे, वो भाषण उनको देना था, वो दे नहीं पाए, आयोजकों ने मना कर दिया, तो वो किताब की शक्ल में आ गई। वो किताब की शक्ल में आकर के ये बताने की कोशिश करती है कि ये क्यों आवश्यक है। मैं आपको एक उदाहरण दूं। कई मेरे साथी कहते हैं, मेरे अपने करीबी मित्र अलग अलग दलों के कहते हैं, इससे जातिवाद बढ़ेगा, इससे जातिवाद बढ़ेगा। मैंने पार्लियामेंट में एक सवाल किया था कि सीवर और मैनहोल की सफाई करने वाले कौन सी जाति के लोग हैं। 99% लोग, 98.99 एक जाति समुदाय से आते हैं। क्या ये जातिवाद नहीं है? इस पेशे में कोई तब्दीलियां क्यों नहीं हो रही है? यह जातिवाद हमें सुखद क्यों लगता है? इससे हम कंफर्टेबल क्यों हैं? असल में इस देश में हमें यह समझना होगा, हमें हिरार्की पसंद है, हमें सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर पसंद है, हमें 3 तल्ले 4 तल्ले का मकान पसंद है, और सबसे ऊपर के तल्ले पर बैठ के हम नीचे के तल्लों को देखते हैं। ये हमारे कास्ट की हिरार्की है। और जहां हिरार्की हमें नहीं दिखती है, सीढ़ीनुमा संरचना नहीं दिखती है, हम उसको कहते हैं कि ना, मजा नहीं आया, ऊपर नीचे नहीं हुआ। ये हमारे मानस में है, इसलिए हम मूर्तियां गढ़ते हैं और मूर्तियों का विसर्जन भी करते हैं। बिहार में जब कास्ट सेंसस हुआ, मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा कि दिल्ली में एक गोष्ठी हो रही थी, उसके बाद तो कई जातियों को, जिनमें से मेरी भी एक जाति है, वो ये कह रहे हैं कि हम इतने कम नहीं हो सकते, हमें कम कर दिया गया है। असल में क्या है ना कि हम अपने जैसे लोगों से मिलते हैं, विद्यालय में अपने जैसे लोग, विश्वविद्यालय में अपने जैसे लोग, न्यायालय में अपने जैसे लोग, मीडिया में अपने जैसे लोग, और जहां चले जाइए बाजार में अपने जैसे लोग। अपने जैसे लोगों को देखते देखते हमने दूसरों को देखने की कला खत्म कर दी। क्योंकि अपने ज्यादा दिखे तो हमने माना कि हम ज्यादा हैं। वो हाशिए पे थे, वो दिखे नहीं, न बाजार में, न रोजगार में, न विद्यालय में, न न्यायालय में। तो गलती किसकी? समाज की ना। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं कहूंगा, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टी ने रूल किया है एक या दूसरे फॉर्म में, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको एजेंडा नहीं लिया जो बाबा साहब कह गए थे कि जब तक तुम्हारी जमहूरियत, योर डेमोक्रेसी इज नॉट ए सोशल डेमोक्रेसी, योर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज ए शैम, इट इज वैल्यूलेस, इट इज लाइफलेस। हालात क्या है? अभी हाल में मेरे द्रविड़ मुनित्र करगम के एक मित्र ने पेरियार को कोट किया पार्लियामेंट में, हंगामा बरप गया भाई। उन्होंने क्या किया था? सिर्फ इतना कहा था कि हर समुदाय, हर जाति को अपनी नियति तय करने का अधिकार है। उसको कश्मीर के राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन से जोड़ करके हंगामा बरप गया। पेरियार को कितना लोग हम लोग जानते हैं इस हिस्से में? सच्ची रामायण उन्होंने लिखी है। यह देश महासागर के चरित्र का है। इस देश को महासागर रहना चाहिए, इस देश को तालाब नहीं बनना चाहिए, क्योंकि तालाब बनेगा तो आप जातिगत जनगणना के खिलाफ खड़े होंगे। तो तीसरी चीज, मैं एक प्रिविलेज की बात करता हूं, मेरे एक साथी ने किया। हम सब अक्सर अपने प्रिविलेज को एग्जामिन नहीं करते हैं। वाई आर वी हियर? एंड आई एम स्पेसिफिकली पुटिंग दिस क्वेश्चन कि ये जो इंटरसेक्शनैलिटी है
of graded inequality, poverty, income inequality and gender. हमारे बीच में हमारी महिला साथी बैठी हुई है। इनमें से जो एमएलए है, इनका स्ट्रगल हमारे स्ट्रगल से ज्यादा है। इनमें से जो दलित हैं, उनका स्ट्रगल और डबल है। इनमें से जो ईबीसी हैं, उनका स्ट्रगल और ज्यादा है। तो जिंदगियां एक समान नहीं होती है, जिंदगियां अलग अलग हैं। और बड़ी बात यह कहने से कि देश को ऊंचाई पे ले जाएंगे, अरे देश है क्या? ऊंचाई पे किसको ले जाएंगे? 5 लोगों को वो ऊंचाई पे जाए और असमानता के महासागर में बाकी लोग गोते लगाते रहे। एक और चीज अक्सर लोग बहुत शायराना अंदाज में बोलते हैं, पॉवर्टी हैज नो कास्ट। गरीबी की कोई जाति नहीं होती। मैं एक आग्रह आप तमाम स्टूडेंट से करूंगा, ऑल ऑफ यू हैव स्पोकन फॉर और अगेंस्ट, ऑल ऑफ यू हु हैव क्लैप्ड, do an exercise yourself. Why it is so? Lower down the ladder of caste hierarchy, poverty increases. Up or down the caste hierarchy, poverty decreases. अगर हम जाति संरचना में नीचे जाते हैं तो गरीबी बढ़ती है, और अगर संरचना में ऊपर जाते हैं तो गरीबी घटती है। ये तो समझना होगा ना। इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं है। अभी हमारे राहुल जी कह रहे थे, अक्सर क्या होता है ना कि जो प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड के हैं, मैंने अपना उदाहरण दिया था, हमारे स्ट्रगल कम हैं, हमारे स्ट्रगल कम हैं। हमने बहुसंख्यक संस्थाओं पे कब्जा जमा के रखा है। मैं कब्जा कहता हूं, कब्जा जमा के रखा है। तो दूसरा कोई छोटी आवाज में भी अपना डिमांड करता है तो हम कहते हैं समाज अस्थिर हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि जब अश्वेत आंदोलन अमेरिका में चल रहा था तो लोगों ने कहा था कि समाज अस्थिर हो जाएगा, समाज बेहतर हुआ। जब मंडल कमीशन 1990 में आया, मैं छात्र था, तब भी लोगों ने कहा कि अरे ये टेक्टोनिक शिफ्ट होने से बहुत तबाही मचेगी। आज ये स्पीकर साहब विथ योर परमिशन, ये स्पीकर साहब हैं तो परमिशन लेकर के राज्यसभा ने एक अच्छी आदत डाल दी है। मैं 52 मिनट 55 मिनट की क्लास होती है यूनिवर्सिटी में, राज्यसभा में छोटा दल है मेरा तो 5-6 मिनट मिलता है, तो 5-6 मिनट में बोलने की आदत पड़ गई। आज थोड़ा धनी हो गया, 12-15 मिनट था। तो एनीवे मैं ये नहीं ओके, तो ये मैं कहना चाह रहा था, तारतम्य बिगड़ गया, मैं कह क्या रहा था। नहीं सर मेरी वकालत के लिए धन्यवाद। बैठ जाइए सर, मेरी वकालत के लिए धन्यवाद। मैं सिर्फ इसी बात पे कह करके खत्म करूंगा कि इतिहास में से क्षण होते हैं। मंडल का उदाहरण आपको दिया। आज आप देख लीजिए, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, कोई पॉलिटिकल पार्टी 90 के पहली वाली पार्टी नहीं रही। सारी पार्टियां बदल गई। अक्सर लोग कहते थे कि फलाना क्षेत्र ये उनका क्षेत्र है, वही उनका उस जाति का क्षेत्र इसलिए था कि बाकी उस प्रक्रिया से बाहर थे। आज वो उस प्रक्रिया में अंदर आए तो वो अपना शेयर मांगेंगे। ये डेमोक्रेसी का चरित्र है, इसको स्वीकार करना होगा। इसके खिलाफ बेड़ाबंद गोलबंदी से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। और एक अभी हाल में परसों एक किताब के विमोचन में मैं था, अनइक्वल नाम की एक किताब है, स्वाति नारायण की लिखी हुई। उस किताब को आप लोगों को, पर्टिकुलरली मैं स्टूडेंट से और अपने फेलो आमदार खासदार लोगों से कहूंगा, उस किताब को पढ़िए। बांग्लादेश हमारी नजर में बड़ा कमजोर राष्ट्र दिखता है, नेपाल उससे भी कमजोर दिखता है, लेकिन सामाजिक सूचकांक पे हम बहुत पीछे हो गए। बांग्लादेश और नेपाल, ये दोनों देश हमसे बहुत आगे निकल गए। तो इसकी तो पड़ताल करनी होगी। जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम समावेशी विकास का चरित्र नहीं ले पाए। और आखिर में कितनी बातें थी, गड्ढमड हो रही हैं। आखिर में मैं एक सामाजिक सहिष्णुता भी बेहद आवश्यक है। मैं एक उदाहरण देके कहता हूं। बापू आजादी का जब जश्न मन रहा था तो नोआखोली में थे, दंगे रोक रहे थे। जब वहां से वापस आए
उन्होंने अपना भजन बदल दिया। सुबह का भजन पहले हुआ करता था भजमन प्यारे सीताराम, उन्होंने आके बदल दिया भजमन प्यारे कृष्ण करीम, भजमन प्यारे राम रहीम। आज हमारे बीच में ऐसा कोई नहीं है जो ये भजन गुनगुना सके। हमने बड़ी ऊंची दीवारें खड़ी कर दी हैं और ये दीवारें, माफ कीजिएगा, ये दीवारें चुभेंगी, ताली बजाने वालों को भी चुभेंगी, गाली सुनने वालों को भी चुभेंगी। और आखिर में हमारे स्पीकर साहब ने अपनी बातचीत में कहा था, तो मैं एक कविता से खत्म करूंगा। बड़ी प्यारी कविता है और उसके एक हिस्से को ही सुनाऊंगा। एक मिनट, टेक्नोलॉजी धोखा दे जाती है। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है कि एक हिस्से के फट जाने बाकी हिस्से उसी तरह साबुत रहे और नदियां, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखे। अनमने रहें यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं, न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन की 7 परतों के नीचे गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, वह अंधा है। जो शासन चल रहा है बंदूक की नली से, हत्यारों का धंधा है। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ एक क्षण भी नहीं रहना है। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। मैं यहीं खत्म करूंगा। एक बार अपने दायरे से निकल करके हम सब सोचें कि हमारी आज तक के फलसफे में 75 से 80% की आबादी का जिक्र सिर्फ गाहे बगाहे क्यों होता है। और आखिर में अगर काबा का रुख भी जानिबे मैखाना हो जाए, मेरी सजदा लर्जी से मस्ताना हो जाए। जय हिंद। थैंक यू MIT for calling me. Thank you all for patiently listening to me. Jai Hind. Thank you, sir. Thank you very much, Professor Manoj Kumar Jhaji. Thank you very much for those beautiful views and articulating your thought in such a beautiful manner that we all comprehended what exactly your thoughts were. My friends, before we go to the questions and answers session, I would like to move to an important tradition of this platform. I request all the dignitaries to please come on the mic for answering the questions. I hope my team would reach with the questions. Please, hurry up, please. Meanwhile, I would like to request my technical team to relay the resolution for this session. I request the team to display the resolution. The 13th Bharatiya Chhatra Sansad takes upon ourselves for a caste-free society and casteism-free politics that respects our rich diversity and emphasizes the importance of shaping policies for the progressive emergence of New Bharat. I request all the student leaders and all the dignitaries on the dais to please take out their mobile phones, scan this QR code, and please vote for the resolution. Everyone, please take out your mobile phones, scan the QR code, and please vote for the resolution. 13वीं भारतीय छात्र संसद एक ऐसे जाति व्यवस्था मुक्त समाज और जातिवाद मुक्त राजनीति का संकल्प करती है जो हमारी समृद्ध विविधता का सम्मान करती हो और नए भारत के प्रगतिशील निर्माण के लिए नीतियों को आकार देने के लिए कटिबद्ध हो। A few seconds left, my friends. I request all of you to kindly vote as quickly as possible, and your time will be over in next 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. I request my team to kindly show us the results of this resolution. Oh, this resolution passes with 90% majority. A big round of applause, my friends. Thank you very much, all the members, for voting in such large number.
thank you very much. And now it's time that I come towards the dignitaries for the questions and answers round. I request all the students and the dignitaries also, chota sawal, chota jawab, so that I'll be able to take more questions. Please refrain from long questions and long answers. Thank you. The first question is coming. The dignitaries would be able to see this person on the screen in front of them. Akash Ambedkar is asking question from right-hand side podium. Akash, please go straight to your question. What are the potential economic implications of using caste-based data to identify socio-economic inequalities? Okay. Jha Sahab. Thank you, Akash, for this question. Frankly speaking, when on 2nd of October, Bihar government released the caste data, that was actually numbers. But on 9th of November, the numbers were backed by the socio-economic reality. One of the panelists from students said 75%. That includes 10% of EWS also, not 75% as such. So that shall have repercussions in government schemes, in employment policies, in school college admission, in technical institutions, as well as even in contractual jobs, which we are proposing to have very soon. Thank you for your question. Right. Thank you very much. The next question is coming, I guess, for Jha sir. I'm sorry, the next question is coming for Dr. Ajoy Kumarji, and it is coming all the way from Kolhapur. Prajwal, are you there? Please go ahead, Prajwal. Straight to your question, please. Caste system has been a unique feature of Indian society. How will the caste census in India resolve the age-old crisis of caste atrocities and marginalization? Okay, so the question is for Dr. Ajoy Kumarji. Yeah, okay. Yeah. Look, the biggest criteria is economic freedom. And unless you make sure that the poorest sections, like Manojji said, right now we have political freedom, equality. We don't have social and economical. Unless you are able to, you tell me a educated IAS officer who comes from a scheduled tribe community, it is very difficult for us, we might ostracize him, we might trouble him at the back, but you cannot attack him. Similarly, a doctor. So unless you are able to bring economic equality, right. And last, if 98% of the scavenging comes from one community, then it is important to make sure that the scavengers become doctors and engineers and IAS officers and IPS officers. Sure. Thank you very much, sir. The next question is coming for Dr. Sanjay Kumarji, and the question is coming from Prathamesh. Prathamesh, are you there? Yes, sir. Yes, please go straight to your question. Hi, sir. My question is, how do you balance the demand for social justice as well as political implication while conducting caste-based census in India? The point I was trying to mention earlier also is that for any policy formulation, whether it is being formulated for a university or college or by a government, you need data. Data is important. What does census do? Census collects data. So when we are talking about conducting a caste census, what will happen is that, and it has already happened in the state of Bihar, you get to know the number of people belonging to different castes. You also get to know their socioeconomic diversity, differences between different castes. So any policy formulation would be based on this, and in the long run, this policy would aim for, equalizing the socioeconomic differences within different castes. So that's the whole purpose of why I would say that I think it is a need of the hour that there should be a caste census conducted in this country. Thank you, sir. Thank you very much. I think, sir, we have one more question. One has come from Twitter. The one question has come from Twitter online, and the question says, the question is open for the House. Anybody can answer. Do we really think that caste-based reservations in jobs will bring financial prosperity? I'll
answer this. I could have gone on to speak for an hour on this issue. But I'll tell you, why can't we imagine reservation for the top caste in cleaning sewers and manholes? That's it. Thank you very much for that answer. Thank you very much, dignitaries, for taking all the questions in this session. I would like to request all the dignitaries to give us a memorable photograph in this session. I request all of you to please rise in your seats, hold the brochure with you, and give us a memorable photograph. My friends, this has been really an amazing session in which we discussed one of the burning issue of our motherland, the caste-based census, and the next session is also going to witness yet another important burning issue. As we land on moon, are women safe on land? It is one of the top priorities of our country, and we are going to have some of the tall personalities to share their views in this particular session. Thank you very much, dignitaries. We are moving on with the next session. I request all the dignitaries to kindly, thank you very much for we are getting ready for the next session, the 6th session as we land on moon, are women safe on land? My friends, I would like to share an important information with all of you, and it is really critical for all of you to understand. I request my technical team to show the slide of Bharatiya Chhatra Sansad committees. My friends, let me share with you, and this information is for you. So I request your undivided attention, my friends. Please have a look on the screen. My friends, to transform the thinking pattern of youth and inspire them to actively engage in public life with a commitment to national service, Shri Rahul V. Karad, a young visionary educationist, established Bharatiya Chhatra Sansad in year 2011. Over the past 13 years, Bharatiya Chhatra Sansad has flourished into a robust institution, fostering a sense of purpose and national service among the youth. As we look to the future, it has been decided. I request for your attention, student friends, this part is really important. It is decided that the 14th edition and the subsequent all editions will be entrusted to the capable hands of the students. The very heartbeat of young youth-centric conclave. This is your enterprise, and we now ask you to own and drive Bharatiya Chhatra Sansad henceforth. We invite you to embrace this opportunity and lead and shape the legacy of Bharatiya Chhatra Sansad. To facilitate this transition, various committees will be formed, each one comprising of 10 dedicated students. I repeat, each committee will be comprising of 10 dedicated students. These committees will play all the pivotal roles in ensuring the seamless execution of the event. I request my technical team to display the committees. The committee names are Visionary Explorers, the Research Committee. Can we have? Okay, so we are getting ready for this session. I will get back to you again with all these committees, but let me assure you that your participation is going to be very, very critical in the coming times from the 14th Bharatiya Chhatra Sansad. Now, it's time that we move ahead with the next session, the 6th session of 13th Bharatiya Chhatra Sansad. We are getting ready with all the tall personalities. My friends, this session in which we are going to discuss, as we land on moon, are women safe on land? It is one of the most important issues of our land. I think this is one of the issues that needs an immediate attention. And before we start with this session, we have a very, very beautiful presentation from two students of MIT World Peace University, Ms. Tanvi Bansal and Ms. Karishma. I request both of them to kindly come on stage and present their monologue.
Ms. Tanvi Bansal and Ms. Karishma Sherlit. Do we have Ms. Tanvi Bansal and Karishma Sherlit? Thank you very much. I would now like to request the Associate Dean of School of Computer Engineering and Technology at MIT World Peace University, Dr. Vrishali Kulkarniji, to kindly propose the welcome address. A very good morning to one and all, respected dignitaries on the dais, off the dais, and all the student participants. My request to all student participants, please get seated immediately. There should not be any movement in the pandal. So as mentioned right now, we are going to have a very, very important session and equally a sensitive topic, that as we land on moon, are women safe on land? I think this is really a thought-provoking kind of session. We need to think when there are so many advancements in technology and we are going on moon, we are going, our satellite is near to sun as well, and at the same time, really, do we have women respect? Do we have women safety? Do we have encouragement for women at various organizations, at various places? So sometimes we find the answer is no, and that is really disturbing all of us. And I feel for this kind of thing, so even though there are so many kind of initiatives taken, there are policies, there are laws, but enforcement will not be helpful in this kind of things. But rather than that, what we need is, there has to be a change in mindset. And I think at MIT World Peace University, whatever this kind of initiatives we are taking, value-based education and peace for human being, they are all actually taking all of us in the right direction. We are really fortunate today that to speak on this special session, at this special session, we have eminent personalities. We have Advocate Abha Singh, who is lawyer, currently working in Bombay High Court, and social activist for women rights and gender. We also have very famous personality known as Missile Woman of India, Dr. Tessie Thomas, distinguished scientist and former Director General Aeronautical Systems, DRDO, Government of India. We also have Dr. Fauzia Khan, renowned leader of NCP and Member of Parliament from Rajya Sabha, former Minister of State, Government of Maharashtra. And we have Srimati Rupa Ganguly, noted actress, playback singer, and former Member of Parliament, Rajya Sabha. So I think these all personalities are really role model who have that courage to take this kind of whatever their careers they have done. They are really role models for all of us, and they are the right personalities who can really speak on this kind of session. So I welcome all of them. Madam, you all are welcome for this session. And now I hand it over to Gautam sir. Thank you. Thank you very much, Dr. Vrishali Kulkarniji. Thank you very much for proposing the welcome address. In this very important session of 13th Bharatiya Chhatra Sansad, session 6, as we land on moon, are women safe on land? But my friends, in the 5th session, we also remembered and paid homage on the birth anniversary of, I would say, the noble son of India, Swami Vivekananda ji. And I think in this session also, let us pay respects to Swami Vivekananda ji, the noble son of India. I request revered Professor Dr. Vishwanath Karat sir and all the dignitaries to join us as we offer flowers to this noble son of India, whose vision still drives us. Revered Professor Dr. Vishwanath Karat sir, who drives his motivation
his spirits from the thoughts of Swami Vivekananda ji, and it is indeed an apt moment where all the dignitaries and revered Professor Dr. Vishwanath Karat sir would offer the flowers and garland to the statue of Swami Vivekananda ji. A big round of applause, my friends. Such a beautiful moment. On this important day, we are paying our respects to the noble son of India, Swami Vivekananda ji. A big round of applause once again, my friends. Let's pay our respect through our applaud to the noble son of India, Swami Vivekananda ji. Such a beautiful moment. Thank you very much, all the dignitaries, for joining hands in paying our respects to the great noble son of India, Swami Vivekananda ji. My friends, we all have gathered and geared up for the sixth and important session. As we land on moon, are women safe on land? But for all of us, it is important that we understand the nuances of the Bharatiya Chhatra Sansad. The Chandrayaan-3 mission marks a historic achievement as the lunar rover Pragyan explores the moon, a testament to the collaborative efforts of numerous female scientists to make the Chandrayaan mission a success. Women in India have shattered barriers across the various fields, from politics to figures like Indira Gandhi, Pratibha Tai Patil, to science and technology with Kalpana Chawla and Tessie Thomas, and even in sports icon like P.T. Usha, P.V. Sandhu and Mary Kom. Despite these accomplishments, a crucial question unfortunately still arises: that are women safe on land? So we are going to discuss this burning issue in this sixth session of Bharatiya Chhatra Sansad. But before we begin with this session, I request Shri Rahul V. Karat sir to kindly felicitate and dignitaries for this session. First and foremost, I would like to request sir to kindly felicitate and welcome the chairman of this session, Shri Girish Gautamji, the former Speaker of Madhya Pradesh Legislative Assembly, Honorable Member of Legislative Assembly of Madhya Pradesh. Please put your hands together, my friends, and welcome with a big round of applause, Shri Girish Gautamji. Next, I would like to request sir to kindly felicitate and welcome Dr. Fauzia Khanji, the Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha, NCP, Maharashtra. I would like to request sir to kindly felicitate Dr. Tessie Thomas, the distinguished scientist and former Director General, Aeronautical Systems, Defense Research and Development Organization, DRDO, Government of India. Please put your hands together for Dr. Tessie Thomas. I now request sir to kindly felicitate Srimati Rupa Ganguly ji, Advocate Abha Singh ji, activist, women right and gender equality, practicing lawyer of Bombay High Court. Please put your hands together for Advocate Abha Singh ji. Thank you very much. And as I was sharing with you, my friends, this celebration of women's achievement is juxtaposed with the concerning rise in crime against women, highlighting the pressing need for prioritizing women's safety in personal and professional spaces. The reasons behind these challenges include, there are some of, I would say, the historical mindset
and objectification of women. In order to understand the nuances of this topic, I request my technical team to kindly relay the curtain raiser video of this session. As we land on the moon, are women safe on land? Welcome to a critical dialogue. As we land on the moon, are women safe on the land? India has seen remarkable progress by women in various fields, from space science to sports and from music to entrepreneurship. Think of Ritu Karidal, Tessie Thomas, Lata Mangeshkar, P.V. Sindhu, Saina Nehwal, Mary Kom, Kiran Mazumdar-Shaw, Kiran Bedi, Indira Gandhi, Draupadi Murmu and many more. The shining stars. But in the midst of these successes, Indian women face significant hurdles and safety is a paramount concern. The patriarchal mindset, objectification of women, and lack of awareness all contribute to this issue. According to the National Crime Records Bureau data from 2021, crimes against women increased by 64.5%. These include cruelty by spouse or relatives, assault, kidnapping and abduction, and rape. The objective of this session is to encourage a thoughtful discussion that can lead to a happier and safer society for everyone, with a particular focus on the safety of women. We will explore an analysis of crimes against women, including domestic violence, safety and security for women tourists, women's safety in trains, metros, and workplaces, educating men on women's safety, the importance of self-defense training for women. Join us in this critical conversation as we strive for a land where everyone, especially women, can walk safely and confidently. Together, let's make our land a safer place for all. Indeed, let us discuss this important issue in the 6th session of 13th Bharatiya Chhatra Sansad, and for which I would like to invite for the opening address the chairman of the session, Shri Girish Gautamji. And before I do that, I request my technical team to kindly relay a small film. Shri Girish Gautam, a 5-term member of the Madhya Pradesh Legislative Assembly, currently representing the Deotalab constituency, brings a wealth of experience to the political landscape. Holding an LLB degree, he has been actively engaged in student politics since 1972. Elected for the first time in 2003 during the 12th Madhya Pradesh Assembly elections, Shri Girish Gautam has been a steadfast presence in legislative affairs. During his tenure as a member of the Assembly, he assumed pivotal roles, serving as the chairman of the Estimates Committee, Privileges Committee, and various other committees. Notably, from February 22nd, 2021 to December 14th, 2023, he held the esteemed position of the Speaker of the Madhya Pradesh Legislative Assembly, contributing significantly to parliamentary proceedings. Beyond his political commitments, Shri Girish Gautam is actively engaged in social work, championing causes related to welfare, equality, and justice. Let us welcome Shri Girish Gautam. Please put your hands together and welcome with a round of applause, my friends, Shri Girish Gautam ji. मंच पर विराजमान हमारे इस संस्था के फाउंडर मेंबर विश्वनाथ कराड़ी जी और इस कार्यक्रम के आयोजन के मुख्य कर्ता धर्ता राहुल कराड़े जी और इसी मंच पर डायस पर बैठी हुई हमारी नारी शक्ति जो अपने काउंसिल से अलग अलग क्षेत्रों में अपने पहचान बनाई है, और मेरे सामने बैठे हुए सभी भाइयों बहनों बच्चों, जिस विषय पर चर्चा आज होगी वो चर्चा है कि हम चंद्रमा पर उतर गए, पर क्या इस धरती में महिलाएं सुरक्षित हैं? इस पर विचार होगा। स्वाभाविक है, अपना अपना पर्सनल व्यू लोग करेंगे, कुछ सहमत होंगे, कुछ असहमत होंगे। मैं तो शुरुआत करने के लिए, क्योंकि मुझे कहा गया है कि इसकी शुरुआत करनी एक भूमिका देनी है,
तो मैं 2-3 चीजों से शुरू करना चाहता हूं। हमारे भारतीय समाज में हमेशा नारी का महत्व रहा है। आप कहीं देख लीजिए, हमारे आस्थाओं में देखिए तो सीता राम है, माँ सीता है, राधे श्याम है, राधे माता है। कहीं भी आप देखिए, चाहे शक्ति के रूप में पूजिए तो शक्ति के रूप में भी, शिक्षा के रूप में भी और लक्ष्मी के रूप में भी हमारे संस्कृत के हिसाब से हमारे समाज में नारी ही पूजा की गई है। ये आखिरकार आया कहां से? बच्चियों का या हमारे एक तरह से वुमेन जो जेंडर है, इसको एक सामाजिक तौर पर दबाव में लेने का काम शुरू कहां से हुआ? एक समाज की संरचना हुई होगी। ऐसा करके तमाम जब इस देश को गुलाम बनाया गया, देश गुलामी के जंजीरों में जकड़ा गया, तमाम सारी लोग बाहर से आए और कितने तरह के आक्रमण सबसे ज्यादा कहीं हुआ है। इतिहास के पन्नों पर उठा देख लो तो सबसे ज्यादा हमला कहीं हुआ तो हमारे भारत के भीतर ही हुआ। तरह तरह के लोग आए, अपनी संस्कृति लेकर आए, अपनी संस्कार लेकर के आए, अपनी परंपरा लेकर के आए। हम सनातनी, हम सनातन धर्म को मानने वाले अपने संस्कार को बचाने का प्रयास करते रहे और इसी कारण से वो जो भेदभाव आया उसी कारण से आया। हमने कभी भी सुरक्षात्मक तौर पर यह विचार नहीं किया कि हमको अग्रसर होकर के आगे करना है। कानून हमने बनाया। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। मंच में बैठी हुई हमारी नारी शक्ति बैठी है, यहां भी बैठे हुए हैं। आखिरकार हमारे यहां बच्चियों के जो बाल विवाह होते थे वो हमेशा होते रहे। हमने कानून भी बनाया, 1929 में कानून बना, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 आज भी लागू है। पर क्या उसमें, उस कानून के भीतर से हम उसको रोक पाए? क्या हम नहीं रोक पाए, क्योंकि समाज ने उस तरह से विचार नहीं किया जिसके आधार पर हम उसको रोक सकते थे। हम नहीं रोक पाए। पर आज जब दूसरी चीजें हुई, हमारा समाज शिक्षित हुआ, हमारी बच्चियों को शिक्षित करने का अवसर मिला, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने को मिला, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली, तो आज अपने आप उस कानून की जरूरत, कोई कानून जानता ही नहीं है, कानून नहीं जानता। पर हमने बहुत सारी हद तक उसको रोकने का प्रयास किया है, रोक लिया है। दूसरा कारण यह था कि हमारी बच्चियों का भविष्य, क्योंकि पितृसत्तात्मक सत्ता समाज था, तो उनके भविष्य को, उनको फ्यूचर को लेकर के इस तरह की बातें हुआ करती थी। पर उसको भी हमने धीरे धीरे करके, जैसे हमने शिक्षा की तरफ बढ़ाने का अवसर दिया, तो आज तो हम फक्र के साथ कह सकते हैं, और ये ईमानदारी से मैं आपसे कह रहा हूं, आज जब ओलंपिक में हमारी बेटियां मेडल लेकर के आती हैं तो हमें गौरव का क्षण प्राप्त होता है, इस देश को गर्व करने का अवसर प्राप्त होता है। हमने उनको अवसर नहीं दिया, पर जो कुछ छोटा मोटा अवसर निकला, उसी अवसर को उन्होंने एक अवसर मानते हुए और उसको इस तरह से परिणाम की तरफ ले जाने का प्रयास किया है। पहले एक चीज हुआ करती थी, एक महात्मा जी अपने प्रवचन में कहा करते थे, मैं उसको यहां बता देना चाहता हूं, और उसको अन्यथा नहीं लेंगे, कोई अन्यथा नहीं लेने की आवश्यकता है। पहले हमारी बेटियों की शादी होती थी तो बेटियों की शादी के बारे में बेटियों से नहीं पूछा जाता था, और आज बेटियां नहीं पूछती, किसी से नहीं पूछती। तो करना क्या? वो परतंत्रता थी, परतंत्रता थी। तो 3 चीजों में बांटना, परतंत्रता, स्वच्छंदता और स्वतंत्रता। यदि कोई गाड़ी है, अब उसमें ब्रेक लगा हुआ है तो आगे बढ़ेगी नहीं, आगे जाएगी नहीं। अब ब्रेक यदि निकाल लोगे, ब्रेक यदि निकल गया उसका, तो हालत क्या होगी? गाड़ी आप समझ लो कहां जाने वाली है। इसीलिए ब्रेक भी लगना, समाज के संस्कार के, हमारी संस्कृति के, हमारी परंपरा के ब्रेक होना चाहिए, और उसकी स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। और हम सबको एक मानसिकता को चेंज करने की आवश्यकता है। हमारे जो संस्कार है वो ठीक कहते हैं। हम कई बार करते हैं, हमारे मोदी जी जब कहते हैं कि हम बच्चियों से पूछते हैं कि 10 बजे रात क्यों आई है, हम कभी अपने लड़के से पूछते हैं क्या कि तुम 10 बजे रात कहां तक थे, क्यों आए? यह जो एक भाव है, इसको बदलने की आवश्यकता है।
इसको चेंज करने की आवश्यकता है। और ये चेंज कौन करेगा? चेंज यही नौजवान करेगा, युवा करेगा, क्योंकि वही किसी भी समाज के परिवर्तन का यदि कोई केंद्र बिंदु हो सकता है तो युवा ही हो सकता है, वही कर सकता है इसको। और मुझे उम्मीद है कि इस दिशा में इसमें बहुत सारी चर्चाएं होंगी। अब वो अलग अलग विषय होंगे, राजनीतिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, प्रशासनिक हो सकते हैं, तमाम शासन के स्तर के हो सकते हैं, नियम कानून के हो सकते हैं, संविधान के स्तर के हो सकते हैं। उन सारे स्तरों पर ये हो सकता है। पर मैं ऐसा समझता हूं कि समाज ने एक बात को तय कर लिया तो हम निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं, जो ये सब्जेक्ट है, कि हमारी भारत की धरती पर हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं सुरक्षित रह सकेंगी। हम ये कह सकते हैं, इस दिशा में चर्चा होगी। और इस चर्चा की शुरुआत के लिए मैं आग्रह करता हूं, इसको शुरू किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, Shri Girish Gautam ji. Thank you very much for setting the tone for this session. And now it is time in this session that we confer upon the Adarsh Yuva Vidhayak Samman, and for which I would like to request the dignitaries to kindly come forward for conferring the Adarsh Yuva Vidhayak Samman. Adarsh Yuva Vidhayak Samman, the Ideal Youth MLA honor for the best outstanding performance in development work and promotion of parliamentary democracy at the hands of Honorable Chairman of the session and other dignitaries, being conferred on Dr. Surbhi, the Honorable Member of Legislative Assembly of Uttar Pradesh. जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय विश्वनाथ करात जी को, राहुल करात जी को। मैं अपनी पार्टी प्रेसिडेंट को धन्यवाद देना चाहती हूँ, और इस देश की सबसे बड़ी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिस प्रकार राहुल करात जी एक नए प्रयास कर रहे हैं सभी युवाओं को आगे लाने के लिए, उसी प्रकार विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश ने भी बहुत सारे नए प्रयास किए हैं हम जैसे युवाओं को आगे लाने के लिए। आज के दिन जब हम हजारों युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाते हैं, उस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन आदर्श युवा विधायक का पुरस्कार पाके मेरा मन अभिभूत है। और ये पुरस्कार मैं अपनी विधानसभा कायमगंज, जो द्रौपदी की नगरी है, और वहाँ के लोगों को समर्पित करना चाहती हूँ, क्योंकि आज शायद वो नहीं होते, उनका प्यार नहीं होता, तो आज मैं इस मंच पर खड़ी नहीं होती आपके सामने। हमारे देश के सबसे मजबूत स्तंभ युवा पीढ़ी, और खास तौर से महिला युवा पीढ़ी को इस मंच से केवल यह संदेश देना चाहती हूं कि हौसले बुलंद कर राह पर चलते रहे, मंजिलें अपने आप बन जाएंगी। बढ़कर आगे तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद ब खुद बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। Thank you very much, Dr. Surbhi. Thank you very much. And we have now the presence of two more tall personalities on stage. I request Shri Rahul V. Karat sir to kindly felicitate and welcome them. I would request sir to kindly felicitate the noted actress, playback singer and former MP of Rajya Sabha, Madam Rupa Ganguly ji. Please put your hands together and welcome with a big round of applause, my friends, Madam Rupa Ganguly ji, the noted actress, playback singer and former MP of Rajya Sabha. I also request sir to kindly felicitate and welcome Honorable Member of Parliament of Rajya Sabha, Dr. Fauzia Khan ji. Honorable Member of Parliament of Rajya Sabha from NCP Maharashtra, please put your hands together and welcome
Dr. Fawzia Khan. Thank you very much. And now, in this session, I would say very important session in which we are going to deliberate the issue, as we land on moon, are women safe on land? It is time that I invite the student speakers from all parts of country to express their thoughts. First, I would like to invite on stage Tarmika, all the way from Haryana. Please put your hands together and welcome Tarmika. हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुल वधू है तुम्हें पुकार रही, दुर्योधन जो व्यवहार किया ये तुम सबको क्या लगा सही? मेरा केश पकड़ कर लाया है करता दुशासन दुर्व्यवहार, आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार? मैंने तो दाव नहीं खेला चौसर की शाही क्रीड़ा में, है दोष नहीं जब कहीं मेरा तो क्यों मैं ऐसी पीड़ा में? Good morning to one and all present here. This is Tarmika from Haryana, and today I stand here to present my views on as we land on the moon, are women safe on land? But before that, I'd like to congratulate each and everyone present here. Congratulations, India. Congratulations to me, to you, to the entire Bharatiya Chhatra Sansad. Yes, we have finally stepped on the moon. But have you ever thought about the moon in your homes who is waiting to shine? Have you ever thought about the moon who fears from rising, thinking that there'll be a black spot forever inscribed on them and they'll never be able to shine again? Dear India, the day the women of this country will forget to carry a pepper spray and not regret it, the day we won't need pink and blue auto services in India, and the day my mother will stop telling me to wear a dupatta when I go out, I'll believe that we have actually landed on the moon. The girls in our nation are worshipped during the Navratri period, aren't they? But such is the tragic irony of fate that this beautiful creation of God is one of the gravest concerns facing humanity. The day 31.8% of our women will stop facing assault and cruelty by their own husbands in their own homes, I'll believe we're on the right path to take a second step on the moon. It left my heart in pieces when my friend told me that she was assaulted and harassed at her own workplace, and she did not know what to do about it. And that is when I question you, ladies and gentlemen, what is the cost of women's safety in our country? Is it a cup of coffee? Is it a really nice high-end lipstick, or is it a lifetime of regret? India today reported a 4% rise in crimes against women. And that is when I say that we need more of those Rohtak sisters and Usha Chavan in our country. When the citizens of this country will stop thinking that rape is sometimes right and sometimes wrong, and start thinking that rape is always wrong. When girls like Sakshi Malik won't have to quit wrestling and Bajrang Punia won't have to keep his Padma Shri on the footpath, then, my dear India, our moon will shine. It is the need of the hour that we understand that it is not our makeup or our clothes, but it is the mentality and perception people carry with them throughout. And with this, I'd like to conclude by saying, हाँ मैं ही वो निर्भया, हाँ मैं ही वो 2 साल की बच्ची हूँ जो चीख चीख कर कहती है, हाँ छोड़ दो मुझे मैं उम्र से कच्ची हूँ. हाँ हुआ था शोषण मेरा भी, पर मैं खुद को मौत के घाट नहीं सुलाऊंगी कि मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ. अब मैं लाज बचाने श्री कृष्ण नहीं बुलाऊंगी, नहीं बुलाऊंगी, नहीं बुलाऊंगी. जय हिंद, जय भारत. Thank you very much, Tarmika. Heartiest congratulations. I request Sri Rahul Kara sir to kindly felicitate and congratulate Tarmika. Next we have on this stage a student leader all the way from Delhi, Nidhi Sandhir.
Hello. Yatra narastu pujante ramante tatra devta. Where women are honored, divinity blossoms there. And yet, this Bharat that we know as Janmabhoomi is far from reaching this point. Namaskar to all the dignitaries and everyone present over here. Today I, Nidhi Sandhir, come to you with a defense background to speak on the topic, as we land on the moon, are women safe on land? You see, women's safety isn't violated only during wars, which, as we see in ongoing worldly conflicts, threatens every human's life. No, in fact, women are supposed to stay alert 24/7 in their daily lives. A report by Relief Web states that adult women account for 51% of human trafficking victims. The Jharkhand belt still has the tradition of witch hunting. 38% of murders of women are committed by intimate partners, and marital rape is still a concept so widely misunderstood. The public then may ask, well then why don't these women speak up and get rightful justice? You see, there is such a lack of trust in criminal justice systems worldwide and stigma attached to victims of gender-based violence. These victims are afraid of being judged and are afraid of re-victimization. I repeat, re-victimization. In 2019, a teenager in Unnao watched her rapist celebrate bail. And as if this was not enough, he, along with the villagers who were infuriated on this allegation of rape, burnt her house down and threw her infant son in flames. You can go about your day without any paranoia of being hurt, but these women can't. We can't. In 2021, the NCRB recorded 176 acid attacks in the country. And these were only the ones which are registered. Just the next year, Bangalore recorded the highest number of acid attacks, and most of them were due to, brace yourselves, women rejecting men's marriage proposals. We as citizens preach Beti Bachao, Beti Padhao, yet we forget to teach our sons first to have enough emotional intelligence to handle rejection. And yet, even in developed countries, victims are the ones blamed for gender-based violence. Nirbhaya was blamed for her rape for roaming out at night. Girls are being told off for wearing short skirts. And just last October, the Calcutta High Court mentioned in their judgment, and I quote, female adolescents should control their sexual urges to avoid any mishap. Look, don't get me wrong. I am proud of Bharat for making innovations and sustainable development for our future generations. But when the people who birth these future generations are deprived of their basic safety, what is the point of these innovations, yaar? What is the point of conquering space when your safety on earth is compromised? What is the point of dreaming of skylines when your foundation is weak? And what is the point of it all? When ma, behan, beti are on your tongues only as profanities, but you forget that they are actually someone's ma, behan and beti. Thank you and Jai Hind. Thank you very much, Nidhi. Heartiest congratulations. It's indeed heartening to see the young girls of this country presenting their views very strongly from this stage. Next, I'm going to invite all the way from Punjab, Ashish Deep Kaur to address the gathering. पंड मुआ पंड पालिए पंडे होए बंदान सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान. Why label women as inferior when they give birth to kings? In a nation where goddesses are revered in almost every festival, are we extending even a fraction of that respect to the women within our home? They are just to honor the mother of this earth, yet our entertainment industry with the lyrics like कुड़ियों का लगा है बूफे चाहे जो कर लो चूस मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ यार गटकाले सैया alcohol से is dismantling these values and adversely influencing our youth. Moreover, one of our local leaders in Haryana blamed Chowmin by saying that it leads to hormonal imbalance, evoking an urge to indulge in rapes. Is this how we are creating awareness? While we celebrate the strides we have made, it's our responsibility to shine a light on the reasons why Jyoti Singh, Dr. Priyanka Reddy and Asifa, safety remains an elusive ideal. I question you, ladies and gentlemen, why do women always have to think twice while stepping out from home? Why do they always have to take permission before taking any decision? Why do they always have to think twice? According to National Crime Records Bureau,
country witnessed more than 30,000 registered rape cases, with a striking of 86% either committed by a family member or friends of the victim. And shockingly, the societal blame often falls on the victim's attire or the late night hours. It is in this environment of fear, stigma, and victim blaming that contributes to the alarming number of unreported cases in India. Unfortunately, it doesn't end here. In Andhra Pradesh, parents sold their 12-year-old daughter to a neighbor for the sake of just 1 lakh rupees. In our culture, we are taught from birth that we are inherently different. Girls are confined at home and restricted at night, while boys can enjoy their freedom. If a girl spends extended period using a mobile phone in public, she is labeled as a sabhya beti. Women's privacy within a household is disregarded, because why would a truly sanskari girl, obedient daughter, and doting wife ever have something to hide? While laws grant men the right to divorce over parental separation, marital rape is overlooked. To all the women out there, we need to realize that unless we won't raise our voices for ourselves, no one else will. Neither your pepper spray is going to work. We must initiate this battle for our rights, and to achieve that, we need to increase women's participation in every sector, including the parliament. It's time to be the architect of our own destiny and strive for a more inclusive and equal society. मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, झांसी की रानी है किसी से डर नहीं सकती. मदर टेरेसा कल्पना हो या सान्या मैरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती. जय हिंद, जय भारत. Heartiest congratulations, Ashish Deep. What a beautiful address. It's indeed heartening to see such views of the young girls of our country. Next, we have on stage, all the way from Uttar Pradesh, Aditi Sharma presenting her views. I request Aditi to address the gathering. नमस्कार, मैं लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश की भूमि से अदिति पुण्य प्रकाश शर्मा आप सभी के समक्ष हम चांद तक पहुंच गए हैं, लेकिन क्या महिलाएं जमीन पर सुरक्षित हैं, इस विषय पर अपने भाव प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूं. 23 अगस्त 2023 को भारत ने एक नई उपलब्धि हासिल की. भारत चंद्रमा तक पहुंच गया. सर्वप्रथम मैं सभी वैज्ञानिकों को और मेरे देश के सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी. चंद्रयान की सफलता हर भारतीय के लिए गौरव का प्रतीक है. ये तो विकास की सीढ़ी पर केवल शुरुआत है. ये नए भारत की नई पहचान है, नए भारत की नई उड़ान है और नए भारत की नई छलांग है. वर्षों वर्षांतर के घंघोर परिश्रम के बाद हम चांद पर पहुंच गए. लगता है हम विश्व गुरु बन गए. श्रद्धा हो या साक्षी, हम सभी बहनों को भूल गए. चिंता सताती है हमें सुरक्षित लैंडिंग की. हम अंधेरे या भरे उजाले में असुरक्षित बेटियों के भय को भूल गए. अब कई पत्रकार, समाचार चैनल, सत्ताधारी विकास की चकाचौंध में स्वयं मौन हो गए हैं, पर हम चांद पर पहुंच गए हैं. लगता है हम विश्व गुरु बन गए हैं. जब मैं ये कहती हूँ कि ये वो वर्ष है जिस वर्ष में हमने चंद्रयान की सफलता हासिल की, दोस्तों मैं आप सबका ध्यान इस बात पर भी लाना चाहूँगी कि ये वो वर्ष भी है जिस वर्ष में हमारी महिलाएं मानवीय दरिंदगी का सामना कर रही थीं. कहीं एक 12 वर्ष की बालिका के साथ दरिंदगी का केस सामने आया, तो कहीं एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की सरेआम चाकू से हत्या कर दी. और इससे भी दुखदायक बात तो ये है कि वही लोग जो चंद्रयान की सफलता की प्रशंसा कर रहे थे, जश्न मना रहे थे, वे मात्र 12 वर्ष की बालिका की सहायता के लिए अपने घर के दरवाजे तक नहीं खोल रहे थे. ये 2 चित्र दर्शाता है. एक चित्र जहां विकास हो रहा है, जहां महिलाएं वर्षों वर्ष तक प्रधानमंत्री रह रही हैं, जहां वर्जनाओं को भेदकर हम सभी अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं, जहां महिलाओं के योगदान से ही चंद्रयान की सफलता हासिल हुई है. वहीं एक दूसरा चित्र जहां महिलाएं न जन्म से पहले सुरक्षित थी न जन्म के बाद. ये अत्यंत दुर्भाग्यशाली बात है कि हम चांद तक तो पहुंच गए, लेकिन हमारी महिलाएं अपने घर में भी सुरक्षित नहीं. हम कैसे ऊंची उड़ानें भर सकते हैं जब हमारी महिलाएं इस प्रकार की दरिंदगी का सामना कर रही हैं. वाह रे मर्दों की दुनिया ने ये कैसी नियति दिखलाई. कभी जुए में हार गए तो कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई. पूजा मुझे दुर्गा जैसे, कभी वैश्य बन उतार किया. माना मुझे जगत जननी तो कभी दरिंदगी से मार दिया.
केवल 40% महिलाएं ही ऐसी हैं जो जुल्म का सामना करने के बाद अपनी आवाज उठाती हैं, और इसका कारण ये है कि हमारे विश्व में व्यापक और वैश्विक अविश्वास का माहौल है। ये एक चुनौतीपूर्ण समय है, हमें उठना होगा, हमें आवाज उठानी होगी, क्योंकि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है वहां ईश्वर वास करते हैं, वहां विकास होता है, और जहां नारियों का अपमान होता है, याद रखिएगा, वहां से महान भारत भी महाभारत की ओर मुड़ जाता है। अंत में अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि ये करना इतना भी कठिन नहीं है, क्योंकि हम तो उस संस्कृति के वंशज हैं जिस संस्कृति में देवताओं के नाम से पहले देवियों के नाम लिए जाते हैं, पतियों के नाम से पहले पत्नियों के नाम लिए जाते हैं। तभी तो कहा जाता है नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। Heartiest congratulations, Aditi. A big round of applause for Aditi. And I request Rahul Karat sir to kindly felicitate Aditi Sharma for her beautiful views. And now we have all the way from Andhra Pradesh, Abdul Aziz, putting his views in front of us. चर्चे हो रहे हैं हमारी कामयाबी के अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, चर्चे हो रहे हैं हमारी कामयाबी के अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। क्या फायदा इसी कामयाबी का जब सुरक्षित ही नहीं है बेटियां घर पे। नमस्कार, मैं अब्दुल अजीज देश के कोहिनूर वाले राज्य आंध्र प्रदेश से छात्र सांसद में युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज भारत खुशियां मना रहा है अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर। आज भारत जश्न मना रहा है अंतरिक्ष में उड़ान भरने और दक्षिण ध्रुव में पहुंचने वाला पहला देश बनने पर। चारों ओर जश्न ही जश्न है, लेकिन आज भी एक अधूरा प्रश्न है, क्या हमारी महिलाएं इस धरती पर सुरक्षित हैं? जिस देश की महिलाएं 6 बजने के बाद घर से बाहर निकल नहीं सकती हो, जिस देश की लड़कियां अकेले सड़क पे चलने से घबराती हो, जिस देश में प्रति घंटा महिलाओं पर होते अपराध के 51 एफआईआर दर्ज होते हो, कैसे मान लूं उस देश की महिलाएं सुरक्षित है? कैसे भूल सकता हूं उस रोती हुई आसिफा, चीखती हुई निर्भया और जिंदा जलती हुई प्रियंका को? कैसे भूल सकता हूं इंसाफ के लिए लड़ती हुई बिल्किस बानो को, दहेज के बोझ में घुट कर खुदकुशी करने वाली आयशा को? आज की नारी भी यही सोचती होगी, ना जाने दुनिया के किस कोने में मैं आ पड़ गई, ना जाने दुनिया के किस कोने में मैं आ पड़ गई। आज शक्ति को ही शक्ति कम पड़ गई। विडंबना देखिए, जिस देश की संस्कृति में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, उसी देश में हर साल 2.5 लाख महिलाओं पर बलात्कार होते हैं। जिस देश में लड़कियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है, उसी देश में 70% लड़कियों को हिंसा उनके अपने ही घरों में होती है। जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगता है, उसी देश में हर साल 6 करोड़ 30 लाख बेटियों को मार दिया जाता है। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। ठीक वही हाल है आज हमारे देश के नेताओं का। ये नेता सिर्फ नारा देते हैं, सहारा नहीं। उन्हें इतना समय कहा कि वो हमारी देश की बेटियों को सुरक्षा दे, जब वो खुद ही अपनी अपनी कुर्सियों की रक्षा में लगे हैं। बस बहुत हुई है शिक्षा, सुरक्षा और आरक्षण देने वाली झूठी बातें और झूठे वादे। अब और नहीं। जरा पूछो इन नेताओं से जो चीख चीख कर कहते हैं हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे। अरे कैसे बनाओगे देश को विश्व शक्ति? कैसे बनाओगे देश को विश्व शक्ति जब सुरक्षित ही नहीं है देश में नारी शक्ति? और मैं हमारी देश की नारियों से बस यही कहना चाहता हूं, ऐसे ही डरते और सहते 75 वर्ष काट लिए हैं, अब और नहीं। कहां गई तुम्हारी वो झांसी वाली वीरता, कल्पना वाली शूरता, दुर्गा वाली बहादुरी? कब तक यूं ही घुटती और पिटती रहोगी? बहादुरी से आगे बढ़ोगी तभी तो बढ़ती और उड़ती चलोगी। अब इस देश की बेटी को छोरी नहीं छुरी बनना होगा। छात्र सांसद के इस मन से आप सभी लोगों से मैं बस यही आग्रह, आह्वान और निवेदन करता हूं कि नारी शक्ति का सम्मान करें। अगर अब भी हम ना सुधरे तो एक दिन ऐसा आएगा, अगर अब भी हम ना सुधरे तो एक दिन ऐसा आएगा, इस देश को बेटी देने में भगवान भी घबराएगा, भगवान भी घबराएगा। जय हिंद, जय भारत। Heartiest congratulations, Abdul Aziz, for coming all the way from Andhra Pradesh and putting your views in front of us. Heartiest congratulations to all the student leaders, Dharmika, Nidhi, Ashish Deep, Aditi, and yes, indeed, Abdul. इन सभी के इन विचारों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इन सभी युवाओं ने एक बात ठीक ठीक तरह से समझ ली है
कि हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर रख भरोसा, अपने पंखों पर रख भरोसा, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। I think this vision is already being followed by the youth of this country, and I'm sure this youth will transform our country for good. My friends, in this session, I would say a very special session, we have a very special performance for all of you. Two bright students of MIT World Peace University, Ms. Tanvi Bansal and Ms. Karishma Sharleet, are going to present a very beautiful monologue for all of us. I request them to kindly go ahead. First of all, I would like to apologize to the dignitaries on stage as our backs will be towards them. But nonetheless, please do enjoy the performance. हाँ, हूँ मैं यज्ञसेनी द्रौपदी, अग्नि से जन्मी, वही अग्नि जिसमें मैथिली ने भी दी थी अग्नि परीक्षा। उसी पवित्र अग्नि के सामने आज खड़ी हूँ। त्रेता, द्वापर या हो कलयुग, समय का पहिया तो चलता गया और वक्त हमारे बिना ही बदलता गया। हम यानी मैं, सीता, तू, हम सब स्त्रियां जो असीम अश्रु बहाकर आज इधर खड़े हैं। आज भी मेरी उंगलियां मेरी उस फटी हुई साड़ी के निशान को पूछती है कि मेरी हर सांस की कीमत क्या है, किसका हक है मेरी इस साड़ी पर और मेरी इन सांसों पर। किसी चौसर के खेल में दांव पर हारने का हक किसे है मुझे? कल तक था उनके पास, पर अब नहीं, अब बस। मेरे दर्द का ये तूफान हर एक स्त्री के भीतर आज भी गूंजता है। लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई थी वही नाम लेकर जो मेरा है, और सावित्री ने कलम उठाया वही नाम पुकार कर। मेरे बाद अनगिनत नारियों ने मेरे इस प्रतिशोध की आग को अपने सपनों और उन्नति के घी से जलाए रखा है। हम अपने हाथों में चूड़ियां तो पहने हैं, पर इसका मतलब हम कुछ और थाम नहीं सकते, ये तो नहीं। हमारे सपनों और आशाओं को उसी फटी हुई साड़ी में बांध कर चलते हैं हम, और आनंदी जैसे चले जाते हैं विदेश। लेकिन आज मैं शपथ लेती हूं, मैं किसी के सामने सपने बिखरने नहीं दूंगी, ना मैं किसी के घर को टूटने दूंगी, ना ही मैं किसी नारी को बांधने दूंगी अपने आंखों पर पट्टी, ना ही मैं किसी को अंधविश्वास की सूली पर चढ़ने दूंगी, क्योंकि अब नहीं, अब बस मेरे सामने मेरे 5 पांडव हतबल होकर खड़े हो गए, पर मैं अब उस हर एक नारी के साथ हूं जिसने आज मुझे पुकारा है। मैं ना ही किसी दुर्योधन, ना ही किसी दुशासन को तेरे ऊपर अपनी बुरी नजर डालने दूंगी, ना ही मैं तुझे किसी पांडव के रुकने दूंगी। मैं कर्म हूं, मैं मोक्ष हूं, मैं ही काल हूं, मैं ही गौरी हूं, मैं ही लक्ष्मी हूं, और मैं ही हूं काली। आज भी मेरी इस क्रांति की विरासत को अपने कंधों पर टिकाए रखने की शक्ति कायम है आज की स्त्रियों में। आज इस भारतवर्ष की राष्ट्रपति एक औरत है, हमारे अर्थव्यवस्था को संभालने वाली एक औरत है, और आज इस हर एक नारी को मेरा प्रणाम है। A big round of applause, my friends, for such a beautiful presentation. Ms. Tanvi and Karishma Sharleet, heartiest congratulations to both of you. And now,
moving forward, it is important that we understand the views of the eminent speakers. I request the first Shri Rahul V. Karat sir to kindly felicitate and congratulate both the students, Ms. Tanvi Bansal and Karishma Sharleet, for their beautiful performance. A big round of applause, my friends, for both of them. Such a beautiful presentation. The students of public policy, and they presented the performance, Whispers of Progress, Echoes of Reality. Such a beautiful presentation. Heartiest congratulations to both of them. And now it's time when I invite the next eminent speaker of this session, Advocate Abha Singh ji. But before I do that, I request my technical team to kindly relay a small film. For greater good. Her persistent activism on issues related to women and governance earned her widespread acclaim. In May for greater good. Her persistent activism on issues related to women and governance earned her widespread acclaim. In May 2017, she received an invitation to speak at TEDx Oxbridge, an event organized in collaboration between the universities of Cambridge and Oxford. Understanding the significance of women's rights for the country's advancement, Abha Singh established the Run Samar Foundation, operating primarily in rural areas where 75% of Indians live. The foundation is committed to empowering women and girls with vocational skills and fostering financial inclusion. Let us warmly welcome eminent advocate and social activist Abha Singh. Please put your hands together, my friends, and welcome with a big round of applause Advocate Abha Singh ji. नमस्कार। सबसे पहले मैं मंच पे बैठे हुए सभी माननीय लोगों को नमस्कार करती हूँ और डॉक्टर विश्वनाथ कराड और उनके लायक बेटे राहुल कराड को धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और ये भारतीय छात्र संसद जैसा खूबसूरत एक माहौल बनाया है। मैं बच्चों को सुन रही थी और आप में जो व्यथा है तो वो व्यथा को व्यक्त करने की भी आपके सामने यही आपको सीख दी जा रही है। भारतीय छात्र संसद में इलेक्शन है, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का इम्तहान 2024 में है। आप सब आइए सामने और अपने शब्दों को अपने वोट में व्यक्त करिए, क्योंकि मैं सिर्फ एक लाइन सबसे पहले बोलूँगी, The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything. This was said by Albert Einstein. तो जो आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, अगर आप महिलाएं बच्चियां देख रही हैं कि क्राइम बढ़ रहा है, रेप हो रहा है, एब्डक्शन हो रहा है, किलिंग हो रही है, तो आपको फिर वैसे ही नेता पार्लियामेंट में भेजने हैं जो आपके अधिकारों की रक्षा कर सके, आपको ऐसी पुलिस दे सके, ऐसी ईमानदार पुलिस दे सके कि जब आप कह रहे हैं कि 51 एफआईआर रोज लिखी जाती है, तो वो एफआईआर में क्या आईपीसी सेक्शन लगाए जाते हैं वो आपको मालूम है? सीआरपीसी कहता है कि आपको आपकी भाषा में एफआईआर की कॉपी दी जाएगी, लेकिन मैं दावे से कहती हूँ कि महाराष्ट्र में पूना में भी आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे, आपको मराठी में एफआईआर मिलेगी। अगर आप हिंदी बोलते हैं, असामी बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, आपको तेलुगु में नहीं दी जाएगी, जबकि सीआरपीसी में लिखा है, क्योंकि उस थाने में वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो ट्रांसलेटर नहीं है कि वो आपको एफआईआर दे। लेकिन उससे पहले आपने कभी मांगी भी नहीं,
मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, लोग आते हैं कहते हैं अरे हमने तो कुछ और बोला था, एफआईआर में कुछ और लिखा है। मैं कहती हूँ दस्तखत तो आपने किया है, लेकिन वो भाषा की जो बात आती है, तो जब तक आप खुद अपने अधिकार के लिए खड़े नहीं होंगे तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा, और न्याय नहीं मिलता है। टॉपिक आपने बहुत अच्छा लिया कि मून पे तो लैंड कर गए, बट क्या इस लैंड पे आर वी सेफ? तो मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी, जो पेट्रियार्की की बात करते हैं आप, मून पे आज तक कितने लोग चले हैं? आप लोग स्टूडेंट हैं, बता सकते हैं? नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन। आज तक 12 लोग मून पे चले हैं, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि सभी पुरुष हैं। एक भी महिला अभी तक मून पे चली नहीं है। डॉक्टर टेसी थॉमस ने चंद्रयान तो भेज दिया मून पे, लेकिन महिला को कब, भारतीय महिला को वो मून पे चलाएंगी, ये बात होगी। अमेरिका पहली बार 2024 में उनका जो प्रोग्राम है आर्टेमिस, उसमें पहली बार क्रिस्टीना कॉक 2024 में एम कर रही हैं कि वो मून पे उतरें। तो जब इतनी इनइक्वालिटी है, when there is not equality, we talk that we are half the world, and yet in the 12 people who walked on the moon, we are not there. If in the Supreme Court there are 31 Supreme Court judges, and in that only 3 are women. If in the civil services there are only 18% women. If in military there are barely 15% women. How do you expect that women will come forward and get protected? So the biggest question is representation. आज पार्लियामेंट में रिजर्वेशन हम मांग रहे हैं, अभी दिया भी गया है तो 2029 में 5 बार से। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, छोटे छोटे देशों में भी दिया गया है, लेकिन भारत में नहीं दिया गया। क्यों? मेरा मानना है कि भारत की महिला, मैं बच्चियों को सुन रही थी, इतनी कैपेबल और कॉम्पिटेंट है कि पुरुष वर्ग डर जाता है कि अगर इनको हमने इक्वल जमीन दे दी तो कहीं ये हमसे आगे ना निकल जाए। दिस इज द फैक्ट। और मैं खुद अपनी बात करती हूँ, मैंने आईएएस का एग्जाम दिया, पास किया, 20 साल बाद मैंने सरकारी नौकरी छोड़ी। क्यों छोड़ी? मैंने कहा कि मैं सरकारी अधिकारी बनके मेरी आवाज़ घोट दी गई, मुझे सीसीएस कॉन्ट्रैक्ट रूम में बोलने नहीं दिया गया। और अगर आपको बराबरी चाहिए, आपको सेफ्टी चाहिए, तो आपको कानून पढ़ना पड़ेगा। 20 साल नौकरी के बाद मैंने वकालत पढ़ी, बॉम्बे हाई कोर्ट में मैंने प्रैक्टिस की, और हिंदू ने एक आर्टिकल लिखा कि फिल्मों के रील के हीरो सलमान खान है, बट जमीन की रील के हीरो के जो है आभा सिंह है। 5 साल की सजा कराई थी हिट एंड रन केस में मैंने सलमान खान को सेशन कोर्ट से। सलमान खान कोर्ट में रोए। अभी मेरे इस केस, इस सेशन से पहले मैनुअल स्कैवेंजर्स की बात हो रही थी, कास्ट की बात हो रही थी। महाराष्ट्र जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट में, महाराष्ट्र ने आज 30 साल में एक भी विधवा को, मैनुअल स्कैवेंजर्स की विधवा को 10 लाख का कॉम्पेंसेशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है देने को, लेकिन आज तक नहीं दिया गया। आपको जान के खुशी होगी कि रणसमर एनजीओ से मैंने पहला कोर्ट में रिट डाला, और मेरी बेटी ईशा ने आर्ग्यू किया प्रो बोनो। उन विधवाओं को जब हम हाई कोर्ट में लाए तो बीएमसी ने लिख के दिया कि मुंबई में कोई भी विडो नहीं है, कोई भी मैनुअल स्कैवेंजर की डेथ नहीं हुई है। जब वो 3 विधवाओं को मैंने हाई कोर्ट में खड़ा किया और मैंने कहा लॉर्डशिप, अगर इनकी आरटीआई रिप्लाई कहती है कि यहाँ पे कोई डेथ नहीं हुई है, तो ये क्या भूत है? ये 3 विधवाएं कहाँ से आई? और उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर किया, वहीं पे कलेक्टर सबर्बन 10-10 लाख के चेक लेके उनको खड़े थे। 30 साल में एक पैसा नहीं दिया गया, और एक बॉम्बे हाई कोर्ट के केस में उन महिलाओं को वहीं पैसा दिया गया। तो अगर आपको सेफ बनना है, आपको अपने हक चाहिए, आप इज्जत से जीना चाहती हैं, आप द्रौपदी और सीता नहीं बनना चाहती, तो आप कानून पढ़िए, कानून सीखिए, अपनी आवाज़ बुलंद करिए। मैं आज भी कहती हूँ कि मैंने अपना काला कोट पहन लिया, अब कोई भी आके खड़ा हो जाए हाई कोर्ट में, मैं उसको नाको चने चबवा दूंगी। सो दैट इज व्हाट। पुलिस की एफआईआर, क्राइम क्यों होता है? आपको मालूम है, आपने कहा 51 एफआईआर्स, रेप में कन्विक्शन क्या है? 27%। 100 में 70 रेपिस्ट तो छूट जाते हैं। क्यों छूट जाते हैं? क्योंकि या तो वो पॉलिटिकली कनेक्टेड है या वो अमीरों से कनेक्टेड है। पुलिस वालों को उन्होंने मोटे पैकेट पकड़ा दिए, और उसके बाद जो एफआईआर है उसमें वैसे ही रायता बन जाता है कि वो कन्विक्शन ही नहीं होता। विटनेस जो है होस्टाइल हो जाते हैं, क्योंकि इस कंट्री में वी डोंट हैव समथिंग कॉल्ड अ विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम।
Victims are harassed, witnesses are tortured. As a result, when the trial happens, nobody speaks up. And the rapist and the murderer goes scot-free. और या फिर जो बचता है वो clean sheet मिल जाता है. We have something called clean sheet. Do we raise our voice? जो मैंने कहा, if the students are speaking so well, then why these students don't ask their representatives, what have you done for us? Why don't you ask the police that you are getting salary from my taxpayers' money? Then why are you not protecting me? Why are you not coming when I make a call? Why are you running after politicians in VIP security? Abductions, kidnappings. Of course, the crime rate has gone up. During COVID, I was getting so many calls from Pune. Girls were calling up to say, we are suffering domestic violence. What do we do? Please help me. The local police is not entertaining us, which was very true. When you could not move out of your houses, women suffered domestic violence silently. I tried calling up protection officers. No protection officer picked up the call. So have you made an accountability? What is required? अगर बच्चियां चाहती हैं, महिलाएं चाहती हैं कि उनको सेफ्टी मिले, तो you have to break the silence, raise your voice, fix accountability. After Nirbhaya Criminal Law Amendment Act, there was a section called 166A of the IPC. If the police officer does not register FIR, when you go to the police station, there is a provision of 2-year imprisonment of that police officer. Do you know that? How many FIRs have been done against those police officers who have not registered cases against women? So that is important. That is important that you take the case to the logical conclusion. ऐसा मत करो कि जब पड़ोसी क्या आग लगेगी तब हम नहीं निकलेंगे, हमारे घर में आग लगेगी. We have to hold hands, we have to stand up for right, we have to stand up for truth, and we have to come together. I always say कि अगर आपको अपने को protect करना है, safe करना है, तो you have to hold hands. IS के इंटरव्यू में पूछा जाता है, a woman is a woman's biggest enemy. क्यों ये सवाल होता है? हम क्यों अपनी कॉलीग से जलते हैं? क्यों हम अपनी दोस्त की बेटी से जलते हैं कि वो मेरी बेटी से ज़्यादा अच्छा कर रही है? So the issue is unity. That little girl, MLA who came from Kayamganj, my father was a police officer in Farrukhabad and he got the President Medal for Gallantry from Farrukhabad. He killed Sultan. What I'm trying to say is, strong fathers make strong daughters. So parents have a very important role. अपनी बेटियों को अधिकार दीजिए. Supreme Court has said a daughter has an equal right to property. कितनी महिलाएं या बेटियां यहाँ बैठी हैं जो हाथ उठा के कह सकती हैं कि हमको ancestral property में हमारा हक मिला है? How many of you can say that I have inherited my father's property? In spite of there being a law, because of the social stigma, you don't come and claim. So education, equality, property, all this will empower you. Women who want to start their businesses don't get loan because they don't have a collateral, they don't have a property which they can mortgage in the bank and get a loan. So property is equally important. So be aware of your rights. I know I will go on and on. I'm a lawyer and I'm very passionate about gender justice. But since the time is short, all I want to say is, if you are finding faults with the system, what stops you from coming forward and changing the system? When Mahatma Gandhi rightly said, be the change that you want to see. Thank you. Thank you very much, Abbas Singh ji. Thank you very much for putting your thoughts across. I am sure students would be motivated after listening to your thoughts. Now, the next eminent speaker of this session is a distinguished scientist and former Director General of Aeronautical Systems, Defense Research and Development Organization, DRDO, Government of India, none other than Dr. Tessie Thomas ji. Work of Dr. Tessie Thomas. Dr. Tessie Thomas is a trailblazer in aeronautical systems and a renowned scientist. She holds a PhD in missile guidance from Jawaharlal Nehru Technological University. Her illustrious career is marked by numerous accolades, including honorary doctorates from prestigious institutions such as IIT Kharagpur and IIT Kanpur. Dr. Tessie Thomas has been a key figure in the development of India's missile technology, contributing significantly to guidance, control,
inertial navigation, trajectory simulation, and mission design. As the project director for Agni 4, she played a pivotal role in designing the guidance scheme for long-range missile systems, earning her the Agni Self-Reliance Award in 2001. She is currently serving as the Director General of Aeronautical Systems at DRDO. Dr. Tessie Thomas is a recipient of the DRDO Award for Path-Breaking Research, Outstanding Technology Development Award, the DRDO Scientist of the Year Award, and the Outstanding Woman Achiever Award by the Women in Science and Engineering organization. Let us applaud the remarkable Dr. Tessie Thomas for her outstanding contributions to the field of aeronautical systems and for being a true pioneer in the realm of missile technology. Please put your hands together, my friends, and welcome with a big round of applause, Dr. Tessie Thomas. Very respected chairman of the session, Girish Gautamji, Dr. Vishwanath Karedji, Dr. Rahul Karedji, and all the 5 student speakers. I am really amazed to hear them. Advocate Abba Singh, Srimati Rupa Ganguly, Dr. Fauzia Khan, and Dr. Surabhi, who received the Young MLA Award, and all the distinguished guests present here. Very good morning to all of you. It's really a exciting moment for me to come here and address this 13th Indian Student Parliament, where the theme today has taken as we land on moon, are women safe on land? And there is a question mark. And the question mark still remains. We heard all our student speakers. We heard Advocate Abba Singh. I think the world has to change. And today, being the birth anniversary of Swami Vivekananda, who was a reformer, who worked for the upliftment of women, has always spoken, awake, arise, and realize the power the woman holds. He always said there is no chance of the welfare of the world unless the 50% of the population, the welfare of the women is improved. A bird cannot fly with one wing alone. I come from the background of science and technology. Doing the profession, being an engineer and doing the profession of a scientist, I understand what the word equality means. Because we were given the opportunity to be as part of the mission design and project directors by our visionary leaders. Because in a world where if we are given the opportunity, we all take it up and we all make it. But what needs? We look at our own country, we hear about the constraints within the family. One thing we all must remember, the human being, whether a boy or a girl, is born from the womb of a mother. She's a lady. And we need to respect that lady or the woman who has given the birth. If we can respect the women, then everything falls in place. Fundamentally, we have to change the thought process within the house. For me, we have 5 children in our home, where 6 children in our home, where 5 are girls and 1 boy. So we were given the equal education. I come from Kerala, and we were given the equal education and given the opportunity to become whatever we want. So that
the education is the prime factor which will groom an individual to be culturally, and we learn to respect others. That has to happen in our country or the world across, and where we feel we are unsafe. Then there is nothing wrong. The way we need to take up the protective measures, if women are physically seen as weak in physical capability, then why not we start the educational system wherein which physical education with protective capabilities, activities like are, if every woman or the girl of our country are Mary Combs, can anybody dare to come near us? So that should be the thought process of the next generation. We have already seen among the 5 students who spoke, 4 of them were girls. I don't see them any less than Mary Combs, because the strength or the confidence in which they spoke to us, that shows the passion in them, what they want to be, and I'm sure nobody can defeat such women leaders. And I understand MIT is giving the most opportunity for the girl students to come up as social leaders and political leaders along with their engineering career. It's an amazing concept and a very unique concept in grooming the children to this level of thought process. And I'm really thankful to Dr. Vishwanath Karade, who had the vision of bringing in this concept to the students, or motivating them or molding them to be the future leaders. And that gives the opportunity to change them as we want. I can only just say a few words about my career. The job which I was put in as project director of strategic missile program of the country, unless otherwise the leaders, superiors of my institution had the confidence in me, I would not have been given this opportunity. But that confidence has come on me due to my educational background and dare the devil, that type of a spirit in taking up any scientific challenge. Once we take on as an educationist, in the sense the technology know-how, then you are definitely one step ahead of in your scientific field. Technology know-how, technology know-why, and then if you are capable, like physical strength and mental health, all these are an amalgamation of the strength of a woman. My father used to say, from our school days I used to hear, he used to mention that there are 3 things my children should know. One is cycling. I don't know why, because that was a world where only cycles were there. Hardly few taxis or cars were there. He used to tell, whether girl or boy, you should learn cycling. The second one he used to tell is swimming. One should know swimming, because maybe Kerala, or I belong to Alapi, it's surrounded by water across. I always feel that he was thinking about the protection. Third is, one should learn the defensive mechanisms. One should be martial arts, he used to say. So these things, when as a child, I have been hearing from maybe my 7th or 8th year of my age. So these are the things that education, along with the protective capability, I think schools should take up this, and there will be a wonderful change in the world what we are living. And then we can definitely answer that as we are in moon and visualizing Aditya missions, viewing at sun, definitely we can take a step forward to be safe in this land. Thank you once again to all of you for the question listening. Thank you very much, Dr. Tessie Thomas ji. All the
eminent speakers of this session, I would say, are the role models for the young women of our country. One is a scientist, one is an advocate, one is a renowned actress, and one is the former MP, one is sitting MP. So it's a galaxy of icons sitting on stage for all the young men and women, I would say, those who are in front of us. इन सब की ऊंचाइयों को, इन सब की उपलब्धियों को देख के ऐसा लगता है कि हौसला देख मेरा झुक गया वो पर्वत भी, हौसला देख मेरा झुक गया वो पर्वत भी, वो जिसे नाज था खुद की ऊंचाई पर कभी. I'm sure all the young women, all the young girls of this country would be successful to such a height in one day. My friends, it is now my honor and privilege to invite the next eminent speaker on the stage, the noted actress, playback singer, and the former MP of Rajya Sabha, Madam Rupa Ganguly ji. But before I invite her to address the gathering, I request my technical team to kindly relay a small film made on life and work of Madam Rupa Ganguly. Srimati Rupa Ganguly, an accomplished actress and a dedicated politician. She served as a member of the parliament in the Rajya Sabha from 2016 to 2022. Srimati Ganguly's journey is marked by her exceptional contribution to the world of cinema, where she garnered acclaim for her roles in both films and television serials. A Kolkata-based artist, she completed her education at Beltala Girls High School and Jogmaya Devi College, affiliated with the University of Calcutta. Beyond her acting prowess, Srimati Ganguly is a trained Rabindranath Sangeet vocalist and a classical dancer, showcasing her multifaceted talent. She won a national award as a singer for the film Abo Sheshe. She has worked with renowned national award-winning directors such as Mrinal Sen, Aparna Sen, Gautam Ghosh, Rituparno, and has travelled all over the world for international film festivals and awards. She gained widespread recognition for portraying Draupadi in B.R. Chopra's iconic television series Mahabharat in 1988, a role that left an indelible impact. Her contributions to the entertainment industry have been lauded with numerous awards, including the prestigious Smita Patil Memorial Award. Let's welcome Srimati Rupa Ganguly. My friends, let's put our hands together and welcome with a big round of applause, Madam Rupa Ganguly ji. मंच पे बैठे और यहाँ हमारे सामने सारे स्टूडेंट्स को, सीनियर मेंबर्स को, प्रोफेसर्स, सीनियर गेस्ट्स एंड डिग्निटरीज, सबको मेरा नमस्कार. और ज़्यादातर उनको मैं बधाई देना चाहती हूँ जो ये भारतीय छात्र संसद के प्रोग्राम के लिए ये बच्चे जो हैं यहाँ खड़ा उठकर कितनी अच्छी अच्छी भाषण दी है. Congratulations, children. You've really done it very, very well. Very brave. तुम्हारी उम्र में तो हम लोगों को इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी. आज के बच्चे बहुत ही स्ट्रांग हैं, हिम्मत वाले हैं. मैं श्री गिरीश गौतम जी को, राहुल कराड़ जी को इसकी शुरुआत के लिए, फौजिया खान जी को, टेसी थॉमस जी को और आभा सिंह जी को, मैं तो आभा सिंह जी की बहुत फ़ैन हूँ, सबको सुना मैंने. सिर्फ फौजिया खान जी बोलेंगे इसके बाद. कुछ कुछ चीज़ें मुझे मेरे मन में घुस रहा था. देखिए, मैंने कल ही परसों ही मन तय किया कि इसके बारे में मैं इस प्रोग्राम में आऊँगी. तो
ज़्यादा मुझे नोट वोट तैयार करने की आदत नहीं है, मैं पटर पटर करके लिखती रहती हूँ। तो ये जो छोटी सी चीज़ आपने जो मेरे वीडियो वगैरह बहुत अच्छे से जुगाड़ के लोगों ने देखा, इसमें क्या लगा, एक एक्ट्रेस है, किसी भी तरह पार्लियामेंट में पहुंच गई और बीच बीच में जाके ऐसे स्टाइल से हेयर कट करके आ जाती है। नहीं नहीं जी, ये हेयर कट मैं खुद करती हूँ, सर के दर्द के वजह से कर लेती हूँ। दिल्ली में ठंड के समय बहुत ज़्यादा ही ठंड, विंटर में, तो यहाँ जो मेरे टूट गए हैं, जो मल्टीपल हेमोरेजेस है यहाँ पे, उस वजह से बाल मैं संवार नहीं पाती। 2016 22 मई पश्चिम बंगाल में मारा किसने था? महिला पुलिस और आदमी लोग भी। तो ये स्टाइल स्टेटमेंट नहीं है मेरा, दर्द संभाल नहीं पाती हूँ इसलिए बाल काट लेती हूँ, और वो भी खुद ही, किसी पार्लर में जाके नहीं। हाँ, अब सवाल ये है मेरा ना, ये आज के जो ये प्रोग्राम का टाइटल है, इसमें मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। जैसे एज वी लैंड ऑन मून आर women सेफ ऑन लैंड। मुझे नहीं लगता मून में लैंड करने से women सेफ्टी का कोई संबंध है। ये एक बहुत लंबा एक खींचा ताना गया है जिसका कोई मतलब नहीं है। With due respect to everybody who has designed this program, शायद बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बोला है, लेकिन सच ये है कि हम मून में लैंड किए हैं। ये बहुत 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 खुशी की बात है। इसको लेकर हम पूरे भारतवासी को गर्व होना चाहिए और हो भी रहा है। और हाँ, ये दुख भी है, ये दुख भी साथ है कि महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं हैं। बहुत सारी बातें हम लोग कहते हैं जो कॉमनली कहते हैं, पेट्रियार्किक सोसाइटी है कि नहीं। अच्छा बताइए जरा बेटे लोग, आप लोग तो बच्चे बच्चे हो, यंग जनरेशन, आप लोगों में से मुझे थोड़ा थोड़ा, माइक तो है नहीं, आप लोग के गले में बहुत दम है, चिल्ला के बोल देना। किसी को आंसर करने का मन है तो करिए ना। किसने, कोई एक भी बता दो, अपने माँ के, अपने घर में, अपने माँ के जिंदगी में क्या कंट्रीब्यूट किए हैं? हाउ हैव यू कंट्रीब्यूट समथिंग इन योर मदर्स लाइफ? एनी ऑफ यू? आप में से किस किस को पता है कि अपनी माँ की मोस्ट फेवरेट फूड क्या है? क्या मैं हाथ उठा देना, मुझे अच्छा लगेगा जान के जे आजकल के बच्चे इतने कॉन्शियस है, केयरफुल है। वेरी गुड, वेरी गुड। कितने लोग अपने पापा जब चिल्लाते हैं तो उनके गुस्से को समझने की कोशिश करते हैं? हाँ, ये देखिए, इक्वलिटी ऐसी कोई चीज नहीं है जो खाते पे लिख के रट रट के तैयार किया जाता है। अगर हमारे देश में मोलेस्टेशन हो रहा है, आज भी हो रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है, सालों से होता है। केसेस बड़े नहीं हैं, ये सोचना पड़ेगा, केसेस रिपोर्टिंग बड़े हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है समाज के लिए, जो समाज आगे आ रहे हैं, महिला आ रहे हैं, पुरुष आ रहे हैं। ये समाज में अगर हमको एकत्रित रहना है, सबके साथ रहना है, मिल के रहना है, सबका भलाई सोचना है, चाहे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो भी क्यों ना हो, सबका हाथ थामने की कोशिश करना पड़ेगा जब तक वो चोर ना निकले। बस चोर वोर का हाथ नहीं थमना, गलत इससे, बस ये मेरा मानना है। आपका निजी मन हो सकता है कुछ भी। देखिए, देश हमारा ही तो है, आप ही से तो बना है, हम ही से तो बना है, हमारे दादाजी से बने हैं, हमारे मौसी जी से बने हैं कि नहीं? और नेता कौन बनते हैं?
जनता से ही तो नेता बनते हैं। तो किसी को कोसने से पहले हम सबसे अच्छा कोशिश करेंगे अपने आप में क्या क्या हम सुधार लाएंगे। ये मंच मैं सच बता रही हूँ कि कोई पुरुष के गला घोटने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बता देती हूँ जहाँ आपको पता चलेगा कि कहाँ से ये सब हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। करने की कोशिश बहुत कठिन तरीके से जारी है, हर एक राज्य कर रहा है। देश आईन बनाता है, लेकिन ये सारे लॉज जो है ज्यादातर अलग अलग राज्य इंप्लीमेंट करते हैं। आप लोग बहुत पढ़े लिखे बच्चे हो, मेरा तो भाग्य नहीं था इतने अच्छे स्कूल कॉलेज में जाने की, तो मैं बस इतना ही बोल सकती हूँ कि ये कोशिश जो है सभी कर रहे हैं, कोई कम कोई ज्यादा। अच्छा एक चीज आप बता दो, मैं खुले में बात करूं, आप सब बच्चे बड़े हो गए हो, घर में जाके अगर कोई माँ पिताजी आपके बहुत अच्छे दोस्त है, पूछ सकोगे जाके, अच्छा आप लोगों के जमाने में पोर्नोग्राफी की किताब या बुकलेट 4 पेज के 3 पेज के आते थे, आज ऑडियो विजुअल के माध्यम में पूरे स्टोरी बनते हैं। सो ह्यूमन लाइफ के अंदर ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हमेशा रहेगा, इसको कंट्रोल करने का एक प्रैक्टिस है। अच्छा रहना, अच्छा खाना, शुभ शुभ बोलना, अच्छी बात करना, अच्छा सोचना, ये एक प्रैक्टिस है। ये सब लोग पैदाइश का जन्म नहीं करता। मैं अपनी मेरे बात पे आती हूं। मैं शुरू में यही कहने वाली थी, आप लोगों को कुछ पहले ही ये ऑडियो विजुअल देखकर मैं सब भूल गई। आप लोगों को ना मेरी बात सुनने से पहले सोचना पड़ेगा, मैं एक अति साधारण इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आने वाली एक लड़की बच्ची थी जिसको कभी 2 वक्त का खाना नहीं मिलता था। ऐसा कई दिन हमारे गए जहां हमको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता था, पिता माता के छत पे घर नहीं था। हम लोग बांग्लादेश से आए हुए थे, पार्टीशन का। उसके बाद मेरे पिताजी आए थे और मेरा यही जन्म हुआ। तो जिंदगी कठिन से कठिन होता है, लेकिन जो कठिनाई से लड़ने के लिए हिम्मत रखते हैं वो जरूर कुछ ना कुछ सुधार करते हैं। और ये आपके छात्र संसद परिषद के ये एक कागज पे सबसे पहले लिखा हुआ है, गांधी जी का एक भाषण, एक बात, बी द चेंज यू विश टू सी। आप ही तो जनरेशन हो, इस जनरेशन में आप ही तो सुधारोगे, हर चीज करोगे, हर चीज करोगे आप बच्चे। जिस दिन विमेन सेफ्टी लेकर यहां पे इस प्रोग्राम में 5 बच्ची और 1 लड़का, छोटा बच्चा, इस बदल जाएगा। 6 लड़के होंगे, 1 लड़की होगी। उस दिन आप समझ जाना विमेन सेफ्टी का इश्यू खत्म हो गया इस देश में। ये करना पड़ेगा, लड़कों को ही बोलना पड़ेगा, ये लड़कियों का विषय नहीं है, ये पिताजियों का विषय है। हाँ, ये देश ऐसा था 10 साल पहले भी, 15 साल पहले भी, बदल रहा है हमारा देश। एक जमाना था सिर्फ न्यूज़पेपर के ऊपर हमको भरोसा करना पड़ता था, एक कागज का पन्ना ऐसे खोलते थे, देखते थे, कुछ नहीं जानते थे। आज हमारे देश में 400 सिर्फ न्यूज चैनल है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि छोटे छोटे घटना, बड़े बड़े दूर दूर के गांव से, छोटे छोटे गांव से बड़े बड़े घटनाओं का ऐसा हम लोग इकट्ठा कर पा रहे हैं जो हमको सुधारने का मौका दे रहा है, हमको राह दिखा रहा है कि इस राह पे चले और नए नए लॉ बनाए। जब पॉस्को लॉ बन रहा था मैं वहां पे उपस्थित थी, मुझे लग रहा था, मैं याद कर रही थी,
हाँ, एक समय था जब घर में बड़े बुजुर्ग बच्चों को फॉडल करते थे। आज करने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि उस जमाने में बच्चियों की माँ बाप चुप रहते थे। आज बच्चियों की गुड टच, बैड टच सिखाया जा रहा है। कितने सारे लोग बच्चों को भी, इवन द लिटिल बॉयज ऑल्सो, गुड टच, बैड टच। आप सब ये सब करो, आप ही तो भविष्य हो। कौन संभालेगा देश को? हम बुढ़े लोग? हम नहीं। ये प्रोफेसर्स, ये साइंटिस्ट, ये सीनियर टीचर्स और ये हमारे आज के नए जनरेशन की स्टूडेंट्स, आप लोग संभालो हमको, आप लोग हमको राह दिखाओ। ये देश के पर प्यार, विश्वास जो भी हो, पॉलिटिकल विश्वास के साथ देश को जोड़ो मत। देश देश है, पॉलिटिकल विश्वास अलग है, पसंद अलग है, लेकिन देश सर्वोपरि है। देश प्रथम है, देश हमारी माँ है। भारत माता की जय। Thank you very much. A big round of applause, my friends, for Madam Rupa Ganguly for sharing her views from the stage of 13th Bharatiya Chhatra Sansad. Thank you very much, Madam, for your views. My friends, it's now time when I invite the next eminent speaker, the Honorable Member of Parliament of Rajya Sabha from NCP Maharashtra, Dr. Fauzia Khanji. But before I invite her to address the gathering, I request my technical team to kindly relay a small film. Dr. Fauzia Khan, an esteemed member of Parliament representing Maharashtra in the Rajya Sabha for Nationalist Congress Party, NCP. She holds key leadership positions within the party, currently serving as the National President of the NCP's Women's Wing. She has played pivotal roles in Maharashtra's state government. Dr. Khan's academic journey includes earning her BA, MA English, MPhil, PG CTE and PhD from Marathwada University, Aurangabad and the Central Institute of English and Foreign Languages, Hyderabad. With a commitment to education, she has served as the former Minister of State for General Administration Department, Education, Health and Women and Child Development in the Government of Maharashtra. Initiating her political career with a successful election for the position of President of Parbhani Municipal Council, Dr. Fauzia Khan has since become a two-time member of the Maharashtra Legislative Council. Beyond her political engagements, she leads the Federation of All Maharashtra Minority Education Organization, showcasing her dedication to educational initiatives. Dr. Khan's philanthropic endeavors include a significant donation of 5 acres of land for the development of an off-campus educational complex by Maulana Azad National Urdu University in Aurangabad. Let's recognize and appreciate Dr. Fauzia Khan's multifaceted contributions to politics, education, and community development. My friends, please put your hands together and welcome with a round of applause Dr. Fauzia Khanji. Before I begin speaking, I must appreciate with my full heart the beautiful program that is organized here. This Chhatra Sansad एक बहुत अमेजिंग प्रोग्राम है और मुझे लगता है वन ऑफ इट्स काइंड है इस देश में। तो जो स्टूडेंट्स को यहाँ सुना तो उससे सबूत है इस बात का कि वी आर रियली गोइंग अहेड फाइन। As far as this topic is concerned,
As we land on moon, are women safe on land? This topic gives me two things to think about. One is that this is not limited to my country. Both landing on the moon and safety of women are global issues. It also brings to my mind the evolution of human civilization, because both are related to this evolution of human civilization. How far we have been civilized, how much civilized we are. When we talk about human civilization, I can say, everybody can vouch for it, that we have advanced to a very great level. We are a very, very extremely advanced civilization. But what does the evolution of civilization mean? इस evolution का advancement का मतलब क्या है? इससे ये title relevant बन जाता है. Because on the one side, we have advanced to a level that we are walking on the moon. 12 people, it is said, have walked on the moon so far, but not a woman. And at the same time, there are several issues which we as civilized human beings should have tackled them, are still not tackled. So there are two extremes here. I think evolution means making governance structures, making laws, making proper civilized social structures, having a highly developed culture, and at the same time development of technology, language, etc. All these parameters make civilization. It is not just advancement in the technological or scientific field, but globally this is attributed to technological advancement. We associate it with advancement of civilization. Advancement today, as far as technology is concerned, as far as science is concerned, bewildering, rapid, इतनी तेज रफ्तार से हम आज आगे बढ़ रहे हैं कि अगला लम्हा हमको नहीं पता है कि हमें किस तरह से डील करना है. इतना स्पीडी हमारा एडवांसमेंट है. आप अपनी पूरी जिंदगी देख लीजिए, खाना पीना, आपके कपड़े, घर बैठे आपको कपड़े पहुंच जाते हैं, घर बैठे आप खाना मंगा सकते हैं. आप एविएशन सेक्टर में इतना डेवलपमेंट है, आप कुछ घंटों में यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, आप एक जादू देख रहे हैं. इट इज़ बिविल्डरिंग, बट एट द सेम टाइम all countries, many countries of this world are in a mad race for space exploration as well. अलग-अलग countries ये सोचते हैं कि हम space explore कितना कर रहे हैं. ये countries का काम है. Exploration is the field of countries. But what is significant in this era is that even private players have come in the space of, in the arena of space innovation today. And that is a big difference maker, because it is now going to impact our lives in a tremendous way. All human lives are going to be impacted. तो ये सवाल अगर पूछा जाता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए पैसा खर्च करना चाहिए या वो फंड महिलाओं की सुरक्षा के लिए रखना चाहिए, अगर ये सोच होती है तो आई थिंक वो सोच ठीक नहीं है. बिकॉज अगर हम पूछते हैं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन रियली वर्थ इट है क्या, तो मैं सोचती हूँ कि जितना सोशल इनइक्वालिटीज, इनजस्टिसेस, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को डील करना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड स्पेस इनोवेशन इम्पॉर्टेंट है. इट कैनॉट बी अंडरमाइंड.
Because in order to solve our problems on Earth, space exploration can help us even in that. First of all, space exploration is not as expensive as we believe. क्योंकि नासा का भी जो बजट है वो उनके पूरे यूएस बजट के सिर्फ 0.5% है, तो पैसे का कोई सवाल नहीं है यहाँ। और दूसरी बात ये है कि स्पेस टेक्नोलॉजी से हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमीज पर पॉजिटिवली होता है, क्योंकि स्किल जॉब्स क्रिएट होते हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ती है और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ते हैं. सो ऑल दिस इज देयर, सो दैट आर्गुमेंट आई थिंक इज नॉट राइट. If you want to figure out on the earth how you should grow food in very, very difficult areas, when you try to study how to grow food on Mars, this is going to help us. So science की study तो help करेगी ही जिंदगी में, लेकिन while reaching out for the skies, we cannot ignore the earth that we live in. And I'm not wrong if I say that the outcome of all human progress is increased connectivity today. आज हम लोग इतने connected हो गए हैं कि it is now called a global village. और जब हम इतने connected होते हैं तो countries के governments का क्या काम है? They are obligated to protect the world. जब मून को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमको अपने विमेन की सेफ्टी के बारे में भी सोचना चाहिए. एक बहुत अच्छा कोट है राल्फ वाल्डो इमर्सन का. He has said, what lies behind us, what lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us. So what lies within us is very, very important when we think about human civilization. ऐसा civilization जहाँ global level पर almost 736 million women violence face कर रहे हैं. क्या ऐसा समाज civilized कहा जा सकता है? इवॉल्व्ड कहा जा सकता है? किस तरह से इवॉल्व्ड है ये समाज? मैं नहीं मानती कि जहां पर लड़की को पेट में मार दिया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, फोर्स्ड मैरिजेस होते हैं, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी साइबर क्राइम होता है. बहुत सारे लोगों ने यहाँ फिगर्स बताए हैं एनसीआरबी के कि क्राइम अगेंस्ट विमेन कितना तेजी से बढ़ रहा है. रजिस्ट्रेशन इज वन थिंग बट क्राइम भी बढ़ रहा है. और इसलिए एवरी हाउसहोल्ड हैज अ प्रॉब्लम ऑफ विमेन विक्टिमाइजेशन. बहुत कम घर ऐसे होंगे जहां विमेन सेफ है. एट द एंड आई विल ओनली से, when I am speaking about civilization, for me, evolution means वो समाज जिसमें justice है, a just society. वो समाज की तरफ हमको evolve होना पड़ेगा. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, a just society is that society in which an ascending sense of reverence and a descending sense of contempt is dissolved into a creation of a compassionate society. Just before I end, मैं अफ्रीका का एक एग्जाम्पल दूंगी कि अफ्रीका में एक ट्राइब थी, आपने देखा सुना भी होगा, उबुंटू ट्राइब. उबुंटू ट्राइब की एक दिन रेस लगाई गई. एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने रेस लगाई. उन्होंने स्वीट्स रखा एक बास्केट में और कहा, बच्चों अभी आप में से जो फास्ट दौड़ के आएगा और पहुंचेगा उसको ये बास्केट ऑफ स्वीट्स मिल जाएगी. वो ट्राइबल बच्चों ने, वो अफ्रीकन बच्चों ने क्या किया? उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और सब एक साथ दौड़े और सब एक साथ पहुंचे और बास्केट ली जो उनको मिल गई थी एज प्राइज,
और अब सब में बांट दिया। लोगों ने पूछा आपने ऐसा क्यों किया, बच्चों ऐसा क्यों किया? तो बच्चों ने कहा उबुंटू। उबुंटू मीन्स how can one be happy when the others are sad? How can one be happy when others are sad? This is the society which we need to evolve into. This is a civilized society where we care for the others. और अगर ऐसी society हम बना सकते हैं through education, through awareness, through lots of interventions, through spending of money by the government, I think we will have an ideal society and then we can call ourselves civilized. आपको मैं ये introspect करने के लिए छोड़ रही हूँ। अपने आप से पूछो, are we really civilized? Can we call ourselves civilized? या जो primitive इंसान था, वही instincts अब आज हम में भी है। अगर ऐसा है, तो हमें अपने आप को बदलना चाहिए, not only through technology, not only through infrastructure, but from inside as human beings. We need to change ourselves, and I'll repeat the same thing which Gandhiji has said, be the change that you wish to see in this world. So let's be the change. Thank you. Thank you very much, Dr. Fauzia Khanji. Thank you very much for addressing the gathering, and I would now like to request the dignitaries to kindly come forward for addressing the questions of our students. My friends, it's time when I invite the student leaders to ask the questions. I have received a couple of questions. I would be inviting you. Meanwhile, the guests are getting ready to answer the questions. Let me quickly remind you that the next session, which is the valedictory session of 13th Bharatiya Chhatra Sansad, is going to witness some of the tall personalities of our nation. We are going to witness the presence of President of Lok Satta Movement, Dr. Jai Prakash Narayanji. We are going to have the presence of His Holiness Swami Dr. Gyan Vatsal Das Ji. And of course, the chief guest of the valedictory session is going to be Shri Shivraj Singh Chauhan Ji, the former Chief Minister of the state of Madhya Pradesh and Honorable Member of Legislative Assembly of Madhya Pradesh. So it's going to be my humble request to all of you that let us come together and make the valedictory session of 13th Bharatiya Chhatra Sansad a grand success. I can now see the dignitaries are ready for answering the questions. It's a sincere request to all the dignitaries. May I have your attention? Dignitaries, it's a request to you to give as small answer as possible so that I'll be able to take many questions. So Chota Sawal, Chota Jawab is going to be the key of this session. The first question is coming to us from Jignesh Guzar, who comes from Mumbai. The right-hand side podium. Jignesh, please go ahead. Straight to your question, please. My question is, how can we use technology and social media to raise awareness and prevent violence against women in India? Okay, thank you, Jignesh. I think the question is for Rupa ji. The question is how we can use technology and social media to raise the awareness and prevent violence against women in India. How social media can be used for the same. सोशल मीडिया बड़े काम की चीज़ है, बस उसको इस्तेमाल करना ज़रूरी है, उसको इस्तेमाल करना जानना ज़रूरी है. By your search algorithm के अनुसार आप जो सर्च करते जाएंगे वही आएगा. सो आप जो पोस्ट करोगे वही वर्ड्स सिलेक्ट कर करके आप ही के साथ आएगा. True. तो इसका एक जवाब है, एक आइडिया है, जो बीच बीच में आप कुछ पोस्ट ना करो. ये तो बहुत गलत लग रहा है सुनने में, लोगों को लगेगा यार आज के दिन में कोई बोल सकता है सोशल मीडिया से दूर रहो. थोड़ा थोड़ा दूर रहो और बीच बीच में आप अलग अलग चीज को सर्च करो. आपको पता चलेगा कि देश दुनिया में अच्छे भले बुरे अलग अलग चीज है. सो आप उनमें से चूज करो. True. जो आपको पसंद है वो चूज करो. True. Thank you very much for that answer. The next question is coming for Advocate Abha Singh ji, and the next question would be asked by Manasi Kale. Manasi, are you there? Please go ahead.
Ask your question, Manasi. My question is, the Supreme Court ruled that political parties are not entitled to have posh committee. Then how can we have better working of women in politics? Okay. Okay, the question I repeat. Supreme Court has ruled that political parties are not entitled to have posh committees. So how can we have better working environment for women in politics? Parties are not? Political parties are not entitled, not mandated to have a posh committee working inside the party. You know, a posh committee, that's very relevant because as per the Sexual Harassment at Workplace Act 2013, any organization which has more than 50 people must have an internal complaints committee. So nothing stops you. You are a bright young student, go back to the Supreme Court. जब criminals जो है judgment के बाद curative petition, review petition डालते हैं, तो what stops you? That's why I said question, ask. And let me tell you, I had filed a PIL in Bombay High Court that was pertaining to the termination of an internal complaints committee chairman of a blue chip corporate company. And at that time, Justice Dipankar Gupta said that this power is with the Supreme Court. And I have gone back to the Supreme Court to say that the ICC committees in the private sector need to be strengthened because private sector has the hire and fire rule. If the ICC chairman gives a judgment against their own boss, 100% be sure that you will lose your job. So now we are asking that the internal complaints committee should be controlled or monitored by the local complaints committee headed by the collector. So your question was only pertaining to Supreme Court saying, but my question is, my reply is that anything pertaining to the POSH committee, Supreme Court has full rights to debate about it, hear it and give an order. Feel free to go back, and since my PIL is already there in Supreme Court, if you want to come and join us, most welcome. Thank you very much. So next question is coming for Dr. Fauzia Khan, madam. I think the question is coming from our right-hand side podium, Maruti Abitwar. Please ask a question. Go ahead. Yes, sir. Honorable dignitaries, ma'am. My question is, what are your views on incorporating menstrual use for creating a more gender-inclusive environment for women at workplace? Okay. So his question is, madam, what are your views on incorporating menstrual leaves for women for bringing inclusivity and betterment of life of women at workplace? Menstrual leave. Well, all this comes as part of a policy. Policy for women, which was first initiated by Honorable Sharat Chandraji Pawar in Maharashtra in 1994. This was one of the first states who brought in the women's policy in Maharashtra, which was later accepted as the national policy. So I can call Sharat Pawarji as the Ram Mohan Roy of present times. As part of this policy, women should be privileged in different sectors. Right. There should be different laws for women. There should be different policies made for women. In every field, there should be gender budgeting for women. When we come to menstrual leave, I think it's a very, very small and insignificant matter as part of this wholesome policy. True. And as a woman, I will say that if we want equality, we cannot keep demanding leaves for every small thing. Menstruation is a very normal phenomena, and unless there is a very special reason, health reason, I don't think it can be a matter of privilege across everything else. Thank you very much. Thank you very much for putting your views right in front of us. The next question is coming for Dr. Tessie Thomas, and the question is coming from our left-hand side podium. Astha Deshmukh, who comes from Akola, would be asking the question. Please go ahead, Astha. वर्तमान समय में AI टूल्स के जरिए महिलाओं के डीप फेक अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, तो इन फेक्स बचने के लिए आप क्या उपाय बता सकते हैं? Okay.
Yeah, AI, it's like a double-edged weapon. Like it can be used for the good as well as for the bad. So once we have seen things are coming out, deep fake images, where we see is more often, like as Srimati Rupaji mentioned, sometimes we have to withdraw ourselves from the social media. Like how much you give into it, that is the way you get the return. Or so you have to understand the world where you are prone to get provoked, and learn the good part of the science. That's why cultural change has to happen within the country. There are means to catch the people. It's not that people who have done this wrong things are not caught today. They have been caught, so they have to be given real punishable conditions. They need to be punished, then the crime will come down. It's a part of a learning curve, we can say. So be alert and don't get into the wrong part of the science. AI is for better use. So we should, and if any crime happens against you, please report it and catch the person who is doing it, so that we can do justice and it doesn't get repeated. That's the way we should take it. Thank you very much, dignitaries, for answering all the questions of young men and women sitting in front of you. My friends, it's now time that I'm going to request. Sure. The last question for Ms. Tessie. I'll tell you one thing, where we go wrong. We post on social media or Instagram or everywhere, all these medias, every small little thing we do. Whether we are going on a holiday, there was a committee, a special ad hoc committee made in the parliament with all the different political leaders. There we had come to a conclusion that the more you put different kind of photographs, then it becomes very easy to manipulate a person's image and structure. True. छुट्टी है तो दे दिया, घर खाली है तो दे दिया फोटो. मतलब हर चीज का हम इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया में दे के हम अपने लिए खतरा बना रहे हैं. True. Thank you very much, madam. Thank you very much for answering that question. And my friends, it's now time when I'm going to request all of you to take out your mobile phones. All the dignitaries on the dais also are requested to take out their mobile phones, and the students also, as we are going to vote on the resolution which is on the screen. I request all of you to scan the QR code and vote for the resolution. The 13th Bharatiya Chhatra Sansad appeals to the union and state for the commitment to prioritize women's safety, foster secure environment, combat gender-based violence, and promote empowerment with an aim to create a world where women feel safe and thrive to fullest potential. I'm sure you all are ready with your mobile phones to vote on the resolution. Please vote faster, the time is running out. Your time is getting over, my friends. 5, 4, 3, 2, 1, and 0. The time is over. I request my team to show us the results of the resolution. Let's see what you have voted for. Okay, the resolution passes with 98% people voting for the resolution. A big round of applause, my friends. These are your votes.
And on this momentous occasion, I request all the dignitaries to please stand with the Bharatiya Chhatra Sansad brochure in your hands so that we can capture a beautiful photograph. My friends, let me quickly remind you, there's a blood donation camp happening on campus on the occasion of National Youth Day. I request the team to display. All of you are requested to participate in blood donation camp as well. Please note that the next session is going to start on time. You all are requested to report at 2:30 p.m. sharp. I repeat, all are requested to report at 2:30 p.m. sharp, as we are going to have the chief guest of the valedictory session, former Chief Minister of the state of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chauhan ji. Make sure that you all reach the venue at 2:30 p.m. sharp. Thank you all the dignitaries for participating in this session. अपनी आँख का तारा तन मन धन से भी है प्यारा लोकतंत्र है इसकी गरिमा इसका रक्षण ध्येय। Thank you very much, my friends. Please note that you all have to report at 2:30 p.m. sharp. Kindly participate in the blood donation drive that is happening till 4 p.m. today on campus. My friends, please make sure that you all assemble here at 2:30 p.m. sharp, as we are going to have Dr. Jai Prakash Narayan ji, His Holiness Swami Dr. Gyanvatsal Das ji, and UNESCO Chairholder Revered Professor Dr. Vishwanath Karad sir, along with the chief guest of the session, Shri Shivraj Singh Chauhan ji, the former Chief Minister of the state of Madhya Pradesh, Honorable Member of Legislative Assembly of Madhya Pradesh. I request all of you to be sharp on time and report at 2:30 p.m. Thank you very much. See you across the break at 2:30 p.m. sharp. जवा उमंगे जवा है धड़कन युवा शक्ति। कुछ बात करेंगे मिलजुल कर अब काम करेंगे आओ अब कुछ बात करेंगे मिलजुल कर अब काम करेंगे तब जाकर कुछ बात बनेगी जनहित की शुरुआत बनेगी भारतीय छात्र संसद भारतीय छात्र संसद भारतीय छात्र संसद
भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। लोकतंत्र है इसकी गरिमा, इसका रक्षण ध्येय हमारा। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर नारा नारा। सनी पम गम पनि सा नि सा ग म ग सा नि पनि सा ग म ग नि सा पा म ग सा सा नि सा सा नि सा ग ग रि ग म ग रि ग रि ध रि ध नि सा नि प नि ध रि ध नि सा ग ग रि ध रि म म ग रि ग प प म ग म ग रि ग म ग म सा ग नि सा प नि म प ग सा ग म प ग म प नि सा ग म ग म। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जो भी कमी है हम भर देंगे, जो न हुआ है हम कर देंगे। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। ना ना चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। ये निश्चय है ना के सपना, शान विश्व की भारत अपना। भारतीय छात्र संसद, 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 भारतीय छात्र संसद।
The dignitaries are lighting the traditional lamp which will mark the beginning of the valedictory session. A big round of applause, my friends. The lamp is being lit at the hands of all the dignitaries along with the chief guest of this session, Shri Shivraj Singh Chauhan ji. It is indeed let's give a big round of applause, my friends. This is for the final time from the stage of 13th Bharatiya Chhatra Sansad. All the dignitaries are offering the great noble son of India, Swami Vivekananda ji. All the dignitaries, Pujya Dr. Gyanvatsal Swami ji is offering his respects to the great noble son of India. What a spectacular moment where all the dignitaries are joining hands in front of the great noble son of India, Swami Vivekananda ji. Today as we celebrate the National Youth Day on the birth anniversary of this great noble son of India, I would now like to request all the dignitaries to kindly accept the chairs. Bharatiya Chhatra Sansad, Bharatiya Chhatra Sansad, Bharatiya Chhatra Sansad, Bharatiya Chhatra Sansad, Bharatiya Chhatra Sansad. My friends, dear student leaders, all the dignitaries on the dais, off the dais, I would like to welcome all of you for the valedictory ceremony of the 13th Bharatiya Chhatra Sansad. Today, indeed, we have very tall personalities on stage as we begin with this valedictory session. I'm really humbled to tell all of you that this platform of Bharatiya Chhatra Sansad has established its credibility not only in India, but across the globe, with support and encouragement flowing from all over the world. Many important democratic organizations of the global governance have termed Bharatiya Chhatra Sansad as an exceptional model for the entire world. I'm sure all the student leaders, those who have participated in this 13th Bharatiya Chhatra Sansad, would have been motivated and would embark upon the journey towards strengthening the democracy of our nation. And now it's time when in this valedictory session, I would like to request all the dignitaries on the dais and everyone off the dais to rise in your seats for national song Vande Mataram, followed by the World Peace Prayer. I request everyone to rise in your seats for national song Vande Mataram. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam, Sufalam, Malayaj Sheetalam, Shasya Shamalam Mataram, Vande Mataram. Shubhra-jyosna pulakitayaminim Pulla-kusumita drumadala-shobhinim Suhasinim Sumadhura-bhashinim
वरदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्. Thank you. I would like to request everyone to please fold their hands. Please rise in your seats. Fold your hands. Close your eyes as I'm going to request you to participate in a prayer that does not talk about any caste, creed, religion, or any section of society. This is a prayer which purely talks about the well-being of entire humanity. We call this prayer as World Peace Prayer. I request all of you to close your eyes, bring the image of your mother, father, your deity in front of your eyes, and wholeheartedly participate in World Peace Prayer. ॐ नमो जीयाद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा देवा तूचि गणेषु सकलार्थमतिप्रकाशु म्हणे निवृत्तिदासु अवधारि गोजी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Thank you very much. My friends, for last 3 days, all the student leaders from every corner of the country are experiencing some of the great and motivating speeches from this platform. I'm really happy when some of the volunteers, some of the student leaders met me and they told me that we have made new friends, those probably who are going to stay with us for a lifetime. And these friends give us strength to do some better work for our country. These actually hinted me to share 2 lines with all of you. थे हजारों दुख तो वैसे जीवन में उनके, थे हजारों दुख तो वैसे जीवन में उनके, बट पर राम को था हौसला कि लक्ष्मण साथ है मेरे. It is indeed such a bonding that all the student leaders would be taking away from the stage of 13th Bharatiya Chhatra Sansad and would be joining hands for strengthening the democracy of our country. Now, in this valedictory session, I would like to request the Honorable Vice Chancellor of MIT World Peace University, Professor Dr. R.M. Chitnisji, to kindly propose the welcome address. Please put your hands together and welcome with a round of applause the Honorable Vice Chancellor of MIT World Peace University, Dr. R.M. Chitnisji. Good afternoon and namaskar to all of you. This is a wonderful, wonderful moment. After 3 days of vibrant, energetic speeches by distinguished speakers, we have to come to this concluding part of valedictory session
of 13th edition of Bharatiya Chhatra Sansad. May I, on behalf of our founder president and UNESCO chairholder for Human Rights, Democracy and Peace, revered Professor Dr. Vishwanath Karad sir, the Executive President of MIT Group of Institutions, Honorable Shri Rahul Vishwanath Karad sir, on behalf of all the trustee members, behalf of faculty members, on behalf of staff members, and dear students, on your behalf, let me extend a very warm welcome to all the guests of honor in this culminating session of the grand festival of democracy, a grand festival of youth leadership for you. Cordial welcome to Honorable Shri Shivraj Singh Chauhan ji, former Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Jaiprakash Narayan ji, former IAS officer and founder of Lok Satta Party, and His Holiness Swami Gyanavatsal ji, senior monk of the BAPS Swami Narayan Sanstha and Akshardham Mandir. We are honored to have all of you to grace this valedictory session of 13th Bharatiya Chhatra Sansad. Dear students, last 3 days were full of motivating speeches on socially relevant as well as academically important contemporary topics which are associated with our day-to-day lives. They talked of actual existence of women empowerment, caste census dilemma in our country, the power of folk culture in today's world, how social media and artificial intelligence is impacting our lives. So you can see the wide variety of topics you have gone through, which were particularly chosen to address the issues which are actually bothering you today as a youth of India. The student speakers coming from different states across India, gave energetic speeches motivated by a fire in their belly and passion in their heart, which displayed immense pride for the country and concerns for its citizens. And that exactly, my friend, is the objective of Bharatiya Chhatra Sansad, to hone and nurture the leadership of qualities in the young and restless minds of those who are really concerned about nation building new modern Bharat. Our last 13 years, Bharatiya Chhatra Sansad has successfully ignited lack of young minds to think, observe, to understand social issues in the perspective of leaders, and then ask questions and raise issues to resolve societal problems. As we all know, the seed thought of this unique initiative was conceptualized and brought in existence by our dynamic and prolific and extremely nationalistic leader, Executive President Shri Rahul Vishwanath Karad sir, who has been advocating the patriotic thought of calling our nation as a Bharat and naming our Independence Day as a National Day of Bharat. With those visionary thoughts of toiling efforts of last 12 years, BCS has now become a moment of democracy in India, youth leadership. So it is our collective duty to keep the fire and momentum grow stronger and make this movement a nationwide storm for everybody to take a note of. On this note, before I conclude today being the auspicious day of Swami Vivekananda Jayanti, which we all celebrate as a National Youth Day, I would like to recite few lines for you, dear students, in Hindi. The lines goes like this: हारना तब आवश्यक होता है दोस्तों, हारना तब आवश्यक होता है दोस्तों जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक होता है दोस्तों जब लड़ाई अपने आप से हो। मंजिलें मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिलें मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है दोस्तों, पर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है दोस्तों। चलो हम सब मिलकर काम करें, तो चलो हम सब मिलकर काम करें, कुछ अच्छा कुछ भव्य निर्माण करें। जन युवा शक्ति, जय भारतीय छात्र संसद,
Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. Thank you, dear students. Thank you. Thank you very much, Honorable Vice Chancellor, sir, for proposing the welcome address. And now, in this valedictory session, I would like to request the founder of Bharatiya Chhatra Sansad, Shri Rahul V. Karat, sir, to kindly felicitate and welcome the dignitaries on the dais. First and foremost, I would like to request sir to kindly felicitate and welcome the chief guest of this session, the former Chief Minister of the state of Madhya Pradesh and Honorable Member of Legislative Assembly of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chauhan ji. I request Shri Rahul V. Karat sir to kindly felicitate and welcome Shri Shivraj Singh Chauhan ji, the chief guest of this valedictory session. Please put your hands together, my friends, and welcome with a big round of applause Shri Shivraj Singh Chauhan ji. A big round of applause should continue. He's being honored with the Puneri Pagdi on the platform of 13th Bharatiya Chhatra Sansad. I would also like to request sir to kindly felicitate and welcome Pujya Dr. Gyanvatsal Swamiji, life coach and eminent speaker of BAPS Swaminarayan Sanstha. I would also like to request sir to kindly felicitate and welcome Dr. Jai Prakash Narayan ji, President of Lok Satta Movement, former IS. A big round of applause for Dr. Jai Prakash Narayan ji. Thank you very much. And before we go further, I would now like to request the renowned motivational speaker, Shri Sanjay Upadhyay ji, to kindly address the gathering. सम्माननीय ज्ञानमंच और मेरे दोस्तों, नमस्ते, नमस्ते, और जोर से, भारत माता की। 3 दिन तक ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है भारतीय छात्र संसद का। उसका मकसद क्या है? श्री राहुल कराड़ जी के मन में ध्येय क्या है? 12 साल हो चुके, ये 13वां साल चल रहा है जब हम भारतीय छात्र संसद इस तरह से भारतीय राजनीति में बदलाव लाने के लिए, डेमोक्रेसी को और ताकतवर बनाने के लिए हम आयोजित करते हैं। आज के इस फंक्शन के बाद आप घर जाओगे तो कुछ घर ले जाना है आपके साथ में, टेक अवे चाहिए कुछ। एक बात ध्यान में रखो, आज अगर हम ये देखें कि राजनीति में काम करने वाले जो लीडर्स हैं उनकी औसत उम्र क्या है, एज क्या है, तो ऐसे लगता है 65 से लेकर 70 तक, 75 तक उनकी उम्र है। युवा शक्ति राजनीति में आने के लिए अभी अगर आज 25 साल के हो आप सब लोग, तो अभी से राजनीति में आने की तैयारी करो। उससे क्या होगा, अगले 25 साल आपको अनुभव मिलेगा राजनीति का, और 50 साल के जब हो जाओगे आप सब लोग जो राजनीति में आना चाहते हैं वो अनुभव के साथ राजनीति में काम करेंगे। उससे ये फायदा होगा कि जो अब औसत उम्र है राजनीति वाले लोगों की, नेताओं की, वो और पीछे आ जाएगी, 65 से 75 से लेकर 50 तक आ जाएगी। भारतीय छात्र संसद का जो परिणाम है वो परिणाम 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए नहीं है, ये 25 साल लगेंगे इस भारतीय छात्र संसद का परिणाम होके जो अगली जनरेशन है उस जनरेशन को ये मालूम हो कि अगर राष्ट्र समृद्ध करना है, अगर भारत राष्ट्र को विश्वगुरु बनाना है तो युवा शक्ति का उसमें आना, 25 साल तक अनुभव लेना और फिर 50वीं उम्र के साथ आगे भारत को पूरे विश्व में ले जाना। मैं तो सभी जो उम्र के नेताओं हैं, आज हमारी भाग्य से माननीय शिवराज सिंह चौहान यहाँ उपस्थित है, मैं उनसे भी विनती करता हूँ, भारत के जितने भी नेता हैं उन्होंने अपने जो कार्यकर्ता है उसमें जितने युवा शक्ति आ जाएगी उनके राजनीतिक कार्यों में उतना अनुभव उनका भी बढ़ने वाला है। और ये इतिहास है, इतिहास गवाह है कि हर वक्त यही हुआ है।
विश्वामित्र ऋषि ने राम और लक्ष्मण ये दो विद्यार्थियों को चुना। आगे जाके नाश करना है राक्षसों का, तो राम और लक्ष्मण को साथ में लेके विश्वामित्र जी चले हैं। यही स्थिति द्वापर युग में भी है। सांदीपनी ऋषि ने श्री कृष्ण और बलराम को साथ में लिया है। आर्य चाणक्य विष्णुगुप्त ने किसे लिया? चंद्रगुप्त को अपने साथ में लेके वही बात की, राष्ट्र उद्धार की ही बात की। मेरी यहाँ उपस्थित सभी दोस्तों से विनती है, 3 दिन तक आप यहाँ आते हो, कई बार ऐसे लगता है कि ये राहुल कराड़ जी के मन में जो कल्पना है, उस कल्पना का प्रत्यक्ष आविष्कार आने के लिए आप लोगों को सोचना होगा कि अरे ये सही बात है, ये मैगी नूडल जैसे नहीं होने वाला। और इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप राम लक्ष्मण बनो, आप कृष्ण बलराम बनो, आप चंद्रगुप्त बनो, और आप ढूंढो हमारे लिए चाणक्य कौन है, हमारे लिए सांदीपनी कौन है और हमारे लिए विश्वामित्र कौन है। ये ढूंढो तो अपने आप जो घोषणा हमने भाषण की शुरुआत में की वो प्रत्यक्ष में आ सकती है विश्व गुरु बनने की। यही रुकता हूं मैं। बोलो भारत माता की। धन्यवाद। Thank you very much, Sanjay Upadhyay ji. Thank you very much for sharing that important message with all the student leaders. My friends, as he rightly said, and many a times you have mentioned, that this platform has been the breeding ground for many such platforms. And the pinnacle, the zenith of such activities has been the National Legislators Conference Bharat, which is an avenue for the members of legislative assemblies and members of legislative councils across the nation to gather at one place and exchange ideas in this historic conference. The first edition of NLC Bharat took place in Mumbai from 15 to 17 June 2023. And my friends, for the first time in the history of independent India, more than 2,000 MLAs and MLCs came together to discuss the burning issues of our country. And my friends, I'm really proud to share with you that it has been the hard work, the commitment and vision of Sri Rahul V. Karad sir which made the National Legislators Conference Bharat a reality. Let's give him a big round of applause once again, my friends, for bringing such an important platform into reality. And I request my technical team if it can please relay a small film on National Legislators Conference Bharat. Desire for the welfare of a person, this constitution paves a way for you to achieve your goal. जो आप सभी विधायकों की अपेक्षा थी, एक व्यूज शेयर करना, डाइवर्स व्यूज़ को सुनना और उन्हें जाकर अपने अपने स्टेट्स में इम्प्लीमेंट करना, मैं समझता हूँ ये राहुल कराड़ जी के इनिशिएटिव से निश्चित रूप से पूरी हुई है। मुझे अच्छा लगा जब राहुल जी ने अलग अलग विधायकों ने जो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर
जो नई प्रैक्टिस अपनाई, उनका परिदृश्य, उनकी प्रदर्शनी मैंने देखी। Undoubtedly, India is now being recognized and respected worldwide. These themes of your conference are vital strands of the work to enhance the effectiveness of all democratic legislatures. इस मंच पर की गई चर्चाओं और नए विचारों से जनता की भलाई निश्चित रूप से सुनिश्चित होगी। फॉर द सेकेंड नेशनल लेजिस्लेटिव कॉन्फ्रेंस आप गोवा में आने के लिए तैयार हैं? भैया तैयार है क्या? Whatever was said in India about thousands of years back is now being revealed by the entire world. देश भर से हिस्सा ले रहे विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों अनंत शुभकामनाएं। आपका नरेंद्र मोदी। हमारे मंच के ऊपर सभी विधानसभा के स्पीकर्स बैठे हुए हैं, मैं उनका मन से आभारी हूँ। मैं बहुत इमोशनल भी आज हो गया हूँ कि ये जो कल्पना बहुत 3, 4, 5 साल पहले मैंने बहुत सारे लीडर्स से बात किया था इसके बारे में, ये आज एक मैनिफेस्टेशन, एक इमेजिनेशन इस तरीके से यहाँ पे साकार हुआ। A big round of applause, my friends, for National Legislators Conference Bharat, which came into reality for the first time in the independent history of our country. My friends, it's now time when I invite the person, the creator, the vision, the inspiration, and the motivation behind National Legislators Conference Bharat and Bharatiya Chhatra Sansad. Please put your hands together and welcome with a big round of applause, Shri Rahul V. Karat, sir. The chief initiator of MIT School of Government, the first school of Bharat for political leadership, and founder of NLC, BCS, NTC, NWP, and many such platforms. Janani Janmabhumisha Swargadapi Gariyasi. Thank you, Professor Bapat, for that introduction, and all the students and the audience sitting here, some respected MLAs, for patiently seeing this film of Rashtriya Vidhayak Sammelan. Let me welcome, on behalf of all of you, the bodies of trustees and our beloved founder, Dr. Vishwanath Karad sir, the chief guest of today's program, the former Chief Minister of Madhya Pradesh, respected Shri Shivraj Singh Chauhan Sahab, Mrs. Chauhan sitting in the audience. I also wish to welcome the most respected another senior leader, Shri Jaiprakash Narayan ji from Andhra Pradesh, a party Lok Satta, which is very a disruptive way they have been contributing for the country's democracy. Thank you, Professor Jaiprakash Narayan ji, for your participation. Our Vice Chancellor, Dr. Chitnis, and all other respected members, Professor Sharat Chandra Darade Patil sitting on the dais, the founding dean of MIT Group of Institutions, Professor Sanjay Upadhyay, our Pro-Vice Chancellor, and all the other respected people sitting here, Ullah Zada Pawarji, who is like my family here, and many other members, my dear friends.
What a wonderful evening today. This is a valedictory program of 13th edition of Bharatiya Chhatra Sansad. एक तब पूरा कंप्लीट हुआ 12 साल इस पूरे भारतीय छात्र संसद के प्लेटफॉर्म को। मन में बहुत एक भावना आती है कि कैसे एक छोटी सी जर्नी 2005 में शुरू हुई MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के माध्यम से, जिसके ऊपर लोग हंसे थे कि राजनीति में ऐसे कोई पढ़ लिख के प्रशिक्षण देके कोई संस्था नहीं हो सकती। राजनीति तो ऐसे जनरली हम ग्रास रूट से आके कर सकते हैं। लेकिन मुझे खुशी है बताते हुए कि विद द मॉडर्न टाइम, मैं चौहान साहब के सामने भी ये बोलना चाहता हूँ, उनका बहुत प्रदीर्घ अनुभव है इस पूरे विषय से। बहुत सारे बाकी भी कुछ MLAs यहाँ पे बैठे हुए जो बहुत प्रोसेस से आए हैं, तो आप राजनीति बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन मेरी ये जो भी कोई अभ्यास था इस बारे में, जो भी मेरा एक चिंतन था कि भाई करंट टाइम में, अभी आने वाले समय में हमें प्रशिक्षण राजनीति में बहुत ज़रूरी है। राजनीति के प्रति आस्था, राजनेताओं के प्रति आस्था, पॉलिटिकल पार्टियों के प्रति आस्था, ये बात पिछले 19 सालों से हम बोलते आए हैं कि राजनेता चोर है, पार्टियां भ्रष्ट है। सिनेमा में देखते हैं, जनरल हमारे टॉक्स में हम बात करते हैं, क्रिकेट की बात, पॉलिटिक्स की बात, सिनेमा की बात, ये बहुत आम चर्चा भारत में होती है। और पॉलिटिशियंस के बारे में हमारी मतलब एक सटायर जिस तरीके से कह सकते हैं कि हमेशा राजनेता यानी, तो मैं इसको बहुत बारीकी से, जो भी एक तालीम मुझे हमारे फाउंडर साहब, माय फादर डॉक्टर कराड़, उनसे मुझे मिली कि भाई समाज को हमने किस तरीके से देखना चाहिए, तो उसी का नतीजा है कि 2005 में ये पहला स्कूल राजनीति का प्रशिक्षण देने का पैदा हुआ। और उसी के पेट से भारतीय छात्र संसद का 2011 में मेरी जो उत्कंठा थी कि भाई हम इम्पैक्ट कैसे करें हमारे लोकतंत्र के ऊपर, और एक न्यूट्रल तरीके से एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग आए, सभी आइडियोलॉजीज़ के लोग आए, विचारों के लोग आए, और वो अपनी बात लोकतंत्र के बारे में, नेशनल कंसर्न के बारे में यहाँ पे रखे। और इसको आगे रखते हुए हमने नेशनल वुमेंस पार्लियामेंट जैसा प्लेटफॉर्म हमने शुरुआत किया, नेशनल टीचर कांग्रेस, राष्ट्रीय सरपंच संसद, करीबन 7000 सरपंचों को चौहान साहब हमने अभी तक ट्रेनिंग दिया हमारे इस फाउंडेशन के माध्यम से महाराष्ट्र के, और महाराष्ट्र के बाहर भी जाके सरपंचों को कैपेसिटी बिल्डिंग करने की हमारी मानसिकता है। लोग बहुत सारे, आप कोई भाई गवर्नमेंट का पार्ट तो नहीं, आप ये कैसे ये गवर्नमेंट बोलते हैं और ये कैसे करते, लेकिन मुझे बहुत सारे नेताओं ने ये मुझे समर्थन भी दिया चौहान सर कि सिविल सोसाइटी से ये आवाज़ आगे आना ज़रूरी है। डेमोक्रेसी को अगर मैच्योर होना है तो आपने जो काम हाथ में लिया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी को आगे लेते जाते हुए मैंने सभी विधानसभाओं के साथ, विधानसभा अध्यक्षों के साथ जो नाता भारतीय छात्र संसद और MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के माध्यम से बना, और ये रिलेशनशिप को आगे ले जाते हुए हमने ये भी बोला कि ये सभी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट की शाखाएं, हर विधानसभा की लाइब्रेरी वहाँ पे है, वहाँ के पॉलिटिकली अवेयर ऐसे नेता MLAs भी वहाँ पे है, वो प्रैक्टिकल इंसाइट बच्चों को देने के लिए, सिखाने के लिए आ सकते हैं। और ऐसा भी एक मैंने मॉडल पिछले 5 साल से सभी विधानसभाओं के साथ हम परसू कर रहे हैं कि सभी विधानसभाएं 30 ऐसे लीडरशिप के स्कूल, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट जैसे यहाँ पे पनपा, तो ऐसा एक महत्वपूर्ण ऐसा कि जिसके 6 MLA अभी तक बन गए, लोग जिसके ऊपर हंसे थे 18 साल पहले, और सभी पॉलिटिकल पार्टियों में पद लेके बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग पार्टियों में काम कर रहे हैं। और हमारी अपेक्षा है कि एक चारित्र संपन्न, एक अच्छी पीढ़ी हम आने वाले समय में हमारे लोकतंत्र में हम पेनिट्रेट कैसे करें, तो उसके लिए ये एक तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक इवोल्यूशन, और ये राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन जो कि अभी यहाँ पे फिल्म आपने देखी कि 1780 के लगभग MLAs भारत के पहली बार स्वतंत्रता के बाद इकट्ठा हुए। लोग जहाँ जहाँ पे मैं गया, 22 मुख्यमंत्रियों को मिला, 22 अपोजिशन लीडर्स को मिला, अरे ये कौन बच्चा ये क्या बोल रहा है, सभी पार्टियों को इकट्ठा लाना है, सभी MLAs को इकट्ठा लाना है। लेकिन मुझे लगता है भारतीय छात्र संसद जैसे मुझे सपना लगता था, लेकिन मेरे पिताजी के आशीर्वाद से, हमारे फाउंडर साहब के आशीर्वाद से ये पनपा। और उसी तरीके से मुंबई में पूरे भारत ने विटनेस किया, भारत के सभी, कल यहाँ पे 150 के लगभग MLAs पूरे भारत के आए हुए थे। 3 दिन का कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम उनके लिए यहाँ पे रखा गया था कि इसकी कमिटीज़ हम आगे कैसे बनाएं। और सभी MLAs भारत में यूथ पार्लियामेंट बना सकते हैं क्या? आप इमेजिन करिए कि 4 करोड़ बच्चे 12वीं के बाद के भारत में पढ़ते हैं, और 11-12 के तो उससे भी ज़्यादा बच्चे भारत में पढ़ते हैं। तो अगर सभी MLAs ने भारत में उस तरीके से यूथ पार्लियामेंट के इस तरीके के प्लेटफॉर्म, और जो चेतना यहाँ की जो 2011 से शुरुआत की, तो अभी नेशनल यूथ पार्लियामेंट भारत सरकार ने शुरू किया, उसमें भी हमारा छोटा सा रोल रहा। और बाकी भी बहुत सारी जगह पे यूथ पार्लियामेंट की जो कल्पना अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पे जो हुई, उसकी मूल
कल्पना यहाँ से जन्मी, इसका मुझे समाधान है और एक संतुष्टता भी है कि हम छोटा सा कुछ कर पाए इस पूरे विषय में। मुझे जो बच्चों ने इंस्पायर होकर ऐसे प्लेटफॉर्म खोले उनका भी मैं आज यहाँ पे वैलिडिटी प्रोग्राम में अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज के समय में सोशल मीडिया का समय, और मैं और एक बात देखता हूँ कि एक फुलफिलमेंट की बात बच्चों में भी मुझे कई बार सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा एक इंटरनल फुलफिलमेंट नहीं है। एज ए एजुकेशनिस्ट 70,000 बच्चे चौहान साहब हमारी संस्था में पढ़ते हैं अलग अलग शाखाओं में। तो क्या है डायलेमा, क्या है मन में, मतलब एक ड्यूअल माइंडसेट में देखता हूँ कि एक बहुत अमीरी और ये सब कुछ भी सोशल मीडिया से एक सपने भी है आप सब लोगों के, और एक दूसरी भी कल्पना दिखती है, तो समवेयर कन्फ्यूजन भी है। तो मुझे लगता है वो क्लैरिटी के लिए भी आप सब लोगों को हमें सोचना होगा, और उसी बात का एक मकसद देने के लिए बार बार हम ये बोल रहे हैं कि राजनीति का आध्यात्मिकरण, इवन एजुकेशन सिस्टम में आध्यात्मिकरण का कैसे रोल होना चाहिए, इस बात का पूरा समन्वय होने के लिए आदरणीय विश्वनाथ कराड़ सर ने पूरे विश्व में एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन को वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, ऐसा नाम अभी कभी सुना है आपने? पूरे विश्व में किसी विद्यापीठ को वर्ल्ड पीस का नाम देना, जो स्वामी विवेकानंद जी का जो वाक्य था कि विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय ही विश्व शांति ला सकता है। तो ये स्पिरिट जो है ये आप लोगों में किस तरीके से इम्बाइब करें, इसीलिए पीस का सिलेबस भी यहाँ पे इस संस्था में दिया जाता है। जो छात्र पूरे भारत से अलग अलग राज्यों से रजिस्टर करके आए उनके लिए मैं आपको बताऊं, और एक बहुत अच्छा हमारा प्रयास है कि जो पीढ़ी यहाँ से आगे चल के बाहर निकलेगी तो उनका भी एक मेजरमेंट हो कि हाउ एंड व्हाट वे दे आर मेकिंग द डिफरेंस इन द सोसाइटी एंड हाउ दे आर मेकिंग द इम्पैक्ट ऑन आवर डेमोक्रेसी। मैं फिर से एक बार आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी जो तन्मयता, 3 दिन का जो एंगेजमेंट यहाँ पे छात्रों का रहा वो इसी तरीके से बहुत अभिनंदनीय था कि इस तरीके का आयोजन अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से आयोजन अभी कर रहे हैं, लेकिन मुझे खुद को संतुष्टता नहीं है चौहान सर कि हमें गवर्नमेंट ने जब तक थोड़ा सा हैंड शेकिंग इसकी तरफ अगर किया और पब्लिक प्राइवेट का थोड़ा और अगर मिलाप हुआ और हमारी जैसी संस्था जिसकी एक बहुत अच्छी शक्ति बन गई है, कन्वेनिंग की एक एबिलिटी बन गई है, तो बहुत कुछ विधानसभाओं के साथ और बाकी भी चीज़ों में बहुत कुछ हो सकता है। आज आने वाले थे पृथ्वीराज चौहान जी यहाँ पे थे, मैं उनसे भी बात कर रहा था, हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर साहब, और आपके जैसे कुछ चुनिंदा 10-12 लोगों का बोर्ड हम बनाने के प्रोसेस में है, जो बोर्ड इस पूरे विषय को आगे चल के अंजाम दे सकता है। और बड़े पैमाने के ऊपर भारत का जो अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड, इतना जो यूथ है, हम इनको सेंसिटाइज करके एक अगले 10-20-25 साल की पीढ़ी मुझे दिखती है, उसके बाद का भारत भी दिखता है कि किस तरीके से हमारा इवोल्यूशन होगा। बट मुझे लगता है कि अगर सही समय में अगर ये कदम हमने अगर उठाए तो सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी का भी गलत असर, एआई की बात आप सब लोग जानते हैं, एआई का भी सेशन आपने सुना, इन सब चीज़ों का अगर असर, पॉजिटिव असर अगर अपने ऊपर होना है तो इन सब चीज़ों की चर्चा इस मंच के ऊपर और ऐसे कई सारे मंचों के ऊपर पूरे भारत में होनी चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। मैं लास्ट में जाते जाते इतना ही कहूँगा, एज अ प्राउड हिंदू इन दिस कंट्री, ऑन द 22nd राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। मेरा विश्वास है, मुझे और करोड़ों ऐसे भारतीय, डॉक्टर भटकर जी, पद्म भूषण डॉक्टर भटकर जो हमारे संस्था के सलाहकार रहे बहुत सालों से, वो यहाँ पे आए, मैं उनका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। सुभाष, आप उनको बिठाइए। थैंक यू। एवरीबडी कैन सिट डाउन प्लीज। या थैंक यू। थैंक यू प्रोफेसर भाटकर सर फॉर योर पार्टिसिपेशन टुडे। तो मेरी बात आपके सामने मैं इतना ही कह रहा था, प्रभु राम भारत के कल्चरल सिंबल में मानता हूं। हम सब लोग एक भारत की अस्मिता, भारत का कल्चर, भारत की वैल्यू सिस्टम। तो मुझे कई बार इस बात का भी दुख होता है कि हम ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स को हम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जोड़ते हैं, और ये बात मैं इस मंच के ऊपर कई बार बोल चुका। कांग्रेस सरकार में राजीव गांधी जी ने, आप सब लोग हिस्ट्री जानते कि वो ताला कैसे, वो राम मंदिर का केस चल रहा था और वो कैसे तोड़ा। तो मुझे लगता है उसके बाद का जो इवोल्यूशन होकर आज केंद्र में बीजेपी का सरकार है और राम मंदिर बनने जा रहा है, तो मुझे लगता है कांग्रेस के भी जितने लोग हो या सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग हो और हम सब लोग करोड़ों हिंदू इस विषय में अपनी जो भावना है उसको एक्सप्रेस करते हुए हमारे इमोशंस, कलेक्टिव एक इमोशंस इस पूरे मंदिर के इसमें जो निर्माण में होना ज़रूरी है। उससे हमारी एजुकेशन सिस्टम स्ट्रेंथन होगी, इससे हमारा कॉन्शियसनेस क्लियर होगा
और जितने बाकी भी इस्लाम धर्म के भी फेथ के लोग हो सकते हैं या बाकी भी कई सारे फेथ के लोग हो सकते हैं। और वही बात डॉक्टर कराड़ सर ने, प्रभु रामचंद्र का सुंदर पुतला, वो विश्व शांति का गुम्बद, उसके बाजू में बाबा बुल्ले शाह का पुतला, महावीर जी का पुतला, गौतम बुद्ध का पुतला, सभी धर्मों का समन्वय जिसने इस समाज का फाउंडेशन, और मुझे लगता है भारत भूमि में प्रभु रामचंद्र का, और हम उनके वंशज और उनकी आगे की संतान होने के नाते लगता है मुझे हमें सबको इसके ऊपर पार्टियां या इन सब चीज़ों से उठकर इन सब चीज़ों की तरफ देखने की ज़रूरत है, ऐसा मेरा भाव यहाँ पे प्रकट करता हूँ। मैं किसी पार्टी का प्रचार प्रसार, ये मेरी भावना कभी भी भारत, एक नेशनलिस्ट के नाते, एक प्रखर राष्ट्रभक्ति के नाते मैं हमेशा भारतीय छात्र संसद हो, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और सभी अपने डेमोक्रेटिक फैब्रिक के बारे में, लोकतंत्र के बारे में देखता आया हूँ। शायद उसी का आशीर्वाद है कि ये छोटा सा काम भारतीय छात्र संसद हो, राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के माध्यम से आप सभी लोगों के सामने यहाँ पे हो पाया। मैं फिर से एक बार शिवराज सिंह चौहान साहब, मैं आपका मन से अभिनंदन करता हूँ। जयप्रकाश नारायण साहब, मैं आपका भी यहाँ पे अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर भटकर सर, आप हमेशा इस विषय में 2005 में उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जी ने स्कूल ऑफ गवर्नमेंट का उद्घाटन किया था, आप मेरे साथ आए थे। आपकी तबीयत ठीक ना होते हुए भी आप यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए 19 साल बाद, भटकर सर, उस वक्त हम भैरव सिंह शेखावत जी ने कि लोग इतना क्रिटिसिज्म हुआ, अरे भाई राजनीति में ऐसे कैसे हो सकता है, ट्रेनिंग बिनिंग दिखे कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन आज रामबाबू मालगी प्रबोधिनी ने हमारे जैसा स्कूल हमारे छात्र ने वहाँ पे खोला है, जो बीजेपी का संस्थान है या कांग्रेस का संस्थान है, तो इसकी एक संतुष्टता और उसका एक सेटिस्फैक्शन यहाँ पे प्रकट करते हुए मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। A big round of applause, my friends, for Sri Rahul V. Karad sir, who has painstakingly created Bharatiya Chhatra Sansad as one of the pinnacle platforms. My friends, in his speech, probably he iterated thrice that it is only because of the blessings of revered Professor Dr. Vishwanath Karad sir that he could see such dreams and bring them to reality. The founder and chief patron of MITES MIT Pune and president of MIT World Peace University and creator of Philosopher's Century Gyaneshwara World Peace Prayer Hall and World Peace Prayer Library, the World Peace Dome. Please put your hands together and welcome with a huge round of applause the UNESCO chair holder, revered Professor Dr. Vishwanath Karad sir. All my learned friends sitting in the audience, and the most revered Honorable Chief Guest of today's function, the former Chief Minister of Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chauhan Sahab, my esteemed, not the friend, my esteemed brother, the first gentleman of India who made the supercomputer for India. बहुत पुरानी बात है, जब राजीव गांधी ने अमेरिका से सुपर कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी मांगी थी, and we, the whole India, all the great scientists and men of computer science, etc., were unable to give a solution. I'm just specifically telling you, he's coming here to bless you people has a great meaning. विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय इस संस्था का विषय है। मेरे बारे में जो कुछ भी कहा गया, मैं शिवराज सिंह चौहान साहब को बयान करूंगा। We are not the masters or the rulers of this lowly mission, but especially on the occasion of this Swami Vivekananda's birthday ceremony, the Youth Day, which is celebrated by India, उनको मैं प्रणाम करता हूँ फिर से। भाई साहब, आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे इंजीनियर बनना नहीं था। It was the very mission of Swami Vivekananda, which I had heard at the time, that very first sentence which I uttered to you before also, I'll repeat. When he is addressing the first World Parliament of Religions in Chicago, your own brother, 11 September 1893,
जगह है शिकागो अमेरिका में. And when he makes and gives an address, you know it very well. So many of you have heard these words. But his first sentence, my sisters and brothers of the world community and the America, I stand before you to convey the message of what Mother India stands for. And then he says, remember, in the future, union of science and religion, public spirituality alone will help to bring harmony and peace to mankind. पूरे मानव जाति का, विश्व का कल्याण, विश्व शांति, सुख, समाधान और शांति, ये सारी बातों का वैज्ञानिक सिद्धांत बोला गया. ये अध्यात्म शास्त्र की बात नहीं. हमारा सौभाग्य है कि ये जो वर्ल्ड पार्लियामेंट और ये जो स्टूडेंट्स का पार्लियामेंट जो बना, इसको भी 12 साल हुए. It's a good luck for all of us that forgetting all the caste, creed, religion and boundaries of nations, and also the essence and philosophy behind the words spirituality and science. Fortunately, about the dome की बात हो गई. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि being an engineer, I do understand what is particle physics, IT, computer, Google. ये नई भाषा जो है ना, मैं समझ सकता हूँ. Being a professor, a teacher of engineering. Why I am making these statements to you friends, that you belong to different faculties, different disciplines. But please try to understand what is the message from Mother India. Swami Vivekananda ने कहा था, in this century, my Mother India, he says to the whole world, my Mother India will bring harmony and peace to mankind. 21-22 की शताब्दी है. बड़ा सुंदर चिंतन है, कभी पढ़ने की कोशिश करो भाई. मैं आपको सिखाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ. But with a passion and the fire in the belly, with a sense of tremendous commitment, conviction and determination, without any doubt, डर नहीं, फिर घमंड भी नहीं. ये मैंने किया, मैंने खड़ा किया, ऐसा घमंड मत करो भाई. संशय मत करो. वो सबसे बुरी बात है. सत्ता, संपत्ति और स्वार्थ, 3 बातों में फंस जाते तो प्रॉब्लम होती है. किसी घर में हो, किसी व्यक्ति में हो, किसी पद पे कोई न क्यों हो, ऐसी बातें समझने की कोशिश करो. Have a message. And remember, this institution, especially when he speaks from Sant Jnaneshwar to Albert Einstein, it has a deep-rooted meaning, a very scientific base, a logical and philosophical meaning behind. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय तत्वज्ञान जो यहाँ बयान किया गया, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती. The truth is one and only one. The people call it by different names. वसुदैव कुटुंबकम कितने बार कहा गया यहाँ पे? इसका अर्थ दुनिया को समझाना हो, उसका भी वक्त आ गया है. आपको विश्व गुरु बनना हो, तो you need to be highly disciplined, dedicated, devoted, with a sense of commitment and conviction and determination to learn to give. लेना तो ठीक है भाई, देने को सीखो. और दुनिया के सामने ऐसा एक नया उदाहरण दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए करने की ये प्लेटफॉर्म है. मैं आपको अभिवादन करता हूँ. स्पेशली शिवराज सिंह चौहान साहब and my brother Vijay Bhatkar, who is here. I am so happy that both of them are here. All other Jai Prakash Narayan ji is here. I think I am grateful to all of you and to the guests of today. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much for your blessings and for your kind words.
And now, my friends, it is the moment that in the valedictory session of 13th Bharatiya Chhatra Sansad, we proceed. And to take the proceedings further, I would like to invite on stage the officer on special duty of MIT World Peace University, Shri Sankalp Singhai ji. बहुत बहुत शुक्रिया गौतम जी। और जिस पल का आप सबको इंतज़ार था वो पल आपके काफ़ी करीब आ गया है। मगर आज मैं एक बहुत ही अनौपचारिक पहचान, एक अनौपचारिक परिचय आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का दूंगा। भारतीय पारिवारिक जीवन शैली में मामा शब्द का बड़ा महत्व होता है। मामा, हर भारतीय के जीवन के प्रारंभिक वर्षों में उसका 3 प्रकार के मामाओं से परिचय होता है। बचपन में सबसे पहले आते हैं चंदा मामा। चंदा मामा दूर के। उसके बाद हमें पढ़ाया जाता है कंस मामा, जो अपने भांजे के ही दुश्मन हो जाते हैं। उसके बाद तीसरे मामा आते हैं जिन्हें हम जानते हैं शकुनी मामा, जिन्होंने तो महाभारत ही करा दी। मगर हजारों साल बाद मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव जैत में एक व्यक्तित्व का जन्म होता है, एक सामान्य अन्नदाता किसान परिवार में। और उस वो व्यक्तित्व मामा शब्द के प्रतिमान बदल देता है, अर्थ बदल देता है, जिसे हम और आप शिवराज सिंह चौहान के नाम से जानते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें अपने प्रिय मामा जी का। हमारे मामा 10वीं कक्षा में अपना पहला चुनाव लड़ते हैं और 11वीं कक्षा में छात्र संघ के अध्यक्ष बन जाते हैं। आपातकाल में जेल जाते हैं और फिर 5 बार सांसद बनते हैं और 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व परंपरा को आगे बढ़ाने वाले नेता हैं। उनके व्यक्तित्व में सरलता, आत्मीयता, अपनत्व, सहजता बगैर लाग लपेट के झलकती है। सबको साथ लेकर चलने की कला, आम आदमी को व्यवस्था में खास का दर्जा दिलाने की जद्दोजहद और मैं हूं ना की भावना आपको लोगों के दिलों में स्थापित करती है। जन को जनार्दन और तंत्र को सेवक बनाने का कमाल मध्य प्रदेश की जनता ने पिछले 18 साल देखा है। अंत में इस 13वें भारतीय छात्र संसद के संस्करण में ये जो तमाम आपके भांजे भांजी आपके सामने बैठे हैं, उनकी दुआ आप तक पहुंचाता हूं कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या जले, वो शम्मा क्या बुझे, जिसे रोशन खुदा करे। बहुत ही सम्मान के साथ मैं अपने और आप सबके प्रिय मामा जी और भैया को यहाँ पे आमंत्रित करूंगा, मगर उसके पहले एक छोटी सी फिल्म उनके जीवन और उनके व्यक्तित्व के ऊपर आपके सामने प्रस्तुत है। चेक। और मेरे बेटा बेटियों, आज इस छात्र संसद के डाइस पे खड़े रह के शिवराज सिंह चौहान ये घोषणा करता है कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अगर कोई कराएगा तो हमारा भारत कराएगा। ये भारत भूमि कराएगी, इस देश के विचार कराएंगे। Shri Shivraj Singh Chauhan is a prominent Indian politician and a member of the Bharatiya Janata Party. Serving as the Chief Minister of Madhya Pradesh for 4 terms, he held the position from 2005 to 2018 and then again from 2020 to 2023. His political journey includes being the former National Vice President of the BJP from 2019 to 2020, a member of the Parliamentary Board and a member of the Central Election Committee of the party. Shri Chauhan was also the National President of the Bharatiya Janata Yuva Morcha from 2000 to 2002 and a member of the Lok Sabha representing Vidisha from 1991 to 2005. Renowned for his leadership, Shri Chauhan implemented various welfare schemes, including providing rice at 1 rupee per kg for the impoverished, the Sambal scheme offering maternity assistance to women laborers, free education for girls in need, fixed rate electricity, Ladli Lakshmi Yojana
and Ladli Behna Yojana. His commendable efforts were recognized with several awards, such as the 2011 NDTV Indian of the Year Award for Leader of New India Development, the Adarsh CM Award in the 5th BCS in 2015, and the Champions of Change Award in 2022. Let's warmly welcome Shri Shivraj Singh Chauhan. जोरदार तालियों से दोनों हाथों से आप अपने प्रिय मामा जी का यहाँ पे स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, स्वामी विवेकानंद की, जिजाऊ माता की और कार्यक्रम में उपस्थित बहनों भाइयों की और मेरे भांजे भांजियों की। आज छात्र संसद के इस कार्यक्रम में उपस्थित संत शिक्षाविद, सोशल रिफॉर्मर, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, आदरणीय डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी, जो फाउंडर है MIT के भी, आदरणीय विजय भाटकर जी, मेरे मित्र राहुल कराड़ जी, जो अद्भुत काम कर रहे हैं, आदरणीय जयप्रकाश जी, डॉक्टर R चिटनीस जी, मंच पर उपस्थित बाकी सभी वरिष्ठगण, प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। अभी संकल्प जी मामा की परिभाषा बता रहे थे और मामा मामा कहते उन्होंने कहा कंस मामा, शकुनी मामा का भी जिक्र किया। हाँ, मैं भी मामा हूं और अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों का मामा नहीं हूं, हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। मामा का एक अर्थ तो यह होता है जो मां का भाई हो वो मामा, लेकिन एक अर्थ और होता है जो बच्चों से दो दो मां जितना प्यार करता हो, मां मां वो मामा। आज स्वामी विवेकानंद जयंती है। जिजाऊ माता ने भी आज ही जन्म लिया था। मुगल साम्राज्य की छाती पे हिंदवी स्वराज का झंडा गाड़ के हिंदवी स्वराज की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। मैं उनको प्रणाम करता हूं। और स्वामी विवेकानंद जी योद्धा सन्यासी, अभी मैंने आके देखा वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी। विश्वनाथ जी मैं प्रणाम करता हूं, राहुल जी आपका भी अभिनंदन। वर्ल्ड पीस डोम, लेकिन विश्वनाथ जी अभी जिक्र कर रहे थे स्वामी विवेकानंद जी के शिकागो के भाषण का। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने विश्व संसद में उद्घोष किया था, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं। परमात्मा एक है, उसके पास तक पहुंचने के रास्ते अनेक है, किसी भी रास्ते चलो अंततः पहुंचोगे वही। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने उद्घोष किया भारत के उस विचार का कि सब में एक चेतना है, हम सब में एक ही चेतना है, जिसको तुलसी बाबा ने कहा सिया राम मैं सब जग जानी। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो, क्योंकि हम सब उसी एक चेतना के अंश हैं। और विश्व शांति की बात होती है, यहां वर्ल्ड पीस का डोम बना हुआ है,
संयुक्त राष्ट्र संघ बना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, लेकिन भारत ने हजारों साल पहले कह दिया था, अयम निजम पराबेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। स्वामी विवेकानंद जी ने उद्घोष किया भारत के इस विचार का, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। लेकिन ध्यान से सुनना बेटा बेटियों, प्राणियों में सद्भावना हो, मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो, और केवल हमारा नहीं, विश्व का कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ये भारत का विचार। और इसलिए जब मैं पुराने भाषण को सुन रहा था तो शायद उसी समय मैंने कहा था कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा तो हमारा भारत कराएगा, ये देश कराएगा, और ये होगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन मुझे बताया, मुझे इस विषय पर भी बोलना है कि छात्र राजनीति में क्यों आए। मैं क्यों राजनीति में आया, मैं तो इससे ही शुरू करूंगा। मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा और कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा मेरे कानों में गूंजते रहते हैं, जो सदैव मुझे प्रेरणा देते हैं। मैंने स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा एक किताब में। उन्हें हमें आह्वान करते हुए कहा, नौजवानों को आह्वान करते हुए कहा, तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, तुम अमृत के पुत्र हो, तुम ईश्वर के अंश हो, तुम अनंत शक्तियों के भंडार हो, तुम अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। मैंने फिर पढ़ा, तुम ईश्वर के अंश हो, तुम अनंत शक्तियों के भंडार हो। और एक बात मैं शेयर करता हूं आपसे कि व्यक्ति जैसा सोचता और करता है वैसा ही बन जाता है। तुम सोच के देखो, तुम ईश्वर के अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, तो तुम्हारे लिए दुनिया में कुछ भी करना असंभव नहीं है। और मैं सिद्ध करता हूं, तुम कैसे केवल हाड़-मात के पुतले नहीं हो। अगर आमतौर पर कोई मुझसे पूछे कि शिवराज क्या है, तो मैं जो सामने शरीर दिखाई दे रहा हूं, ये शरीर ही शिवराज है। हमारे यहां कहा है कि शरीरम माध्यम खल धर्म साधनम। शरीर जरूरी है, शरीर के लिए भोजन जरूरी है, पानी जरूरी है, पोषण जरूरी है। लेकिन हम क्या केवल शरीर हैं? आप बताओ, अगर कोई आपको गाली दे दे, अपमान कर दे, तो आपके शरीर को तो नहीं लगा, लेकिन आपको गुस्सा आती कि नहीं? वो अपमान शरीर का नहीं है। अब शरीर के अलावा भी कुछ हो। अभी कुछ दिन पहले मेरे बेटे का एक मित्र मिलने आया, विदेश से आया, साथ पढ़ा था यहीं सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी में। तो मेरा बेटा इतना प्रसन्न था, दौड़ के गले लग गया, और 4-5 दिन और कोई काम ही नहीं किया। जब बरसों पुराना कोई मित्र मिलता है तो जो खुशी होती है वो शरीर को नहीं होती, उसको कहते हैं मन। तोतली आवाज में बोलते हुए अगर कोई बेटा बेटी आए माँ के पास और गोद में बैठ जाए तो माँ छाती से उसको चिपका लेती है, और छाती से छुपका के जो सुख और आनंद का अनुभव होता है वो शरीर को नहीं, मन को होता है। कोई कलाकार है, कोई चित्र बनाया है, कोई कवि है, कोई कविता लिखी है,
कोई सुन ले और कह दे वाह। मुझे पुरानी घटना याद आती है। तब मैं बीजेपी की यूथ विंग में काम करता था। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था। एक कार्यक्रम में हम गए थे, उस समय ट्रेन से जाते थे। कार्यक्रम खत्म हो गया, शाम को ट्रेन से वापस लौटना था, तो धर्मशाला के कमरे में हम इंतजार कर रहे थे कि ट्रेन का टाइम हो तब हम चले। इतने में ही कुछ नौजवान कार्यकर्ता एक बुजुर्ग सज्जन को लेकर मेरे पास आए और कहा कि भाई साहब, ये आपके भाषण से बड़े प्रभावित हैं, ये आपसे चर्चा करना चाहते हैं। तो मैं भी उठ के खड़ा हो गया, सम्मान से उनको बैठाया और मैंने उनसे पूछा, बताओ क्या बात है। तो उनका बेटा, ये 80s की बात है, 90s की, उनका बेटा, देश की हालत बड़ी खराब है। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हैं। बोले वो खराब हालत देख के मैं बहुत दुखी हूं। मैंने कहा व्यथित तो मैं भी हूं। फिर वो बोले बेटा, उस व्यथा से व्यथित होके मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, वो पंक्तियां तुम्हें सुनाना चाहता हूं। मैंने सोचा मर गए ये तो कवि हैं, कविता सुनने का मूड मेरा नहीं था बिल्कुल। तो मैंने थोड़ा टालने की कोशिश की कि मुझे ज्यादा समझ में नहीं आती, आप इनको सुनाओ। लेकिन जिनका मैंने कहा, उन्होंने कहा नहीं ये अच्छे कदरदान है, आप तो शिवराज जी को ही सुनाओ। अब उन्हें कविता सुनाना शुरू किया। अब मजबूरी है, जब कोई कविता सुनाए तो हमको कह नहीं पड़ता वाह क्या शब्द है, क्या भाव है। तो मैं भी कह रहा था वाह वाह क्या शब्द है। कवि वर्ग का उत्साह और बढ़ता जा रहा था। कविता समाप्त होने का नाम नहीं ले रही थी। मेरे पास पानी का गिलास रखा था, तो मैं पानी का गिलास उठाया और एक घूंट पानी पिया और फिर बोला वाह वाह क्या शब्द है। और दूसरा घूंट लिया तो मेरी नजर मेरे मित्र के नजरों से मिल गई, जो मुझे फंसा हुआ जान के मुस्कुरा रहे थे। उनको मुस्कुराते हुए देख के मुझे भी हंसी आ गई और मेरा पूरा पानी कविवर के मुंह पे चला गया। अब मुझे भी खांसी आई, ठसका लगा, आंख में पानी, नाक में पानी, बड़ी मुश्किल से सामान हुआ। फिर मैंने कहा अब क्या करूं, ये कहेंगे कि कैसा ये बीजेपी की यूथ विंग का कार्यकर्ता है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने दोनों घुटने टेके और दोनों हाथ जोड़ के उनके सामने बैठ गया कि मुझे माफ कर दे, मुझसे बड़ी गलती हो गई। वो बोले बेटा कोई बात नहीं, तुम तो अगली पंक्तियां सुनो। ये अगली पंक्ति सुनने का सुख है मन का सुख। आप केवल शरीर थोड़ी है, आप मन भी है, लेकिन मन के आगे और सोचो, आप केवल मन तक सीमित नहीं हो, आप बुद्धि भी हैं। आजकल केबीसी कभी कभी आता है, कौन बनेगा करोड़पति। बिग बी बैठे रहते हैं, हॉट सीट पे किसी और को बिठाते हैं, आप टीवी के स्क्रीन के सामने बैठे और 4 सवाल स्क्रीन पे उभरते हैं। आपसे नहीं पूछा जवाब, लेकिन अगर आ गया तो तुरंत चिल्लाते हैं कि ए अभी, और सही हुआ तो फिर अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं कि देखा अपन को भी आता है। डॉक्टर विजय भाटकर बैठे, कहते न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब का पेड़ था, फल लगे थे, अचानक हवा चली, पेड़ हला, फल टूटा, जमीन पे गिरा। अब न्यूटन सोचने लगे हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, जमीन पे क्यों गिरा, ये आसमान में क्यों नहीं गया, ये बीच में क्यों नहीं अटका। उत्तर नहीं मिल रहा था। तो जो आ रहे थे जा रहे थे लोग, उनसे पूछा कि बताओ भाई ये फल टूट के जमीन पे क्यों गिरा। तो लोगों ने कहा दुनिया जमाने से देखते चले आ रहे हैं, अगर पेड़ से कोई चीज टूटती है तो जमीन पे ही तो गिरती है। उन्होंने कहा नहीं ये बीच में क्यों नहीं अटकी, आसमान में क्यों नहीं गई। लोगों ने कहा ये तो गया काम से। लेकिन न्यूटन खोजते रहे और अंततः पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है, उन्होंने खोज ही लिया। और उस सिद्धांत को खोज के जिस आनंद का अनुभव हुआ, वो अनुभव बुद्धि करती है, बुद्धि। लेकिन इसके अलावा एक चीज और है जिसको हमारे यहां भारतीय मनीषियों ने कहा आत्मा। मैं उसके विस्तार में विवेचन पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये विश्वास के साथ कहता हूं कि हम जो हैं वो 2 हैं, एक अंदर का शिवराज, एक बाहर का शिवराज। कई बार बाहर का शिवराज गलत भी सोच ला, झूठ भी बोल दो, चोरी भी कर दो, लेकिन अंदर से आवाज आती कि मत कर, ये गलत है, गलत है, गलत है, अंतरात्मा। और इसलिए मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं,
आप केवल शरीर नहीं, आप कुछ और हैं। और आप क्या हैं ये अगर आप जान लें तो आप दुनिया में बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। मैं राजनीति में इसलिए आया कि विवेकानंद जी के वो शब्द, तुम अनंत शक्तियों का भंडार हो, और जीवन इसलिए नहीं है कि ये व्यर्थ गवाया जाए, ये बेकार किया जाए। और जब मैं 7th में पढ़ता था, 7वीं में, तब पहला आंदोलन मैंने किया अपने गांव के मजदूरों के लिए। उनको मिलती थी मजदूरी पैसे में नहीं, अनाज में मिलती थी, एक बर्तन में नाप के 2.5 पाई मिलती थी। मैंने कहा 2.5 पाई नहीं, 5 पाई लेंगे। मंदिर पे बैठक बुलाई, थोड़े से लोग आए क्योंकि मेरी उम्र बहुत छोटी थी। और बाद में 20-25 मजदूरों को लेकर जुलूस निकाल के हम लोग आगे बढ़े। तो घर के सामने जब जुलूस गया तो मेरे घर से मेरे चाचा जी निकले थे लाठी लेके कि बाप आज मैं मजदूरी बढ़ाता हूं, क्योंकि वो खुद किसान थे। मन में अगर तड़फ होती है, मन में अगर आग होती है काम करने की, तो मैं आपसे कहता हूं वो काम आपको बड़े से बड़ा व्यक्ति बना सकता है। इमरजेंसी लगी, आपातकाल लगा। मैं 11th में पढ़ता था, 11वीं में स्कूल का प्रेसिडेंट भी था। मुझे लगा कि डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मैंने विरोध किया, पकड़ लिया गया, 9.5 महीने जेल में रहे। राजनीति में आते क्यों हैं लोग? 2 कारण। एक, स्वाभाविक रूप से लोगों के लिए जीना है, देश के लिए कुछ काम करना है, बड़ा प्रदेश के लिए काम करना है, समाज के लिए करना है। लेकिन आजकल दूसरे तरह के नेता भी हैं जो पॉलिटिक्स को ही कैरियर मान लेते हैं। यही कैरियर है, लक धक कपड़े पहन के कुर्ता पजामा और सतही राजनीति करने का प्रयास करते हैं। राजनीति में आना चाहिए। मैं यहां जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। कई बार लोग सोचते हैं कि अरे हम क्या करेंगे राजनीति में जाके, ये तो बेकार काम है। कई बार वो कहानी याद आती है, एक पिता के 4 पुत्र थे। एक को ने डॉक्टर बनाया, एक को ने इंजीनियर बनाया, एक बिजनेसमैन बना। चौथे के बारे में पूछा कि इससे क्या कराओगे? बोले इसको कुछ नहीं आता, इसको राजनीति में भेज रहा हूं। लेकिन ये मानसिकता सबके लिए ठीक नहीं है। मेरे मन में बचपन से एक विचार था, मैं देखता था बेटा और बेटी में गांव के लोग भेदभाव करते हैं। शहरों में भी होता है कई मात्रा में, पहले ज्यादा होता था, आजकल थोड़ा कम होगा, लेकिन भेदभाव होता है। और मैं देखता था कि बेटा बेटी में भेद क्यों? कई बार तो कई जगह ऐसा हुआ कि पहले ही पता चल गया कि जन्म लेने वाली बेटी है तो बेटी को जन्म ही मत लेने दो। कोई कत्लखाना बना दिया, सेक्स रेशियो बदल गया, बेटे ज्यादा पैदा होने लगे, बेटियां कम पैदा होने लगी। मध्य प्रदेश में 912 बेटियां 1000 बेटे। तब मन में तकलीफ होती थी, कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो मैं ऐसे ही भाषण देता था और कहता था बेटी को आने दो, बेटी है तो कर ले। एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी है तो कर ले। बेटी आ गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? तो मुझे लगा कि भाषण से कुछ नहीं होगा, कुछ और करना पड़ेगा। बाद में मैं MLA बना तो मैंने कोशिश की कि कुछ बेटियों की शादी अपने मित्रों के साथ मिलकर करूं। मेरी धर्मपत्नी भी यहीं बैठी है। मैं सांसद बना, सांसद बनने के बाद मेरी शादी हुई थी। तो फिर हम दोनों शादी करते थे बेटियों की, जितनी हमारी सामर्थ्य, कभी 25 की, कभी 35 की, ताकि कुछ तो बोझ कम करें। लेकिन जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने पहली योजना बनाई लाडली लक्ष्मी योजना, और यह तय कर दिया मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी बोझ नहीं रहेगी, पैदा होगी तो लखपति पैदा होगी। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने अपने अफसर बुलाए और मैंने कहा कि बेटियों को मुझे लखपति बनाना है। तो एक दूसरे की तरफ देख के धीरे से मुस्कुराए पहले, फिर सोचा नए नए मुख्यमंत्री बने, नया जोश होगा, कुछ दिन में ठंडा हो जाएगा। कहा सर इम्पॉसिबल।
ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। मैंने कहा ये होगा क्योंकि तू मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री मैं हूं। और हमने तय कर दिया कि बेटी पैदा होगी तो सीधे उसके अकाउंट में 30,000 रुपया डालेंगे। वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 12वीं में फिर 6,000, कॉलेज में 12,500, और जब 21 साल की होगी तो सीधे 1 लाख रुपया मिल जाएंगे। बेटी लखपति होगी। ये लाडली लक्ष्मी योजना। आज 46 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर हैं, और हर राज्य ने इस योजना को किसी न किसी नाम से शुरू किया। इसका इंपैक्ट असेसमेंट में आपको बताता हूं। पहले 912 बेटियां 1,000 बेटों पर पैदा होती थी। आज मध्य प्रदेश में 976 बेटियां 1,000 बेटों पर जन्म ले रही है। और मैं मामा कैसे बना? सबसे पहले उन बेटियों ने ही मुझे मामा कहना शुरू किया, और सचमुच में मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। वो बेटियां जिनको मैंने गोद में 2006 में 7 में खिलाया था और NSC दी थी, वो सर्टिफिकेट दिया था लाडली लक्ष्मी का, आज कॉलेज में पढ़ रही है। और जब वो मामा कह के पुकारती तो मुझे लगता है अपनी तो जिंदगी सफल हो गई। बेटियों को बुक्स हो। दूसरे गांव बेटियां पढ़ने नहीं जाती थी, माँ बाप भेजते नहीं थे, पैदल कैसे जाएगी? तब आइडिया आया कि साइकिल दो, तो सबसे पहले हिंदुस्तान में साइकिल मध्य प्रदेश ने बेटियों को देना शुरू की। भांजे लेकिन मुझसे नाराज हो गया कि मामा बेईमानी हो रही है, भांजियों को साइकिल, हम पैदल घिसटते जा रहे हैं। तो बाद में मैंने भांजों को भी देना शुरू कर दी। एक नहीं, ऐसी अनेकों स्कीम, उसके विस्तार में नहीं जा रहा। महिला और पुरुष में भेद क्यों? क्या स्त्री को भगवान ने नहीं बनाया? मैं आज भी देखता हूं, मैं गांव में देखता था पति पत्नी की लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था, तो पति जब चाहता था पत्नी पे हाथ उठा देता था, और उस समय मेरी आत्मा रोती थी कि हे भगवान वो दिन कब आएगा जब स्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर सम्मान मिले। मुझे गर्व है इस छात्र संसद में कहते हुए कि मुझे सौभाग्य मिला मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव में 50% रिजर्वेशन हमने स्त्रियों को दिया, माताओं बहनों को दिया, और कहा मेयर बनो, सरपंच बनो, जिला पंचायत के अध्यक्ष बनो, पर्दे में से बाहर निकलो, सरकारें चलाओ। विरोध तब भी हुआ था। मध्य प्रदेश पहला राज्य जाता है कि हमने कि पुलिस में भी 30% भर्ती बेटियों की होगी। DGP सहित तत्कालीन बड़े पुलिस अफसर, सर गड़बड़ हो जाएगी, ये लड़कियां पुलिस में क्या करेंगी? इनका इनके हाथ में डंडे दूंगा तो गुंडों की अकल ठिकाने लगाएगी, चिंता मत करो। एक नहीं, एक के बाद मैं बचपन में देखता था। मैं राजनीति की बात कर रहा हूं, अगर मैं राजनीति में नहीं होता तो हम कैसे करते हैं? मैं देखता था बचपन में मेरी गरीब बहन मजदूरी करती थी, खेतों में काम करती थी, बेटा बेटी को जन्म देने के एक दिन पहले तक काम करती थी, और बेटा बेटी को जन्म देने के बाद 8 दिन भी आराम नहीं करती थी, और फटी साड़ी का टुकड़ा अपने माथे पर बांध के मजदूरी करने पहुंच जाती थी। बेटा बेटी को खेत की मेड़ पर रखती थी और दिन भर मजदूरी करती थी। और तब मैंने तय किया मध्य प्रदेश की धरती पर कि बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया देंगे, ताकि इस बहन को भी आराम करने का मौका मिल सके। अब ये फ्री बीज नहीं है। हमने एक और क्रांतिकारी फैसला किया। हमने तय किया कि अगर दुकान मकान मैंने देखा, मैंने असेसमेंट करवाया कि स्त्रियों के नाम पे कितने, पुरुषों के नाम पे कितने, तो पता चला पतिदेव के नाम पे या बेटे के नाम पे, ये बेटी या पत्नी के नाम पे नहीं है। तो हमने तय किया कि दुकानों मकानों खेतों अगर महिला के नाम पे खरीदोगे तो केवल 1% रजिस्ट्री शुल्क लगेगा, और पुरुष के नाम पे खरीदोगे तो 5% लगेगा। कई लोगों ने संपत्ति खरीदी और अपनी पत्नी के नाम कर दी। पप्पू की मम्मी तेरे नाम कर दी है, पैसा बच जाएगा रजिस्ट्री का। हमने कहा इस बहाने संपत्ति तो नाम हो। और लाडली बहना की आज बहुत चर्चा है, पूरे देश में चर्चा है। वो भी फ्री बीज नहीं है।
आधी आबादी को पूरा न्याय है, आधी आबादी को पूरा न्याय। मैंने देखा बहन के नाम पे पैसे नहीं होते, गरीब हो, लोअर मिडिल क्लास की हो, अपनी हर चीज के लिए केवल पति पर निर्भर रहना पड़ता है। तब मेरे मन में यह क्रांतिकारी विचार आया कि बहन का एक अकाउंट हो और हर महीने नियमित रूप से पैसे आए जिस पे अपना उसका अपना अधिकार हो, हक हो। क्योंकि मैंने ऐसी बहनों को देखा था, मायके जाना और पतिदेव से 500 रुपया मांगे तो बोले नहीं है, जब देखो मांगती रहती है। तो मुझे लगा कि भैया मुख्यमंत्री किस दिन काम आएगा, और हमने लाडली बहना बना के 1,32,00,000 बहनों के खाते में हर महीने 1250 रुपया भेजना शुरू किया। वो फ्री वीज नहीं है, वो उनको न्याय देना है, और उन्हें दुरुपयोग नहीं किया। छोटे छोटे काम धंधे पैसा बचा के करना शुरू किया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर राजनीति में नहीं होते तो क्या ऐसे बड़े क्रांतिकारी फैसले हो सकते थे? मेरे बेटा बेटियों, मैंने देखा था मध्य प्रदेश में कई गरीबों के बेटा बेटी डॉक्टर बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे, पास लेकिन पैसे नहीं है। गरीब को एजुकेशन लोन भी नहीं मिल पाता, और इसलिए हमने उस धरती पर मध्य प्रदेश की तय किया कि जिन बच्चों में टैलेंट है, किसी जाति समाज के हो, जात पात पूछे नहीं, कोई हरि को भजे सो हरि को होई, कोई भेदभाव नहीं बच्चों में। और तय किया कि उनके टैलेंट के कारण नीट के माध्यम से, क्लैट के माध्यम से, जेई मेंस के माध्यम से उनका एडमिशन अगर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM कहीं भी होता है तो फीस बच्चों के मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा भरवाएगा, बीजेपी की सरकार भरवाएगी। लाखों बच्चे आज मेरे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन रहे हैं। काम कई हो सकते हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन आप सोचो, अगर आप इंडिविजुअल रह के काम करना चाहो, अकेले तो कितना काम कर सकते हो। मैं शिवराज अकेला करता तो अपनी पत्नी के साथ 5 बेटियों की शादी करता, 50 बेटियों की शादी करता। लेकिन मैं राजनीति में आया, MLA बना, MP बना और मुख्यमंत्री बना, तो लाखों मास मैरिज हर साल होती है, लाखों। आप अगर ऊपर जाते हैं और आवाज देते हैं तो वो सारी दुनिया को सुनाई देती है। और इसलिए आज मैं MIT यूनिवर्सिटी के इस कार्यक्रम में आपको आह्वान करने आया हूं, राजनीति में आने से डरो मत, आगे बढ़ो, आओ। अगर तुम नहीं आओगे तो कौन आएगा? बेईमान आए। अगर हम बेईमान नहीं हैं, हम अच्छे हैं, हम ईमानदार हैं, हम कर्मठ हैं, हम चरित्रवान हैं, हम देशभक्त हैं, हम राजनीति छोड़ दें तो क्या केवल चोरी करने वालों के लिए राजनीति सौंप दें? क्या उनके जिम्मे ही सारे राजनीतिक अधिकार सौंपे जाएंगे? और इसलिए मैं कह रहा हूं, लीड करो, लीड। तुम कर सकते हो क्योंकि तुम अनंत शक्तियों के भंडार हो। एक बात सोच लेना, अगर तुम ये सोचोगे कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो दीनहीन हूं, मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है, तो अपने मुंह की मक्खी भी नहीं उड़ा पाओगे, वो भी उड़ाने पड़ोसी आएगा। और जिस दिन तन के खड़े हो जाओगे और तय कर लोगे कि दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं जो मैं ना कर सकूं, संकल्प अगर तुम्हारे अंदर पैदा हो गया। देखो, 2 मन होते हैं, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन। चेतन मन सोचता है, विचारता है, और अवचेतन उसका अनुसरण करता है। अगर तुम्हारे चेतन मन ने कहा कि नहीं, मैं बिजनेस भी नहीं कर सकता, व्यापार भी नहीं कर सकता, मैं कैसे पास होऊंगा, मैं पढ़ भी नहीं सकता, तो आप असफल हो जाओगे, क्योंकि अवचेतन मन चेतन की बात ही मान के वैसी प्रक्रियाएं प्रारंभ कर देता है। और तुमने अगर सोच लिया कि नहीं मैं करूंगा, करके रहूंगा, तो तुम्हारा अवचेतन मन वैसी प्रक्रियाएं प्रारंभ कर देगा। एक छोटा सा उदाहरण, अगर वैष्णव देवी जाना हो, 14 किलोमीटर चढ़ाई करनी पड़ती है। कोई वैसे कहते चले जाओ, चढ़ जाओ, तो कोई चढ़ेगा? पागल हो क्या? लेकिन अगर चेतन मन ने तय कर लिया कि नहीं मुझे चढ़नी है,
तो शरीर में वो ताकत अपने आप पैदा हो जाती है कि बच्चे भी दौड़ते हुए वैष्णव देवी के दर्शन करने पहुंच जाते हैं। और इसलिए आज मैं ये कहने आया हूं, सोचो बड़ा सोचो। एक अंतिम उदाहरण देके अपनी बात समाप्त करूंगा। मध्य प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं। सारे पॉलिटिकल विश्लेषक कहते थे मध्य प्रदेश में बीजेपी नहीं जीतेगी। 18 साल हो गए, एंटी इनकम्बेंसी है। कांग्रेस घोषणा करती थी क्लीन स्वीप करेंगे, और तो और मेरी पार्टी के नेता भी कहते थे मुश्किल है, नहीं हो सकता, गड़बड़ है। लेकिन मैंने तय किया कि किसी भी कीमत पर मेरी पार्टी को जिताऊंगा। कोई ताकत दुनिया की मुझे जीतने से नहीं रोक सकती। एक संकल्प पैदा हुआ और उसके अनुरूप काम किया। मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं। 2 घंटे सोता था मैं, केवल 2 घंटे। रात के 10 बजे तक पहले हेलीकॉप्टर की सभाएं, और हेलीकॉप्टर का मैंने कभी पंखा बंद नहीं होने दिया। दौड़ के कूदता था, सभा करता था, दौड़ के बैठता था, और रात में बाय रोड, फिर मीटिंग, फोन। 2-2:30 बजे भोपाल आता था, 2 घंटे सोता था, फिर काम तो शुरू हो जाता था। सारे लोग कर रहे थे, बाद में कहने लगे कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। मैंने कहा लाडली बहनाओं ने सारे कांटे निकाल दिए। मेरा स्टेटमेंट पढ़ा होगा आपने। और जब रिजल्ट आए तो आपने देखा होगा कांग्रेस ने नहीं, बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। अब तक के सबसे ज्यादा वोट मिले बीजेपी को, सबसे ज्यादा वोट, और सबसे ज्यादा शानदार सीटें। सोचा और हो गया। मुझे कहा फार्मर चीफ मिनिस्टर, लेकिन अपन रिजेक्टेड नहीं है। कई बार आदमी कब छोड़ते हैं, जब जनता नकार दे, लोग गाली देने लगे, बहुत दिन हो गया यही बैठा हुआ है। अपन छोड़ के भी आए तो ऐसे आए कि जहां जाते हैं लोग कहते हैं मामा 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 मामा। जनता का स्नेह और प्यार ये अपनी असली दौलत है। लेकिन छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति नहीं करूंगा, अभी भी करूंगा। किसी पद के लिए नहीं। राजनीति केवल पदों के लिए नहीं होती, राजनीति बड़े लक्ष्य के लिए। और उसी का आह्वान आपसे करने आया हूं। मित्रों, आना पड़ेगा तुम में से कई को राजनीति में, इसलिए कि कई काम बाकी है जो पूरे करने हैं। अभी यहां बता रहे थे हमारे मित्र राहुल जी, 22 जनवरी को वो सौभाग्य के सूर्य का उदय होगा जब अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर दिव्य और भव्य मंदिर में राम लला विराजेंगे। वो गौरव के पल है। हम सौभाग्यशाली हैं। सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद ये हो रहा है। लेकिन राम लला तो आएंगे ही, राम राज भी आएगा, और राम राज लाना है। उसके लिए लड़ना है, काम करना है। ऐसे नहीं हो जाएगा कि मैं तो देखता रहूंगा सोशल मीडिया पे, बस हाथ घुमा दूंगा, मुझे क्या करना ज्यादा है। तुम्ही को करना पड़ेगा, मैं भी करूंगा, तुम भी करो, हम मिलकर करें। राहुल जी, आपने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ के कुछ लोग आए और कुछ अच्छी चीजों के लिए संघर्ष करें। क्या राजनीति में धन का प्रभाव खत्म करने के लिए तुम काम नहीं करोगे? क्या राजनीति केवल अमीरों की तिजोरी से चलेगी? अभी मैं गया था तेलंगाना, जो मैंने सुना मैं तो हैरत में रह गया। एक एक एमएलए का कैंडिडेट 35-35, 40-40 करोड़, कुछ तो 100-100 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। अगर 35-40 करोड़ रुपया एमएलए बनने के लिए खर्चा करोगे तो देश की सेवा करेंगे, प्रदेश की सेवा करेंगे। राजनीति से धन के प्रभाव को समाप्त करना होगा। मैं अहंकार की भाषा नहीं बोलता, लेकिन मैं लड़ता हूं एक क्षेत्र से। अब तक मैं 11-12 चुनाव लड़ा हूं। एक मुझे लड़ाया था पार्टी ने, दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनके खिलाफ, तो वहां भी लड़ने पहुंच गया था। लेकिन एक ही क्षेत्र से 11 बार जीता हूं। और आज कोई मेरे क्षेत्र में जाके देख लेना, सरेआम मीडिया के सामने कह रहा हूं,
मैं चुनाव में प्रचार करने नहीं जाता, एक दिन पहले फॉर्म भरने के निकलता हूं तो गांव की जनता आती, मुझे थैली भेंट करती जिसमें पैसे और एक सूची होती, रामलाल के 100 रुपए, श्यामलाल के 200 रुपए, और उस पैसे से चुनाव लड़ते हैं। ये भी होता है। ईमानदारी से काम करो, जनता साथ देती है। नौजवान को आगे आगे ना पड़ेगा। महिला सशक्तिकरण मेरे जीवन का मिशन है और स्त्री और पुरुष को बराबरी पे मैं लाकर रहूंगा, ये मेरा संकल्प है। राजनीति के अलावा भी मैं इसके लिए काम करूंगा। फ्री एजुकेशन बच्चों को, प्राइवेट कॉलेज में हम फीस भरते हैं सरकार की तरफ से। मध्य प्रदेश में सीएम राज स्कूल हम बनाए। बच्चों को क्या गरीब है तो अधिकार नहीं है कि वो ढंग से पढ़ाई करे? क्या धन के अभाव में उसका टैलेंट मारा जाएगा? यह बहस का विषय है। हर बच्चे के लिए एजुकेशन फ्री होनी चाहिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा फ्री होनी चाहिए। मैं ये मूवमेंट चलाऊंगा। हर गरीब के पास कम से कम रहने की जमीन का टुकड़ा तो चाहिए। भगवान ने पैदा किया तो इतनी धरती तो नाम पे छोड़ी होगी कि जिस पे अपना घर बना के रह सके। मुंबई में ही देख लो आप, झुग्गी झोपड़ियों में कैसे कई लोग। ये देश के हर राज्य में, मैं किसी राज्य विशेष की नहीं, लेकिन करना पड़ेगा। और मित्रों, अंतिम बात, पर्यावरण बचाना पड़ेगा। मैं रोज पेड़ लगाता हूं, रोज। मुझे लगा कि मुख्यमंत्री बन के भाषण दे दो, पेड़ लगाओ, खुद कुछ ना करो, इससे नहीं होगा। पहले जो कहते हो वो करो। मैं रोज पेड़ लगाता हूं। आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक इस धरती को बचाना है, इसलिए पर्यावरण जैसे विषय को भी केंद्र पर रख कर राजनीति करनी पड़ेगी। आज मैं आप सबको छात्र संसद में एक बार फिर आह्वान करता हूं, मत समझो राजनीति को बुरा। आओ, किस दल में आते हो ये आप सोचो। मैं तो बीजेपी अच्छी मानता हूं, बीजेपी की बात करूंगा, क्योंकि देश के लिए, समाज के लिए मुझे लगता है ये पार्टी सबसे बेहतर काम कर रही है। मेरे लिए साधन है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आप जरूर आइए सार्वजनिक क्षेत्र में। अरे अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए तो कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। बड़ा काम करने के लिए तो जियो। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था एक प्रश्न, बताओ दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया था, मनुष्य पैदा होता है, बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, पढ़ता है, फिर और बड़ा होता है, शादी होती है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है। जो आया उसको पता एक दिन जाना ही है, अमर होके नहीं आया। लेकिन व्यवहार हमेशा ऐसा करता है जैसे हमेशा इस दुनिया में रहना यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। मैं ये कह रहा हूं कि आए हो तो 100 साल, 90 साल, 80 साल जियो तो ऐसा जियो कि जमाना कहे कि सचमुच में इसका जीवन अपने लिए नहीं दूसरों के लिए था। स्वामी विवेकानंद जी ने उद्घोष करते हुए कहा था, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य बारिण्य बोधता। उठो, जागो, और जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए रुको मत। लक्ष्य बड़ा तय करो, आगे बढ़ो और उसे हासिल करो। मामा भी तुम्हारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। A big round of applause, my friends, for such beautiful words and guidance from Shri Shivraj Singh Chauhan ji, the chief guest of this valedictory function. A big round of applause once again. Thank you very much. My friends, we have the presence of Padma Bhushan and the chairman of National Steering Committee for Unnat Bharat Abhiyan and the former chancellor of Nalanda University, eminent computer scientist and father of Param Supercomputer, and former chairman of the Board of Governors of IIT Delhi. I would like to request Shri Rahul V. Karat sir to kindly felicitate Dr. Vijay P. Bhatkar sir. My friends, meanwhile let me remind you that you have been handed over an Ekata Sutra. I request you not to use it as a friendship band. Don't tie it to your hands or don't tie it to your chair. Just keep it with you. We will share the significance of Ekata Sutra with you shortly.
please keep it with you. A big round of applause, my friends, for Padma Bhushan Dr. Vijay P. Bhatkar sir. Thank you, sir. Thank you very much for your presence here today. And now I would like to, this is the moment where the student leaders would be presenting their thoughts. And first and foremost, I would like to invite all the way from Madhya Pradesh, Kaushal Sahu to address the gathering. Education is the passport to the future for tomorrow, belongs to those who prepare for it today. आज जहां विश्व भर में अपने पसंदीदा पेशा चुनने के लिए लाखों तरह के ऑप्शंस हैं, वहीं सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण पैशन पॉलिटिक्स के गुर सीखने के लिए कुछ गिने चुने संस्थान ही क्यों? मध्य प्रदेश की माटी से मैं कौशल साहू भारतीय छात्र संसद के इस युवा नेतृत्व के इस महाकुंभ में अपनी बात रखना चाहता हूं। आज जब हमारे देश में बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप का सपना होता है कि उसका बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या साइंटिस्ट बने। किसी के घर में राजनीतिक रूप से नेतृत्व करने के लिए कभी प्रेरित नहीं किया जा सकता। जब हमारे देश में टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए IITs, मैनेजमेंट के गुर सीखने के लिए IIMs जैसे संस्थान हैं, तो आज ज़रूरत है ऐसे संस्थानों की जो युवाओं को राजनीतिक रूप से एक्टिव होने के लिए गुर सिखा सके। जब इस देश में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि राजनीति के गुण किसी क्लासरूम में सीखे जा सकते हैं, उस समय MIT SOG के फाउंडर श्री राहुल जी कराड़ ने लाखों युवाओं को सपना दिखाया कि आप पढ़े लिखे और प्रोफेशनल नेतृत्व की आवश्यकता है। हम सभी गौरवशाली हैं कि बीते 3 दिनों से हम ऐसे युवा नेतृत्व के महाकुंभ के साक्षी हैं जिसने विगत 13 वर्षों में देश विदेश के लाखों युवाओं में राजनीतिक नेतृत्व की अलग जगाई है। पिछले 3 दिनों से हम बात कर रहे हैं कि हमारे देश की 65% आबादी युवा है और संसद में नेतृत्व सिर्फ 12%। लेकिन हकीकत तो यह है कि आज का युवा अपने वोटिंग राइट्स को उपयोग करने की बजाय छुट्टियों में निकल जाता है और ज़्यादातर को यही नहीं पता होता कि उनका पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कौन है और उसने क्या कार्य किया। क्या वास्तव में इस तरीके से भारत विश्वगुरु बनेगा? शायद नहीं। इसलिए मैं हमारे साथी और भारत के भविष्य युवा नेतृत्व से बात करना चाहता हूं कि अगर वाकई में समाज में बदलाव लाना चाहते हैं तो जमीनी स्तर की राजनीति करें, क्योंकि फ्यूचर हमारा है। साथ ही मैं राजनीतिक दलों से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आप युवाओं को बराबरी का हक दें तो यह युवा एक सशक्त नेतृत्व के रूप में उभर कर इस देश को विश्वगुरु बनाने में अपना योगदान दे सकेगा। अंत में मैं अटल जी की पंक्तियों से अपनी बात को समाप्त करूंगा कि बाधाएं आती हैं, आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें आदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जय हिंद, जय भारत। Heartiest congratulations, Kaushal. I request Shri Rahul Vikarasa to kindly felicitate and congratulate Kaushal Sahu. And now we have with us, all the way from Rajasthan, Bharatendu to address the gathering. आज 12 जनवरी है। आज एक व्यक्ति की नहीं, एक व्यक्तित्व की जयंती है, जिसने कन्याकुमारी समुद्र तट पर एक शिला पर अपने सम्मुख बिछे गर्वित अखंड भारत का सपना सजाया था, जिसने सर्वधर्म धर्म सम्मेलन में भारत का डंका बजाया था, जिसने ईर्ष्या राग द्वेष मोह माया को लजाया था, स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने कहा था यदि मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाएं तो मैं इस देश की दशा व दिशा बदल सकता हूं। ऐसे में तो भारत सबसे युवा देश है, फिर हमारे लिए क्या कठिन है? बस आवश्यकता है तो एक ऐसे कुशल मार्गदर्शन की जो भारतीय छात्र संसद के उद्देश्यों में दैदीप्यमान है। मैं भारतेंदु फौजदार, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की धरती से, महाराजा सूरजमल की धरती राजस्थान से पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए देश की शिराओं में संचालित युवा शोणित को सादर प्रणाम करता हूं। I welcome
in the valedictory ceremony of this grand celebration of youthful exuberance, passion and vivacity, Bharatiya Chhatra Sansad, powered by UNESCO. अपने देश के प्रतिनिधित्व करने के स्वप्न को लेकर इस वैश्विक शांति के संस्थान में जब मैं प्रविष्ट हुआ, तब मैंने एक गोलाकार भवन देखा जो भारतीय संसद के केंद्रीय कक्ष जैसा था, जिस पर सभी धर्मों के प्रतीक चिन्हों की तस्वीर थी, जहां पर सभी धार्मिक स्थलों के प्रतिरूप थे। उसको देखकर मुझे निम्न पंक्तियां याद आती हैं। माना कि हम अजायब घर हैं, पर एक ही हैं हजारों में, जाति भाषावाद के दंगे नहीं छपे अखबारों में, ध्यान रहे। कोरोना काल, बिन देखे मजहब देश प्रांत कोविड ने दुनिया लूटी थी, उसका सटीक जवाब भारत की संजीवनी बूटी थी। जब दें एकत्व की मिसाल जगत को, सब भारत का ही नाम लें, चलो सहिष्णु अखंडता एकजुटता का पैगाम लें। पहचान हमारी इंसान सर्वप्रथम हम हिंदुस्तानी हो। हमारी पहचान क्या है? आदरणीय मामा जी हमारे बीच मौजूद हैं। क्या है हमारी पहचान? आपने शुरुआत में देखा होगा, एक प्रार्थना हुई थी, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। पहचान हमारी इंसान सर्वप्रथम हम हिंदुस्तानी हो, फिर हिंदू बुद्ध सिख जैन पारसी मुसलमान क्रिस्तानी हो। और आज इन 3 दिनों में जिस प्रकार से युवाओं ने भारत की समस्याओं के समाधान पर विचार रखे, उससे यह साबित होता है कि आदरणीय राहुल विश्वनाथ जी कराड़ जी ने जो 10 वर्ष पहले जो बीज बोया था, आज वह क्रांति का बीज वट वृक्ष बन चुका है। मामा जी, यह भावुक कर देने वाला क्षण है। इस वर्ष की भारतीय छात्र संसद का समापन हो रहा है। इस संस्था से प्रस्थान करने के पश्चात जोश, उत्साह व उमंग को सतत रखना होगा। निस्संदेह चुनौतियां आएंगी, लेकिन उस कठिन मोड़ पर इन पंक्तियों को गुनगुना लेना, क्योंकि हमारा जीवन कुछ निश्चित समय के लिए सीमित है, लेकिन भारत का नहीं। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। गर्वित अखंड भारत, अतुल्य भारत, जय मां भारती। Heartiest congratulations, Bhartendu. A big round of applause for Bhartendu. Beautiful use of words and motivation. Such a beautiful moment for Bhartendu, being felicitated at the hands of Shri Shivraj Singh Chauhan ji and Shri Rahul V. Karad sir. Heartiest congratulations. My friends, it's now time that I would like to invite the special guest of honor, the former IAS and president of Lok Satta movement, Dr. Jai Prakash Narayan ji, to kindly address the gathering. But before I do that, I would like to request my technical team to kindly relay a small film made on life and work of Dr. Jai Prakash Narayan. A distinguished physician turned civil servant who embarked on a transformative journey to reshape India's governance landscape. Dr. Narayan's remarkable career began as a topper in the IAS exam. Serving Andhra Pradesh for 16 years, fueled by a vision for systemic change, he made a bold move in 1996, resigning from the IAS. He then went on to form the Lok Satta party. Today, Lok Satta stands as a prominent civil society initiative, championing governance reforms in India. A crusader against corruption, Dr. Narayan's leadership has catalyzed pivotal reforms, including the RTI Act, National Rural Health Mission, Gram Nyayalayas Act 2009, and the Lokpal Act 2011. His efforts have earned him accolades including the Rotary Manav Seva Award in 2002 and the Yuddhavir Memorial Award also in 2002. Through the Foundation for Democratic Reforms and Lok Satta movements, Dr. Narayan tirelessly advocates for service guarantees, education, healthcare, local government empowerment, judicial and police reforms, anti-corruption measures, and political reforms. Join us in welcoming Dr. Jai Prakash Narayan.
Please put your hands together and welcome with a big round of applause, my friends, Dr. Jai Prakash Narayan. हूं लेकिन अच्छी तरह बात नहीं कर सकता हूं, इसीलिए अंग्रेज में बात करूंगा। लेकिन दिमाग से नहीं, दिल से बात करना चाहता हूं। First of all, let me congratulate all of you, the finest representatives of the younger generation of this country, celebrating democracy here, looking into the future, finding new friends, getting inspiration, and readying yourselves to make a difference to the country. My heartiest congratulations and thanks to Sri Vishwanath ji and Rahul ji for conceiving this and making this work for years now. It's not merely one day's affair. A remarkable work. My congratulations to all of you. Today is the 161st birth anniversary of Sri Vivekananda Maharaj ji. What was his contribution from our perspective? For the first time, he brought spiritualism to the masses. In our tradition, typically, spiritualism is between the devotee, the bhakt, and the deity, the God. He brought it to the masses. He told us, if millions are starving and hungry and enslaved, how can there be moksha? If you cannot serve the fellow human beings and make a difference to their lives, what kind of spiritualism are we talking about? And his second great contribution is, he built this nation. While this nation has 5,000 years of history and civilization and culture, in the modern era, we were fragmented by caste, region, religion, language, all kinds of things. Swamiji gave us a sense of oneness. My appeal to all of you is never forget that. This is an opportunity for us to transcend these primordial loyalties, narrow domestic walls, as Tagore said, the caste, region, religion, language, and political party. We all have the same goals, we all have the same future, and politics is about transforming the future for everybody. True politics is a noble endeavor. As many speakers said before, we love to hate politics and politicians. But true politics is a noble endeavor because true politics is about reconciling conflicting differences, conflicting interests in a complex and diverse society. True politics is about reconciling the limited resources with unlimited wants. Even Bill Gates or Elon Musk cannot say that I have enough money. Nobody has enough money to fulfill their dreams. How do you manage to deal with the future with the limited resources? And most of all, politics is about reconciling today's needs with tomorrow's future. If we eat away into your generation's future for today's gain, we're not being good parents, we're not being a good society. We require short-term individual welfare measures, but we require long-term public good. Both must be balanced. Without that, there is no future. True politics is about, it's not about contesting elections, it's not about who wins and who loses, it's about what they do with our tax money, with our future. And you are learning to be ready for that. My appeal to political parties is, there is so much of rich talent here. Passion, intellect. Most of the parties have become private estates. They become family fiefdoms. If we want to bring this wonderful talent into the political mainstream, it's not enough to give them a call to come in. It's necessary to create conditions that are conducive for the best to rise in public life through ethical and rational means. Internal democracy in political parties. Strong local governments so that you can be trained locally, emerge as leaders with credibility and confidence.
a system that rewards honesty and competence, not sifarish and dynasty. We have to do a lot to make our parties conducive to young talent coming in. There is a lot of reference to God today. I do not know if there is a God, I must be truthful. Long ago, I have come to the conclusion that my relationship with God is one of mutual non-interference. If God doesn't bother about me, I also don't bother about God. But I believe there is sin. To my mind, there are two great sins. The first is unfulfilled potential. Every child, irrespective of the accident of the womb, where she is born, which caste, which region, which religion, whether parents are educated or not, poor or rich, every child is endowed with innate talent genetically. Nature or God gave that. If we do not allow that child to rise to the level that she is capable of rising with her talent and hard work, then we are doing something deeply wrong. That is sinful. We have that great sin perpetuated in this country every day in every part of the country. Shivrajji quite rightly emphasized the importance of education, but it's not merely free education that we need. We require real education. Much of the education in India is free, but to what effect? 80% of our children are not able to fulfill their potential. The gene pool is getting wasted. Unless educational outcomes improve, unless we make it a national mission to make sure that every child fulfills her potential, we will not, as a nation, fulfill our potential. The second great sin is avoidable suffering. Suffering that's unavoidable, there's nothing we can do. Old age, inevitable death in old age, natural death. These are things we cannot control. But if there is premature death, if there is sickness, if there is pain and suffering that could have been avoided, that is a sin, and we have plenty of it in this country. 5 crore people are becoming poor in India every year, descending into poverty. They were not poor on the 1st of January of the year. By the end of the year, 5 crore people are descending into poverty because of lack of adequate health care. Politics is about transforming lives, not acquiring power. Power must have a purpose, as Mahatma Gandhi said. The first great sin, deadly sin, he said, is politics without principle, power without purpose. I will only make 2 more points briefly. Please protect your future. I mentioned to you the long-term and the short-term reconciliation. There's always a temptation to eat into your future for our current consumption. Unless the future is protected, we promote growth, infrastructure, investment, and opportunity for you. We are only going to indebt you. You're going to have mountains of debt. Your tax money is only going to take care of the debts we have incurred unfairly, unjustly. It seriously affects intergenerational equity. Pay attention to politics, because what politicians do, what governments do, it shapes your future. Finally, be optimistic. You live in a fantastic age. Yes, there are many challenges. But this is the best of all possible ages. Never before in human history have we had the opportunity, the resources, and the technology, and the experience to fulfill all human potential and eliminate all avoidable suffering. Rejoice in that. Make wonderful lives for yourselves personally. You do not owe any apology to anybody for living a good life honestly. But remember, individual growth and collective good must go together. I wish you all the very best. Congratulations, and thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much for sharing your wisdom with all the participants of 13th Bharatiya Chhatra Sansad. My friends, Bharatiya Chhatra Sansad has been an important platform which has always been for the students. But now, there is a big change that we are willing to bring from 14th Bharatiya Chhatra Sansad. And to share the same thought with you, I would like to invite on stage
the Honorable Vice Chancellor of MIT World Peace University, Dr. R.M. Chitnis, sir. Good evening, dear students. You must be enthralled by the 3 days Bharatiya Chhatra Sansad conduction. Honorable Rahul Karad, sir, is a visionary leader and always thinks of innovative idea, and he always pushes the benchmarks much ahead once you achieve it. Here is another wonderful innovation in Bharatiya Chhatra Sansad 2025, which will be in the month of January 2025. But all the students from MIT, all the students who have come from different parts of India, and all the students who have not come but viewing us online, they have an opportunity to be part of Bharatiya Chhatra Sansad 2025. I'll be happy to share with you number and email ID where you can just send your consent. Thereby, our team will get in touch with you and you will be part of various committees. And you can start working right now. Come forward, as Honorable former Chief Minister has appealed you, but you don't know where to start. Now this is the moment to start. May I request my team to show various committees which are available for you to work for Bharatiya Chhatra Sansad 25. The next slide, please. Now, another 6 months we'll research what are the new challenges which our country will face. Election year, almost 76 plus countries are going for elections. A lot of change in the governments and change in the concerns, approaches, as well as change in the concerns and challenges which will encompass. We'll do research of that, information analysis, and then come out with certain topics like AI came this year, deepfakes, AI, and data analysis, which was not done in earlier Bharatiya Chhatra Sansad. The second is invitation committee, whom we can invite, which speakers you want, young, very senior, or those who are having 10 or 15 years experience. The third committee is reception committee. You will see that our volunteers are there from main gate up to this, receiving the VIPs, VVIPs. Our volunteers are there at Hyatt Hotel, our volunteers are there at Taj Hotel and Tip Top Hotel to receive them. Our volunteers are there at airport to receive them. And our volunteers are there to receive them near Naneshwar statue. The next committee is communication. How the social media, how the brochure, how the communication to all vice chancellors. We send 1,000 plus vice chancellor invite every time. There are 55,000 colleges in this country. Not all are big. Some of them are very small and succumbing. But around 10,000 colleges we communicate that Bharatiya Chhatra Sansad is possible. Then we also have a VIP protocol committee. How you interact or how you interact with VIPs at every point of contact. How you are at airport, how you are at hotel, how you are at, near Naneshwar statue, and when you bring them to green room. Going further, if I can request the next committee is accommodation committee, where they will stay, how much is the distance from this particular hall. Normally we do this function in this hall, but I want to bring it to notice of all those who are coming for first time, that 1990 was the last, 2019 was the last time, I beg your pardon, 2019 was the last time when Bharatiya Chhatra Sansad happened here. Then 2020 in Delhi with Jnana Bhavan, 2021 online due to Corona, 2020 in Atri lawns because construction was going on this particular plot, and 2023 June in Mumbai we did NLC, National Legislators Conference. For that also you can work. And that's why we could not do.
And that's why in last 14 years, this is the 13th Bharatiya Chhatra Sansad. So accommodation committee, then comes transport committee, all forms of transport, and then student monitoring committee, then design and internal preparation committee, and then food beverage committee. All this is part of academics in this for the event management students, those who are doing BBA event management. But on a voluntary basis, more than 1,500 students always come forward. For example, in National Legislators Conference in Mumbai, in Bandra, in Geo Center, Mumbai, more than 1,200 students traveled as volunteers from here to there. So dear students, academics is one thing, cultural activities or social activities another thing, and third is sports and taking care of your body and mind. These three things are very, very important in your life, and that is called as personality development. Yeah. So last slide for all of you. Then comes the budget. You know, money is required, funds are required, sponsorships are required for this. So how to go ahead? And then media and public. And last but not the least, you can take photocopy of this. You can put your cameras on this, mobile camera. When you want to participate in, very graciously, former Chief Minister of Madhya Pradesh invited you, join. And he also gave the sentence of Vivekananda. And now, it is a simple thing which you can do is write to, from your mobile, right now, info@bharatiyachhatrasansad.org. That's all you'll have to do. Our team will be in touch with you. Repeat, info@bharatiyachhatrasansad.org. Those who are not present but watching us online, 25,000 plus are watching online. And those who could not make it this time because some or the other reason, but want to come next year, please write to info@bharatiyachhatrasansad. Express what kind of an interest you have. And in addition to that, please use WhatsApp and say hi and your name, your city, and then WhatsApp to 91460-38974. In addition to it, it gives me pleasure to announce that Bharatiya Chhatra Sansad के बाद भारतीय छात्र संसद काउंसिल की कॉन्स्टिट्यूशन होती है और उसके बारे में we will send you mail and elections will be there and you will be part of Bharatiya Chhatra Sansad Council in different part of India and thereby de facto you will be part of Bharatiya Chhatra Sansad 25. So these are the two ways, either you write or you participate in Bharatiya Chhatra Sansad Council, and those who are from MIT first year, second year, third year, you will still be in MIT next year and you are integral part of these committees. With this, I would hand over mic to Master of Ceremony, Dr. Gautam Bapat, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much for putting across the thought behind 14th Bharatiya Chhatra Sansad, which would be by the students for the students. Now, my friends, it is our good fortune that we have with us the renowned life coach and eminent speaker of BAPS Swaminarayan Sanstha, Puj Dr. Gyanvatsal Swamiji. I would like to request Shri Rahul V. Karat, sir, to kindly felicitate and welcome Dr. Gyanvatsal Swamiji. A big round of applause, my friends. I'm sure you would have seen Swamiji many times on motivational speeches, on YouTube and various media channels. Dr. Gyanvatsal Swamiji is famous for his magical words and motivating people. And now, it is my good fortune that I would like to invite him to address the gathering. But before I do that, I would like to request my team to kindly relay a small film made on life and work of Puj Dr. Gyanvatsal Swamiji. Shri Gyanvatsal Swami is a distinguished motivational speaker, spiritual leader, and dedicated social reformer associated with the BAPS, Bocha Sanvasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha,
as an integral part of BAPS, a renowned social organization focused on fostering personal growth, Shri Jnanvatsal Swami has made significant contributions to society. His impactful motivational speeches have transcended borders, reaching audiences in New Zealand, Europe, Canada, the United States, and England. Covering diverse topics such as stress, work-life balance, career development, education, etiquette, and attitude, he has inspired countless individuals to achieve personal and professional success. Having traveled to more than 20 countries, Shri Jnanvatsal Swami's global influence extends beyond geographical boundaries. His insightful talks have touched upon various aspects of life, providing valuable guidance and inspiration. Notably, in 2018, he was invited as a motivational speaker at the FGI HR Conclave, Travails of Team Building, Enabling and Retaining, event organized by the Federation of Gujarat Industries, FGI. Let's extend a warm welcome to Shri Jnanvatsal Swami. Please put your hands together and welcome with a big round of applause, my friends, Pujya Dr. Swami Jnanvatsal Ji. गुणातीतो अक्षरं ब्रह्म भगवान पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्. With prostrations at the divine feet of Bhagwan Swaminarayan, Bhagwan Shri Ram, Bhagwan Sri Krishna, my Guru Hari Pramukh Swami Maharaj and my Pragat Guru Hari Mahan Swami Maharaj, my heartiest namaskar to Vishwanath Karat ji, Dr. Vijay Bhatkar ji, my good friend Rahul Karat ji, and all the dignitaries and student leaders sitting on the dais, and my dear students. Today on the 12th of January, when we are celebrating the 161st birth anniversary of Swami Vivekananda, it's a special privilege for our generation to be in the midst of such a great youth energy. And this energy shows that nobody can stop India from becoming a developed nation and a superpower, I think, by the year 2030. We have 540 million youth in the country today. That is approximately 54 crore youths in the age group of 15 to 35. If these youths decide for two things that I'm particularly impressed with this conference, and I was just sharing with Rahulji. First thing is ethical leadership and ethical working in whichever profession we are. And second thing, a desire must be within. A goal must be within to go into some kind of public life and make a small positive change at the place, at the institute, in the midst of people where we find ourselves today. And that is spiritualization of public life. Spiritualization of public institutes. Perhaps the most ideal example, let me repeat those words again. Perhaps the most ideal illustration, example of spiritualization of educational institutes, you find it at MIT World Peace University. And from the programs, from the conferences that are set here, I think this will get extended and go into more of ethical leadership and more of spiritualization of public life and public institutions, what the country needs today. So India is destined to be a developed nation. India, Bharat, is destined to be a superpower. Bharat is destined to be a Vishwaguru, to make our nation great. That is Bharat great. We need to work together
You as students, you carry the responsibility on your shoulders to make our country a developed nation and a superpower. We as saints, it is our responsibility to make Bharat a Vishwaguru. So we need to come together, and that is why we are together today. When it comes to spirituality in your personal life, spirituality in your family life, especially when we are talking today of spirituality in public life, definitely we are seeing many leaders here, the leaders of the future, who are going to bring a definite change in the society. The first aspect of an ethical leader, the first aspect of spirituality in public life. Let me share you the wisdom-filled words which are Hriday Amrit, that is nectar from the heart of our Guru Pramukh Swami Maharaj, who created our BAPS Institute. The organization that I come from is one of the largest NGOs of the world with a permanent status in the United Nations as an NGO. We run more than 1,500 hospitals, hostels, schools, colleges, community centers, Sanskar Kendras and Akshardham all over the world. The creator of this, more than 1,300 institutes out of this, in a span of 45 years, that is giving an institute of social service to the society every 15th day of his life for 45 years, is Pramukh Swami Maharaj. His words of wisdom, his nectar from his heart are the words, in the joy of others lies our own. In the progress of others rests our own. मतलब अन्य के सुख में हमारा सुख, अन्य के उत्कर्ष में हमारा उत्कर्ष, अन्य की प्रगति में हमारी प्रगति. Spiritualization of politics. Spiritualization of politics and ethical leadership. First point, every heart, when he leads somewhere, he should have this feeling, in the joy of others lies our own. अन्य के सुख में हमारा सुख है. जो अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री थे, उन्होंने जब बातें की, उन्होंने कहा, बार बार वे मामा शब्द का प्रयोग करते थे, जिस शब्द से, जिस भाव से उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता की सेवा की, लोगों ने प्रेम से उनको ये नाम दिया है. He talked about the लाडली बहना स्कीम. तो ये एक अंतर में भाव होता है हर एक नेता में कि इन द जॉय ऑफ अदर्स लाइज अवर ओन. आप जहां भी क्षेत्र में, जहां भी लीडर बने, सबसे प्रथम ये भाव रखना कि अन्य के सुख में मेरा सुख है, अन्य के उत्कर्ष में मेरा उत्कर्ष है, अन्य की प्रगति में मेरी प्रगति है. ये प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन सूत्र था. ये सूत्र लेके वे चले तो 45 साल में 1300 से भी ज्यादा इंस्टीट्यूट खड़ी की. In 45 years, 1,300 hospitals, hostels, schools and colleges by a single person. All these institutes are running today efficiently for the welfare of society and people. तो एक निस्वार्थ भावना में इतनी ताकत होती है. निस्वार्थ भावना लेके समाज और देश की सेवा के लिए हम चले, जाहिर से क्षेत्र में हम आए. आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, जो निस्वार्थ भावना लेके समाज में चले हैं, देश के लिए चले हैं, तो विकास और विरासत दोनों साथ में लेके चले हैं. और आज ही 12 जनवरी को नरेंद्र मोदी जी ने दोनों काम किए, विकास का भी किया और विरासत का भी किया. नासिक में आज दोपहर को प्रधानमंत्री जी ने नेशनल यूथ डे के दौरान वहां यूथ को भी इंस्पिरेशन दिया, कालाराम मंदिर में सफाई भी की और मुंबई में इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज का ओपनिंग भी किया. तीनों बातें की. हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज 3 बातें की. यूथ को इंस्पिरेशन भी दिया, भगवान श्री राम का अवतरण अयोध्या में हुआ था, उनकी मूर्ति की प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी 22 जनवरी को,
तो सभी मंदिर और सभी धर्मस्थान की सफाई के लिए प्रधानमंत्री जी ने आग्रह रखा है. He started the project himself. Today he cleaned the Kalaram temple in Nasik. तो आध्यात्मिकता भी हुई, वो विरासत भी हुई, और मुंबई में सबसे लंबा भारत का समुद्र पे ब्रिज, उसका उद्घाटन भी किया. It is almost like 22 kilometers long. Out of that 16.5 kilometers on the sea. So what I mean to say, मेरा प्रथम ये बात है, my first analysis is this, that if in public life or any leadership role wherever you are, apart from your talent, apart from your academics, apart from your knowledge, apart from your support systems, apart from your platforms, apart from your back support systems, if one thing if you keep in your heart, in the joy of others lies our own. दूसरों के आनंद में मेरा आनंद है, अन्य की प्रगति में मेरी प्रगति है, तो आप लीडर के रूप में ऊपर उठ के आओगे. जैसे पूर्व मुख्यमंत्री श्री ने भी बताया था कि मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में जाता हूं तो वहां लोग मेरे पास आ जाते हैं. If you want to come, if you want people to come to you, if you want to lead masses, निस्वार्थ भावना होना खूब जरूरी है. This is the first aspect of spirituality in politics, spirituality in public life. Second thing, believe in the power that we Bharatiyas, हम जो भारतीय हैं, हम में अनंत टैलेंट हैं, हम में अनंत रिसोर्सेज हैं. We are a country of 140 crore people. What not can be done by a country of this strength? But we have to believe in this strength. Repeat with me what I say. I, loudly, I believe that my country Bharat has the strength to lead the world. तो दूसरी बात यह है, in spiritualization of public life, we believe in our strength. We believe in the resources that we have. We can emphatically say that majority of the leading scientists and engineers at NASA, at Microsoft, at Google are Indians. Vijay ji, sahi baat kar raha hu main? Majority of the scientists and majority of the engineers. तो हम में वो स्ट्रेंथ है, हम में वो रिसोर्सेज हैं, वो गैदर करने हैं. जब हम दिल्ली में अक्षरधाम बना रहे थे, टुडे इट स्टैंड्स टॉल एज द लार्जेस्ट ट्रेडिशनल हिंदू मंदिर ऑफ द वर्ल्ड, द स्वामीनारायण अक्षरधाम इन दिल्ली. वो 110 एकड़ पे बनाया. अभी 2 महीने पहले हमने अमेरिका में the largest Hindu mandir of the Western Hemisphere on 185 acres of land inaugurate kiya, made up of almost 2 million cubic feet of stone. It is the second largest Hindu mandir in the world after Angkor Wat and the largest in the Western Hemisphere, and it will stand tall with all pride for 1500 years, depicting the greatness of Indian culture on the land of America. हम कर सकते हैं. We should believe in our strength. और वहां जो अमेरिका में अक्षरधाम हमने बनाया, आप सभी ने अक्षरधाम देखा होगा, गांधीनगर या दिल्ली. Just raise your hands if you have been to Akshardham at Gandhinagar or Delhi. Most of you. I come from that organization. तो दिल्ली का जो अक्षरधाम है, वो 8 lakh cubic feet stone है. अमेरिका का अक्षरधाम almost 2 million cubic feet है. लेकिन वहां का वातावरण है, इंडिया का स्टोन या ग्रेनाइट नहीं चल सकता. तो यूरोप से स्टोन ग्रेनाइट गुजरात आते थे, राजस्थान जाते थे. वहां 26 साइट पे more than 7,000 artisans worked, and we shipped that stones and marble there. तो वहां जो स्वामीनारायण अक्षरधाम अमेरिका में बना, 10,000 मूर्तिज, 10,000 idols of stone carved in a single monument. 10,000 idols. तो वहां भारतीय संस्कृति के दर्शन हमने करवाए हैं.
एक एग्जांपल देता हूं कराट जी आपको। भारतनाट्यम के मोर देन 151 पोजेज हैं। तो अक्षरधाम के एक लेयर में हमने 6-6 फुट की एक मूर्तियां, 151 पोजेज ऑफ भारतनाट्यम, 6 फुट की एक पोज, ऐसा एक लेयर बनाया है। भारत में 150 से ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो 150 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अबाउट 3 to 4 फीट साइज सभी वहां पत्थर में काव करके रखे हैं। टू लेट द पीपल ऑफ द वर्ल्ड नो that India has a rich legacy of culture, rich tradition of spirituality, वो अमेरिका की धरती पर हमने खड़ा किया है। तो हम कर सकते हैं। मेरे साथ एक आवाज से बोलना, I believe that I can do. I believe that My country can do. तो ये दूसरी बात है कि हम अपने रिसोर्सेस पे विश्वास रखें। हमारे पास इनफ रिसोर्सेस हैं। जब दिल्ली का अक्षरधाम हम बना रहे थे, सोमपुरा ने कहा 35 साल लगेंगे। हमारे गुरु प्रमुख साईं महाराज ने कहा 5 साल में करना है। आर्टिसंस नहीं है, सिर्फ 1500 आर्टिसंस मिलेंगे। सोमपुरा ने हमको कहा, प्रमुख साईं महाराज ने कहा आर्टिसंस की बात आप मुझ पर छोड़ दो, आप प्लानिंग कर दो। Our saints and volunteers traveled to the length and breadth of the country. Our saints went into the deep Rajasthan villages. Our saints went into deep Odisha villages, met the artisans, met their family members, uncle, nephew, brother, cousin. जो लोग 5-10 साल से काम नहीं मिला था पत्थर का, तो कुछ पान की दुकान चला रहे थे, हमने कहा we want to gather resources, skill development program चालू किया। we said we will give you practice, 6 महीना हम आपको पत्थर देंगे, आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपके लोही, आपके खून में, आपके डीएनए में है। इन लोगों ने प्रैक्टिस की, वो टैलेंट फिर से जागृत हुई, स्किल डेवलप हुई, और भारतवर्ष में पहली दफा 7,000 stone artisans were working on the project. From 1,500 to 7,000 stone artisans, we gathered from the deepest and the remotest village of Rajasthan and Orissa. We have talent, we have resources, we have brains. The only thing needed, we must believe that we have. Believe करेंगे तो we will be able to do it. और आखिरी बात बताऊंगा, आप सब युवा हैं, academics alone won't work, experiences alone won't work. You will have to cultivate many values in your life. A strong value system works more than academics and experiences. How many of you believe in this? All of us. A strong value system. तो तीसरी बात यह है for ethical leadership and spiritualization of public life and politics is everybody must take a pledge to adhere by a strong value system. A strong value system is very much necessary. तो आप सभी को I list out 8 values. I will not go into the details of it, but list out those 8 values which are spiritual intelligent values. पहले IQ की बात आती थी 80s और 90s तक. People with high IQ can perform. After the 90s, the scenario changed. People with high emotional quotient could rule over the people with high IQ. And after the turn of the millennium, again the scenario changed, that people with high spiritual quotient, high spiritual intelligence can rule over people with high IQ and high EQ. What is that spiritual intelligence? I will not talk theory. I will talk absolutely practical. What is that spiritual intelligence? 8 qualities are such that if you possess, you are a spiritual intelligent person. And the vice versa, a person with spiritual intelligence possesses these 8 values. First value, flexibility to change. If you see a better idea, if you see a better thought around you, have the courtesy
have the humanity, have the humbleness to accept it. The new definition of Harvard University for intelligence. Intelligence की एक नई व्याख्या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 8 years के रिसर्च के बाद बाहर की है. And that is, what is intelligence? Flexibility to change is intelligence. This is a spiritual value. Flexibility to change is a spiritual value. So first value is flexibility. Second is self-awareness. When you are absolutely self-aware, you never make a private or a public mistake in your life. Self-awareness. प्रधानमंत्री का एक वीडियो आपने देखा होगा. चल के मंच पे जा रहे थे माननीय मोदी जी, और वहां कहां खड़ा रहना है इसके लिए नेशनल फ्लैग्स सभी के रखे थे. वहां तक पहुंचे प्रधानमंत्री, फ्लैग उठा के पहले जेब में रखा, फिर उस जगह पे खड़े रहे. I cannot stand at the place where my flag is on the floor. This is self-awareness. This is a spiritual quality. So when you are self-aware, you never make a private or a public mistake in life. This is the second quality of spirituality in public life. Third quality, an ability to face and use the suffering of life. हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज और आज हमारे गुरु है महंत स्वामी महाराज. उनके जीवन में हमने ये देखा है. महंत स्वामी महाराज he became the spiritual head of this organization at the age of 84. Today is 91. In the last 7 years of his guruship, Mahant Swami Maharaj today is 91. He became the guru at 84. In last 7 years of his guruship, from 84 to 91, he gifted 300 hospitals, hostels, schools and colleges, institutions, mandirs and Akshardham by BAPS to the society. So every 8th day, a land got and an institute created. The whole story every 8th day of his life. He's working at this average. So when you are able to face and use any moment of your life, any happening of your life, any suffering of your life, nothing is impossible. So kabhi rona mat. Never fall back, never go into frustration, depression or tension. Anything that comes to me, God has sent it, and God has along with that sent me the energy to work with it. That is a spiritual quality. So कितनी भी बड़ी टास्क हो, भगवान ने टास्क भेजी है, साथ में मुझे एनर्जी भी भेजी है. Two things come together. The big task comes to you, big energy also comes to you. That is God's creation. So never be afraid of any big task. You should be able to use and face the suffering of life. Third quality. Fourth quality, an ability to be inspired by a vision. आप कुछ देखें, उससे आपका एक विजन आ जाना चाहिए कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं, इसका उपयोग कैसे कर सकता हूं, मेरी प्रगति के लिए, मेरे समाज की प्रगति के लिए, देश की प्रगति के लिए. To be inspired by a vision. Fifth quality, to see connection between diverse things. To see connection between diverse things. जो diagonally opposite things हैं, उसमें connection दिखता है. Sixth quality, an ability to cause as little harm as possible. An ability to cause as little harm as possible. To the individual, to the climate. 6C में से एक C है ना? 6C है. We have to fight against 6C. I'm just finishing in 1 minute. We have to fight against 6C. इसमें एक है ये, corruption के साथ climate change. The ability to cause as little harm as possible. And the seventh and the eighth qualities. Seventh is an ability to ask and probe fundamental questions. And the eighth quality of a spiritual intelligent person is an ability to work against a convention. These 8 qualities make you a spiritual leader, makes you a spiritual design to go for any task or any
humongous work in front of you. So today, on the occasion of this 13th Bharat Chhatra Sansad, organized by MIT World Peace University, and we are sitting here in Kothurud in Pune, in Maharashtra. My innermost prayers, my best wishes for all the energy to the youth of our country, so that we become a developed nation, we become a superpower, and we become a Viksit Bharat and Vishwaguru. Thank you very much, and all my prayers for all of you. Thank you very much, Swamiji. A big round of applause, my friends, for motivating words of Swamiji, Pujya Dr. Gyanavatsal Swamiji. Thank you. My friends, let's rise in our seats and give a big round of applause and a standing ovation to life coach and eminent speaker of BAPS, Swaminarayan Sanstha, Pujya Dr. Swami Gyanavatsal Ji. Thank you, sir. Thank you very much for your words of wisdom. My friends, to make such a movement a success, there are always many hands behind. There are many hidden hands who have been supporting such movements, who brings such platforms to lives. We have one such personality present among us. I would like to invite on stage Dr. Yogesh Lakhani Ji, who has been a strong support of these movements, these platforms. I request Dr. Yogesh Lakhani Ji. My friends, I'm sure each one of us knows this personality. I request you to kindly come up stage. Okay. My friends, he is the Chairman and Managing Director of Bright Outdoor Media, the first outdoor media company to be listed on the stock market of the country, and the person who has been a very, very strong support of National Legislators Conference Bharat and had a big role in making it a success. Let's give a big round of applause to Dr. Yogesh Lakhani Ji. Thank you very much, sir. My friends, we are slowly coming towards the conclusion of 13th Bharatiya Chhatra Sansad, but of course it is important to recall what we have done, what we have achieved in this edition of Bharatiya Chhatra Sansad. I request my technical team to kindly relay a recap film of 13th Bharatiya Chhatra Sansad. Fascinating platform, a fascinating movement which is going on for the last 12 years, Bharatiya Chhatra Sansad, and we all have gathered here today for the inaugural session of 13th Bharatiya Chhatra Sansad. Let's give a big round of applause to entire gathering and execution of Bharatiya Chhatra Sansad, my friends. Let us join the politics. The educated people must come in public life. Qualified, competent people must come in public life. देश के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय छात्र संसद आने वाले समय में इसमें रोल प्ले करेगा. Politics is a mission for the sake of the nation, and we must serve it with passion, without expecting commission, giving any omission, or giving any remission.
after all the scientific innovations and discovery of the whole world, the Google or the Facebook or any other name you take will prove what Indian men, Indian culture used to say about 5,000 years back. मुझे ये देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इतनी बड़ी यूथ की जो संख्या है वो यहाँ बैठी हुई है, मतलब हमारे देश में बदलाव आ रहा है। आने वाले दिनों में जब आप जैसे युवाओं का मुझे साथ मिलेगा, जरूरत है कि भैया भारत में एक राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन हो। ताकत दो अपने पंखों को, एक उड़ान और भरो। यदि MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट नाम का संस्थान राहुल कराड़ जी ने तैयार नहीं किया होता तो आज आपके समक्ष इस भारतीय छात्र संसद में शहजाद पूनावाला बतौर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में नहीं खड़ा हुआ होता। फोरम जो आपको मिला है, इस फोरम में अपने आप विचार प्रकट कीजिए, हिम्मत से आगे निकलिए, संगठन बनाइए, चर्चा कीजिए, विचार कीजिए और देश में बदलाव लाइए। हर परिवर्तन देता है हमें युगांतर का ज्ञान। बन सहारा बेसहारों के लिए, जो जिए खुद के लिए तो क्या जिए, जी सके तो जी हजारों के लिए, जी सके तो जी भारत के लिए। उत्थान का आधार क्या रहा होगा? परिवर्तन हमेशा भीतर से ही प्रारंभ होता है। मैं लोकतंत्र के मूल्यों के बनाए रखने, नेतृत्व के गुणों को प्रकट करने और शासन के गुणों का अभ्यास करने की गंभीरता से प्रतिज्ञा करता हूं। History becomes a very important mirror in which we can identify ourselves as a civilization, as a nation. Be a Chanakya in politics. सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि आप घर में अपने रूम में बैठकर भी अपनी बात को सरकार में अपनी आवाज उठा सकते हैं। तो AI सोशल मीडिया का जो प्रभाव है, जो इनेबलर है, ये किसको आगे बढ़ाएगा, किस चीज को आगे ले जाएगा? जो आपके अंदर है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। ये माटी सभी की कहानी कहेगी। हमारी नारी शक्ति को, उसको पहचानने की आवश्यकता है। हमारे किसान के उस श्रम को पहचानने की आवश्यकता है। नेशन ऑलवेज फर्स्ट। दलित की राजनीति, पिछड़ों की राजनीति करते करते इन नेताओं की स्कॉर्पियो का फॉर्च्यूनर बन जाती है और उस दलित का साइकिल ही रह जाता है। उसको फ्री एजुकेशन से लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का, कोचिंग का सुविधा का सेंसस ही दिला सकता है। संसाधन की बहुलता आपको असफलता से निकाल लेती है। संसाधनों की अनुपलब्धता आपको असफल बना के रखती है। Strive for a more inclusive and equal society. Then why these students don't ask their representatives, what have you done for us?
Why don't you ask the police that you are getting salary from my taxpayers' money? Then why are you not protecting me? Why are you not coming when I make a call? पॉलिटिकल विश्वास के साथ देश को जोड़ो मत। देश देश है, पॉलिटिकल विश्वास अलग है, पसंद अलग है, लेकिन देश सर्वोपरि है। A big round of applause, my friends. These have been last 3 days of Bharatiya Chhatra Sansad. Though we are reaching the conclusion of 13th Bharatiya Chhatra Sansad, I would like to say, उम्मीदों को आंखों में महफूज कर लो, उम्मीदों को आंखों में महफूज कर लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम और मुसाफिर है हम, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात जरूर होगी। I'm sure that we will meet again in 14th Bharatiya Chhatra Sansad and take the Indian democracy to new heights. My friends, it's now time when we proceed to an important step of this session. I request all the dignitaries to rise in their seats and give us a memorable photograph with the brochure. And my friends, let me come to you. I'm sure that you all are holding Ekata Sutra in your hand. I would like to request all of you to tie this Ekata Sutra with your friends who are sitting right and left hand side of yours. Please tie the Ekata Sutra with the people, those who are sitting on your left, right, behind, and let's connect ourselves with each other through this Ekata Sutra. Yes, indeed, let us rise in our seats, connect the Ekata Sutra. Let's tie this Ekata Sutra, my friends, and with this Ekata Sutra, we all are getting tied to each other in one single mission of strengthening the democratic fabric of our nation. अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे, तब जाकर कुछ बात I request all of you to spare few more moments with us only after the national anthem and giving the Bharat Mata Ki Jai ka nara. Then only we are going to leave this hall. I request all of you to stay back till the national anthem. I request all of you to stay back till national anthem. Thank you very much. My friends, I would now like to request everyone to be seated, please. I request the Honorable Pro Vice Chancellor of MIT World Peace University, Professor Dr. Milind Pandeyji, to kindly propose the vote of thanks. Please sit down, only few minutes and followed by national anthem. I stand before you to propose a vote of thanks of 13th Bharatiya Chhatra Sansad. भारतीय छात्र संसद का ये 13वां संस्करण, ऐसा कहा जाता है कि सभ्यता और संस्कृति का परचम लहराएंगे, सभ्यता और संस्कृति का परचम लहराएंगे, लोकतंत्र के गीत जग को सुनाएंगे। 13वीं छात्र संसद की ज्योति, 13वीं छात्र संसद की ज्योति से भारत के सुशासन का दीप झगमगाएंगे, भारत के सुशासन का दीप झगमगाएंगे। My friends, we are approaching towards the conclusion of the 13th Bharatiya Chhatra Sansad. During these 3 days, we welcome 50 speakers, 15 awardees, 150 MLA, MLCs, around 7,000 registered students, delegates across 13 states of India, and hold your breath, 4.3 lakhs online viewers on social media platform of BCS, including Facebook, YouTube, Instagram, and live streaming on websites. My friends, parallel sessions we hosted 20 vice chancellors,
more than 50 assembly speakers, and the highlight of this 13th Bharatiya Chhatra Sansad, once again, Youth to Youth Connect program. My friends, let me tell you, recently after the successful completion of historic first NLC conducted in Mumbai by MIT School of Government under the able leadership of our Executive President and the Chief Convener of NLC, Bharat, we create a historic record of 22,000 MLA, MLCs, Lok Sabha speakers, assembly speakers, chief ministers, central ministers, and the messages from prime ministers and Rashtrapati under one roof. A political movement created a world record. MLA, MLCs of 28 states and 8 union territories attended first time in the history of Indian democracy the most popular event of the country called NLC Bharat. I request everyone you to give a big round of applause Sri Rahul V. Karad and his vision for Bharat. नहीं अकेला कोई रास्ता बनाता, नहीं अकेला कोई रास्ता बनाता, साथ चलो तो मंजिलें पाते, युवाओं के हाथों में है देश का कल, युवाओं के हाथों में है देश का कल, भारतीय छात्र संसद से मिलकर सपनों को हकीकत बनाते, सपनों को हकीकत बनाते. We would like to bow down to our source of inspiration, Honorable Professor Dr. Vishwanath D. Karad, sir. Our source of inspiration, Padma Bhushan Dr. Vijay Bhatkar, sir, Yuva Dilo Ki Dhadkan and dynamic leadership of NLC Bharat and BCS, Sri Rahul V. Karad, sir, who make possible from the students to take from Chhatra Sansad to Rashtriya Sansad. I express my sincere gratification to our convener, Dr. R.M. Chitnis, the Vice Chancellor. We are proud of the BCS team, all my team, the co-convener, Dr. Mahesh Torve, the Registrar, Dr. Ganesh Pokre, and the various committees like the Transport Committee led by Dr. Sunil Karad, the Licensing Officers Committee led by Dr. Ghorpade, Dr. Keumti and his team, Accommodation Committee by Dr. P.K. Deshmukh and team, various committees, my friend, Food Committee, PR and Media, Felicitation, Green Room, Cultural, and the most important, the backbone of this entire BCS from last 13 years. The backbone and many more events, the team IR. The IR team under the leadership of Professor Vinit Mishra, Sankalp Singhai, and the entire IR team, I can see them sitting here. The MIT School of Government team, who made this possible under the various team of Professor Dr. Parimal Maya Sudhakar, Professor Greeson, Professor Pabi Shetty, Professor Mantri, and the entire student team of MIT School of Government. And our special thanks to the digital media, electronic media, print media, they present across all the 3 days, all the press conferences. We also would like to thank all the chief guests during the inaugural function and valedictory function. I would like to thank Honorable former Vice President of India, Sri Venkaiah Naidu ji, Honorable Dr. Ram Charan ji, the chief guest for today's valedictory function, Honorable Sri Shivraj ji Chauhan ji, Honorable Jai Prakash Narayan ji, Param Pujya Swami Ganvatsal ji. And we honored to have and would like to thank Dr. Satish Mahana ji, Sri Basavaraj ji, Sri U.T. Khadir Farid ji, Sri Kuwar Manvendra Singh, Dr. T.C. Thomas, Advocate Abha Singh, आज के गेस्ट थे श्रीमती रूपा गांगुली, डॉक्टर फौजिया खान, श्री मनोज मुंतासिर, श्री विक्रम संपत, कितने नाम ले, श्री मनोज कुमार झा and Mr. Chirag Paswan. Today also present our Sri Girish Gautam ji. My friends, we would like to thank all the team of our MIT WPU's very, very passionate staff, all the team of deans, associate dean, directors, program managers, and all my staff members. हर आवाज को मिले मंच, हर आवाज को मिले मंच, हर विचार को मिले सम्मान, सरकार हो जनता का आईना,
BCS युवा शक्ति बने बदलाव की जुबान, BCS युवा शक्ति बने बदलाव की जुबान. And I would like to have the most round of applause for all my student volunteers, more than 500 plus, who made this 13th Bharatiya Chhatra Sansad a big success. A big round of applause, my friends, for yourself and all my inspired audience of more than 7,000 registered students attending this 30th historic Bharatiya Chhatra Sansad. In the conclusion, my friends, each voice raised in these halls, each resolution passed, each idea championed is a brick laid in the foundation of democratic tomorrow. यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए. 13 साल पहले ये बात राहुल कराड़ साहब ने रखी. पढ़े लिखे लोग यदि पॉलिटिक्स में आएंगे तो भारत विश्व गुरु बनेगा. यदि पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो भारत की राजनीति शायद अनपढ़ रह जाएंगी. We want youth to understand and to be a part of this mother of democracy. और मैं सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं कि बुलंद विचारों की इस जमी पर, बुलंद विचारों की इस जमी पर सपनों का चिराग जले. बुलंद विचारों की इस जमी पर सपनों का चिराग जले. युवाओं की आवाज गुंजे. BCS के साथ सरकार चले. BCS के साथ सरकार चले. बहुत बहुत धन्यवाद. शुक्रिया. आभार. Thank you very much, Honorable Pro Vice Chancellor, sir. My friends, let me quickly share with you that after this event is over, all of you would be getting your certificates in the front porch of Ganga building. I repeat, all the participants would be getting their certificates in the front porch of Ganga building, which is popularly known as Bank of India building. So you can be there in the porch to collect your certificates. My friends, with this, we have reached the conclusion of 13th Bharatiya Chhatra Sansad. I would like to request all of you for the final time in the 13th Bharatiya Chhatra Sansad to rise in your seats for National Anthem. I request Jana Gana Mana Adhinayaka Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkala Vanga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchchala Jaladhi Taranga तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Bharat Mata Ki! Bharat Mata Ki! Bharat Mata Ki! Thank you very much. I request the student representatives came from all across the country to kindly come on stage to congratulate and felicitate Shri Rahul V. Karat sir. You can see such a beautiful banner which is being given to Shri Rahul Vishwanath Karatji. These are the student leaders from across the length and breadth of the country. I request all the volunteers of Bharatiya Chhatra Sansad, if they are willing to capture a memorable photograph with Shri Rahul V. Karat sir, they are requested to kindly come up stage. The working volunteers of 13th Bharatiya Chhatra Sansad.
all the student volunteers, the working volunteers of 13th Bharatiya Chhatra Sansad, please come up on stage for a memorable photograph with Shri Rahul V. Karat sir. आओ अब कुछ बात करेंगे. Thank you very much. मिलजुल कर अब काम करेंगे. आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे. तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत बनेगी. भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद. नर नर अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा. भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा. लोकतंत्र है इसकी गरिमा, इसका रक्षण ध्येय हमारा. भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद. नर 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 नर. सनी पम गम पनि सनी सा ग म ग सनी पनि सा ग म ग नि सा पा म ग सा सनी सा सा सनी सा ग नि ग म ग नि ग नि सा नि सा नि सा नि पनि सा नि सा नि सा ग नि सा नि पा म ग नि ग पा म ग म ग नि म ग म सा ग नि सा पनि म प ग सा ग म प ग म पनि सा ग म ग. जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण.